the 1969 bank nationalization was one of the landmark legislations in India's history. Now coming to the point, sir. The bank employees, especially in public sector banks, are facing a lot of problems. The number one issue is the shortage of adequate number of staffs in public sector banks. At present, it is estimated that more than 2,11,000 posts are vacant in staff cadre only. And this adversely affects the mental health of the workers also. They are overburdened by work. It leads to stress and even suicides. No need of further explanation. Sir, now in PSBs, the customer or employee ratio has reached, for 2,000 customers, it's just one employee. This needs to be enhanced. Sir, another issue is related to the over 5 working days of bank employees. It was a demand from the bank employees, and there is a consensus also. The bank authorities, the Indian Bank Association also agreed to the same. And now the demand is, this request is pending before the Union Finance Ministry. And I take this opportunity to request through you, sir. The Union Finance Minister should take a serious look into this matter. And in all other financial sectors, sir, it is just 5 hours working day. In RBI, it's 5 hours, and other insurance sector is 5 days. Sorry, 5 days. I'm sorry, 5 days in a week, and 5 days insurance companies also. And this should be applicable to the banking sector also. So, sir, and there are many other genuine demands raised by these unions, and I take this opportunity to once again demand that these genuine demands must be seriously dealt by the finance minister, and there must be a serious attempt to genuinely settle the issues of the bank's workers. Thank you. Thank you. Mani Sri Anil Kumar Yadav Mandadi, demand to establish an Indian Institute of Management in Hyderabad, Telangana. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I would like to bring to your kind attention to a long-pending demand of establishment of Indian Institute of Management, IIM, in Hyderabad, Telangana. Sir, I come from city of Hyderabad, which is the capital of India's youngest state, Telangana. Sir, Hyderabad is also called Mini India due to its diverse population representing different states, languages, and religions. Sir, as per Andhra Pradesh Reorganization Act Bill, the central government shall take up all necessary measures to ensure establishment of IIM in the state of Telangana. Sir, Hyderabad is home to prestigious institutions such as IIT, ISB, Nalsar, IIIT, and central universities, making it an ideal ecosystem for IIM. The city has strong industrial sectors like IT, pharmaceutical, biotech, and finance, which could greatly benefit from IIM through research, collaborative startup, and leadership development. Sir, India currently has 21 IIMs institutions that have produced some of the finest leaders in business, finance, and policy making. However, despite of being a major economic and educational hub, Telangana still does not have an IIM. This is significant oversight in national educational planning. Sir, the absence of IIM in Telangana forces many students, especially from economical, weaker and rural backgrounds, to migrate other states, increasing their financial burden. Additionally, Telangana loses out on economical opportunities, jobs, and industries partnerships that such an institution would generate. Sir, Telangana deserves the chance to nurture young leaders and drive innovations in business and governments. So the government have been again and again been given representation from the state of Telangana, but unfortunately the government is not looking into the matter and not responding, sir. Hence, I agree upon the government to take immediate steps to set up an Institute of Management IIM in the state of Telangana. Thank you. Dhanyavad. Manya Srimati Seema Dwivedi ji, demand for construction of an underpass between Janghi Pratapgarh block and Janghi Nibhaipur railway station of Uttar Pradesh. माननीय उपसभापति महोदय, जंघई प्रतापगढ़ खंड पर निभापुर
जंघई रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर 854/01 पर संपार अथवा अंडरपास के बनवाए जाने के संबंध में। महोदय, जंघई प्रतापगढ़ रेलवे लाइन का दोहरीकरण निकट भविष्य में होना है। ग्रामवासियों का रेल के उत्तर एवं दक्षिणी छोर पर निवास है। पिच रोड बीच में होने के कारण कई गांवों को यह मार्ग जोड़ता है। इसी मार्ग से कई गांवों को आना जाना पड़ता है। इस स्थान पर कृषि कार्य हेतु कोई साधन आने जाने में नहीं है, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई भी कार्य करने के लिए ग्रामवासियों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे बार बार कोई भी कृषि कार्य करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो सब टैंक को बार बार क्रॉस करना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। महोदय, अतः मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ कि ग्राम सभा नडार में 854/0-01 पर अंडरपास बनवाने की कृपा करें, ताकि जनमानस को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री संजय यादव जी, डिमांड टू ओपन न्यू केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय इन स्टेट ऑफ बिहार। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मैं सदन का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगा महोदय, इन 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर विद्यालय नहीं दिया गया। बिहार देश की सब तीसरे नंबर पे, जनसंख्या के आधार पे बिहार तीसरे नंबर पे है। देश की लगभग 10% आबादी बिहार में रहती है, यानी हर 10वां भारतीय बिहार से है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की अनदेखी करना सर, ये कहीं से वाजिब प्रतीत नहीं होता है। महोदय, अगर ऐसे राज्यों की सूची बनाई जाए जहां प्रति 1 लाख व्यक्ति के अनुपात में अगर केंद्रीय विद्यालयों, सबसे कम केंद्रीय विद्यालय अगर कहीं होंगे तो वो बिहार में है। और अकेले पटना जिला को छोड़ के बाकी जिला में 1 से अधिक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। पूर्णिया में तो केंद्रीय विद्यालय की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। महोदय, उप सभापति महोदय, बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। महिलाओं की साक्षरता दर में भी बिहार सबसे कम है, नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में बिहार सबसे नीचे है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। देश में सर्वाधिक निरक्षरता बिहार में है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है। तो महोदय, समुचित विकास एवं औद्योगिकरण के अभाव में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा रास्ता है जिससे बिहार जैसे राज्य को पिछड़ेपन और गरीबी के दुष्चक्र से निकाल के हम प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं। और कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों की अधिक से अधिक आवश्यकता है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का क्राइटेरिया क्या है। अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, सबसे कम महिला साक्षरता दर है, सर्वाधिक निरक्षरता दर है, सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो सबसे कम अगर बिहार में है, अगर ये पैमाना माना जाए तो सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हर 10वां भारतीय बिहारी है, तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या बिहार की है, फिर भी आप बिहार को एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय नहीं देना चाहते। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार को इसमें उपेक्षित क्यों रखा गया। तो महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से कि बिहार में अधिक से अधिक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू टेक स्टेप्स टू रिस्टोर एंड अपग्रेड सिपरी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के एक महत्वपूर्ण विषय को आज उठाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री भी यहाँ मौजूद है, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि उनको भी पता चले कि वो जो रुपया सैंक्शन करते हैं उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI ये 1960 में बना था।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे देश में बनता है उसको टेस्टिंग किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसका, ताकि उसको उपयोग में लाया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल से वो इंस्टीट्यूट का जो मिशन है, सिंथेटिक लेबोरेटरी मशीन है, जो फंक्शनिंग होना चाहिए वो नहीं होकर बंद पड़ा है, खराब हो गया है। जब एनर्जी कमेटी, हमारा स्थायी कमेटी का वहां हम लोग गए थे उस सेंटर को, रिसर्च सेंटर को, तो हम लोग ने जानना चाहा कि रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है उसको रिपेयर करने के लिए। मैं बोला, अरे भाई, हमारा देश चांद में जाके पहुंच गया, तुमको मैकेनिक नहीं मिल रहा है। उसका मेन कारण, असली कारण यह है अध्यक्ष महोदय कि उस इंस्टीट्यूट का कोई अधिकारी वहां से नौकरी छोड़ के विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है दूसरे कंपनी में। इसीलिए हमारा टेस्टिंग के लिए विदेश को जाना पड़ता है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को विदेश लेके जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए विदेश लेके जाना पड़ता है। वो होता है नेदरलैंड, साउथ कोरिया और इटली जाते हैं, वहां से सर्टिफिकेशन लाते हैं, सर्टिफिकेट लाते हैं, तब जाके उनका बिक्री होता है। केंद्र सरकार 2021 में 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं वो रिपेयर करने के लिए। मैं वित्त मंत्री यहाँ पर मौजूद है, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि 40 करोड़ रुपया 1921 में दे चुके हैं रिपेयर के लिए, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं हो पाया, आज तक रिपेयर नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, इसका असली कारण है जो अधिकारी यहाँ छोड़ के वो बाहर के प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो वहां बुला के कमीशन देता है और लेता है। इसी के कारण आज तक इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार के आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं डिमांड करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए और हमारे देश के जो पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री किए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, उन लोग को मौका दिया जाए ताकि वो देश में टेस्टिंग कराए और खर्चा से बचे। टेस्ट कराने के लिए विदेश जाएंगे, इटली जाएंगे, नेदरलैंड जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं माननीय मंत्री जी यहाँ है, उनसे अनुरोध करूंगा कि 21 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया जो 2021 में आप दिए हैं, अभी तक उसको रिपेयर के लिए उन लोग यूज नहीं करके पैसा क्या करे पता नहीं, आप उसका जानकारी लीजिए। मैं आपसे बहुत बहुत अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनसोलिसिटेड स्पैम, fraudulent audio and video calls via WhatsApp and other social media platforms. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to bring to the attention of this August House to the rising menace of spam and fraudulent calls, phishing attempts, and cyber scams that have become serious threat to the privacy, security, and financial well-being of Indian citizens. In recent times, there has been a sharp increase in unsolicited spam calls, fraudulent audio and video calls via WhatsApp and other social media platforms, and deceptive messages sent through email, SMS, phishing websites. These fraudulent activities are being carried out by individuals falsely representing themselves as legitimate financial institutions, government agencies, and law enforcement authorities. As a result, thousands of innocent citizens have lost their hard-earned money, and many continue to fall victim to the digital frauds. A particularly alarming aspect of this scam is that fraudsters often possess extensive personal details of their victims before initiating this contact. These raises serious concerns about data privacy and the unauthorized access and sale of personal information by data brokers and telemarketers. The citizens, especially those who are not well versed in advanced digital technology, are at higher risk of being duped. The fear and anxiety caused by such fraudulent activities have created an environment of insecurity for mobile phone internet users. A primary factor contributing to this growing menace is the unauthorized access and misuse of personal data. Spammers and fraudsters illegally obtain phone numbers and personal details through various means, including data harvesting, data mining, and purchasing cyber ready-made data from third parties or companies maintaining data banks. This blatant misuse of data raises serious concern about the privacy and security of Indian citizens. Although the government has introduced mechanisms such as Do Not Disturb registry, along various laws and tries efforts to regulate telemarketing practices, unauthorized data sales, and privacy breaches remain rampant, leaving citizens vulnerable to exploitation. Honorable Vice Chairman, sir, the right to privacy and data security
is a fundamental right, and it is imperative that the government takes decisive action to safeguard its citizens from data misuse and unsolicited calls. I urge urgent intervention to ensure the protection of personal data and to put an end to this growing nuisance. Thank you, sir. Thank you. Mani Sri Tejveer Singh, need to develop new spiritual tourism circuit in the state of Uttar Pradesh to tap tourism. Mani Tejveer Singh ji. Mani Sri Bhattacharya ji Rajiv, need to promote export of pineapple, please. Please. माननीय उपसभापति महोदय, हमको बोलने का मौका दिया है 0 आवर में। हम लोग जानते हैं उत्तर पूर्वांचल में त्रिपुरा ऐसे राज्य है जहां पहाड़ी राज्य है, जहां पाइनएप्पल की खेती होती है, और पाइनएप्पल 2018 में हमारा सरकार बनने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्टेट फूड डिक्लेयर किया है, और अभी Honorable member, question hour. We'll give you opportunity again. Question hour. Question number 181. Shri Sanjeev Arora, not present. Honorable Minister. Question number 181. विवरण सदन के पटल पर रख दे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के लिए विस्तृत उत्तर ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में तो दिया है, लेकिन एक गर्भाशय कैंसर एक बड़ी विकराल समस्या है जिस पर समय समय पर चिंता भी व्यक्त की गई है। सरकार अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत गर्भाशय कैंसर वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन की तरह से जनरल पब्लिक को लगाने के बारे में कोई विचार करेगी। दूसरा विषय मेरा है कि मेरठ में मेडिकल कॉलेज में कैंसर इकाई की स्थापना के संबंध में भी मेरा निवेदन है कि क्या सरकार उस पर विचार करेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में जो सम्मानीय सदस्य ने यहाँ पर पूछा गया, तो निश्चित रूप से इसकी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से कैंसर के रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय और योजनाएं भी हमारे सरकार ने यहाँ पर लागू की है। और जो कि सदस्य ने यहाँ पर जो प्रश्न पूछा कि कैंसर का जो प्रादुर्भाव जो बहुत हृदय, उसके रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग का जो काम है कि हमारे जो सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, सभी जगह पे स्क्रीनिंग करके कैंसर के रोगियों को पहले स्टेज में अगर निश्चित रूप से ढूंढा जाता है या उपचार शुरू होते हैं तो उनके दुरुस्त होने की ज्यादा प्रतिशत में जो लोग जो होते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज में कैंसर के रोगी जब उपचार करने आते हैं तो उसमें उपचार करने में भी और उनको बचाने में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन इसके जागरूकता, कैंसर के बारे में जागरूकता दिन भी मनाया जाता है, और वो जागरूकता के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। और कैंसर जैसे बीमारी के रोकथाम के लिए, उनको कम करने के लिए हमारे विभाग के माध्यम से बहुत सारे उपाय और भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। श्री प्रफुल्ल पटेल। So, Chairman sir, cancer is a very, dreaded disease, and of course it requires specialized treatment and long gestation treatment. So when many people go to, say, Mumbai, Delhi and bigger centers, even AIIMS and other places where government has now done a great job of increasing the reach of all these specialized medical facilities. However, there needs to be some sub-centers.
I will just give one example that in Maharashtra we have many private hospitals having extended facilities for targeted immunotherapy and all in many districts. Similarly, if the government also, through the private as well as some of the government institutions, reaches out to, say, virtually every district, there are about 600 districts in the country, all need not be covered, maybe 300 districts or so which are very backward. There, if these kind of centers, once the main treatment is done in the bigger center, the sub-center can do the rest of the treatment, so that time is saved for the person to go again to the bigger centers. Cost is involved, staying facilities are a big problem. So may I request the minister to have a view and let us know what he thinks. Honorable Minister. सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य प्रफुल्ल पटेल जी ने जो पूछा है कि निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एनपी एनसीडी के तहत 770 जिला एनसीडी क्लिनिक है, 223 हृदय परिचर्या इकाइयां है, 372 जिला डे केयर सेंटर भी चलाए जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6410 एनसीडी क्लिनिक भी स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र का भी कार्यात्मक वहां पर कार्य चल रहा है। और सदस्य ने जो चिंता की है, निश्चित रूप से मैंने पहले जवाब में बोला था कि सब सेंटर जैसे भी वहां पर कैंसरों की स्क्रीनिंग शुरू की है। हमारी जो आशा वर्कर है, गांव में काम करने वाली है एएनएम में, वो घर घर में जाकर लोगों से जो हमारा फॉर्म है वो सभी भर के लाते हैं। और उसमें अगर ऐसी शंका आती है कि कैंसर के लिए इनकी जांच होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, तो उप केंद्र में भी उनकी स्क्रीनिंग होती है। अगर उनको रेफर करने का रहा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी उनको रेफर भी वहां से किया जा। Sub center is a very important suggestion, Honorable Minister. सर, जहाँ तक कैंसर का सवाल है और ये प्रश्न है, इस प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि रूरल एरिया के लोगों को कैंसर से बचने के लिए और उसके स्क्रीनिंग के लिए क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो मैं हाउस को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत ही एग्जॉस्टिव स्क्रीनिंग की व्यवस्था भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। हमारे 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये स्क्रीनिंग ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये तीनों की स्क्रीनिंग की जा रही है। और इस स्क्रीनिंग के दृष्टि से अगर हम देखें तो लगभग 29.32 करोड़ ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग हुआ है और उसमें से डायग्नोज्ड 1,63,000 डिटेक्ट हुए हैं। उसी तरीके से 15 करोड़ 60 लाख ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है और डायग्नोज हुए हैं 57,000। उसी तरीके से 9 करोड़ 48,000 सर्विक्स कैंसर का स्क्रीनिंग हुई है और डायग्नोज हुए हैं 97,000। यानी यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर। ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि करोड़्स में स्क्रीनिंग की गई है और थाउजेंड्स में और लाख्स में ये स्क्रीन लोगों के जो निकले हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको कोई नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स में ना आना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी योजना को आगे बढ़ाया है और अभी हमारे 372 डिस्ट्रिक्ट डे केयर सेंटर्स हैं जो कीमोथेरेपी अक्रॉस द कंट्री दे रहे हैं। इस बार निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट में घोषणा की है कि हम आने वाले समय में every district will have a day care cancer center, and this year we have decided to open 200, and within next 3 years all districts will have cancer day care center, chemotherapy and radiotherapy also. Srimati Mosam B. Noor. Thank you, Chairman, sir. It's great to have you back.
The Honorable Minister has already given an elaborate answer, but my question is if he can kindly state whether the ministry is considering expanding telemedicine services and mobile cancer screening units to improve early detection and treatment accessibility in rural areas. If yes, please provide the details. Thank you, sir. Honorable Minister. Very good question, sir. जैसा मैंने कहा कि हम स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसलिए हम टेलीमेडिसिन को भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं एंड वी हैव डेवलप्ड हब एंड स्पोक मॉडल एंड हब एंड स्पोक मॉडल में वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू दी CHOs, community health officers, those who can detect which looks like cancer, and those patients are through telemedicine. They are connected to the district hospitals and to the state hospitals and to the national institutes also, so that we decide whether this patient has to be brought at what level, so that we save time. And I would also like to share with the House, we would also like to share with the House that the Lancet study, Lancet की एक study आई है, जिसमें they have said that the timely cancer treatment initiation has improved in India and 90% rise in the access of timely treatment. This has been said by Lancet about the cancer treatment. So all this has been possible because the screening is exhaustive, and the moment the person is confirmed that he has got cancer, where he has to be treated, that is also advised at that very moment. Many honorable members, quite a large number, they wanted to ask supplementaries. Since there will be a discussion on the ministry, those of members who will not get opportunity otherwise to participate, I will accommodate all of them during the discussion. Question number 182, Srimati Sunetra Ajit Pawar. She had sought my leave. She was part of a delegation to Mexico representing the parliament. Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House, sir. Supplementary, Shri RPN Singh. माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि स्टोरेज के लिए बहुत फैसिलिटीज पूरे देश में बनाई गई हैं, परंतु फल के लिए मैं क्योंकि पूर्वांचल से आता हूं, कुशीनगर से आता हूं, हमारे यहाँ बहुत आम, लीची, केला की खेती होती है, परंतु जैसे हम सबको मालूम है लीची बहुत ही पेरिशेबल एक फल है, तो क्या इसके लिए सरकार फलों के लिए स्टोरेज बनाने के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर रही है या इस पे सोच कर रही है कि फलों के लिए भी स्टोरेज के लिए सरकार की तरफ से यूटिलिटीज देश भर में बनाई जाएगी और खास तौर के ईस्टर्न पार्ट मीनिंग पूर्वांचल में बनाई जाएगी? Honorable Minister. Sir, this is उधर जाकर बहुत सोबर हो गए। आपका इरादा है क्या सोबर होने का? हमारा पुराना नाता है। Honorable Minister. Sir, this is regarding the food storage, that is to food grains. Mainly, we deal with, as a food ministry, we deal with the paddy, that is, and of course, after conversion of as a rice and wheat. But as far as overall storage is concerned, fruit storage, of course, as far as my ministry is concerned, my department is concerned, we are continuously increasing the overall storage capacity, since the procurement of the food grains, whether it is paddy or the wheat, it is continuously increasing. If I can quote the figure, from 2004 to 2014, total quantity procured was 4,590 lakh metric ton, whereas from 2014 to 2024, we have procured almost 700 lakh metric ton. Almost more than 50% procurement is more.
And also the total value for that from 2004 to 2014 is 4,40,498 crores, whereas from 2014 to 2024, it is 12,51,403.58 crores. That is 184% increase. Because of this procurement, more procurement, storage has to be arranged. For that, many action we are taking. I do not want to go into those details, but for the fruits, it is for the cooperation minister and other storage facility, either it is dealt by agricultural or cooperative ministry. And we only deal with the food grain. That is the situation, and our department deals only with the food grains. Shri Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman, sir. My very pertinent but a straight question to Honorable Minister. That reports indicate that India loses millions of metric tons of food grains annually due to inadequate storage. Has the government conducted any audits on storage losses, and what penalties are imposed on agencies responsible for mismanagement? Honorable Minister. Sir, as it is, if I can say that storage improvement is the major concern, but in last 10 years, we have taken a lot of measures. By that, the overall spoilage, because either it is for the storage, whether it is the transportation, whatever, all put together, total storage is 0.022%. However, using the technology, we are taking a lot of measures, and that measures have reduced the spoilage. And it is not the question of taking the action. We are trying to introduce more and more technologies. Because of that, considerably, it has come down. Scientific storage, food grains are stored by adopting proper scientific code of the storage practices. Adequate dunnage material such as wooden crate, bamboo mats, polythene sheets are used, and fumigation covers, nylon ropes, nets, and the insecticides for the control of the stored grain, insect pests are provided. Many things such we are doing. And now I can say it has come down to very, very lowest level. Further also, we want to see that it comes to almost zero level. Dr. M. Thambidurai. Thank you, Chairman, sir. As our colleague Josh said, I want to add the same thing. In Tamil Nadu, the food procurements are taking place. The farmers are suffering a lot. Recently, my leader, Edappadi Palaniswamy, gave a statement. Due to the carelessness of the state government, whatever they procured and storage went and spoiled by the rain, but they are not taking action. Same way, I want to know whether the government will take aware of these things and give any assistance or take any penalty action. As he is taking penalty action, whether take action against the state government, which failed to protect the farmers and also storage, all the grains are gone away. What is the loss is making? This kind of loss, the government is not only many instances in the flood areas, never recently the present government is careless about the protecting the farmers and all the storage of the thing. What action you are going Honorable to take? Minister. Already mentioned here, the overall spoilage is very, as far as central pool storage is concerned, I am talking because that report, whether the state government which stores for its own consumption, because some of the states, we provide 5 kgs of either rice or wheat free of cost under Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana, free of cost for the 80 crore people in the entire country. Whatever PDS rice or wheat we store in the state, we take care of that. And out of that, as I have already mentioned, 0.022% is the loss because of these various reasons. And we have decided to further reduce it. At the same time, I can say in 22-23,
and 21-22, when the movement was fast because of in COVID, we have supplied more grains free of cost at that time. Because of that and some other reasons, it was 0.002%. So that it is not to say that spoilage is more. As far as central pool of food storage, I mean food grain storage is concerned, their storage is very, very negligible. However, whatever 0.022% is there, 0.022% is there, even to reduce that also, many actions are being initiated. And wherever, if private go down or the even FCI won't go down or the state won't go down, if somebody, because of the mistakes by the human-led mistakes, if it happens, definitely actions are going to be initiated. Question number 183, Shri Saket Gokhale. Question number 183. Honorable Minister. The statement is laid on the table of the House. Supplementary number 1, Shri Saket Gokhale. Thank you, sir. Sir, first I would like to commend the Honorable Minister for India has greatly reduced our maternal and infant mortality rates. I would definitely like to congratulate the ministry for that. So in the answer that is given, it is true that the government does provide hot meals under the Janni Shishu Suraksha Karyakram. The problem, sir, is that these are provided in the general health centers and the ones which are accessible. But the problem is in the peripheral health centers, in a lot of states, an allowance is given for maybe milk and biscuits, and that has been the tradition, where hot meals, it is not possible to provide them. So in that particular area, I want to ask the Honorable Minister whether there is any plan by the ministry to provide an allowance or maybe extend it in places where hot meals cannot be provided to women. Honorable Minister. So, Janani Shishu Suraksha Karyakram, this was introduced in the year 2011, primarily to bring down the out-of-pocket expenses for the women and children who are seeking health treatment services at the public health facilities. This is a scheme under which we do not provide any financial incentive. We provide in-kind services to the pregnant women, whether it is free diet, drugs, diagnostics, consumables, transport, or free blood transfusion services. So these are the facilities which are being provided all over the country to different states, and the out-of-pocket expenses have come down because of many schemes, but primarily because of this scheme. Second supplementary, Shri Saket Gokhale. So unfortunately, my question wasn't answered because I said there are peripheral health centers where it is not possible for the government to provide hot meals. What do we do in areas like those? But nevertheless, sir, the other issue that people are facing is, again, in peripheral areas, a lot of times ambulances, there is a shortage, they cannot reach. So they have to take referral transport. Or in a lot of peripheral health areas, advanced ultrasound facilities are not available. So these are areas where out-of-pocket expenses do happen. I mean, the government doesn't reimburse, but women do end up going through. So I'm talking specifically about these remote areas, be it in terms of diet, be it in terms of ultrasound. Is the government considering providing reimbursement in areas where the government is not able to, for logistical reasons, provide those services? Thank you. Honorable Minister. So there is a provision under the National Health Mission, which we call as PIP, Program Implementation Plan. So how do we unfold the program? That has to be decided at the grassroots level. The suggestions which you have given, if it comes under the Program Implementation Plan, we can think about it because they sit, they have discussion, the meeting takes place, and we discuss in the nitty-gritties of it. So the suggestion is good, but I would advise the honorable member that the chief medical officer and the block medical officer, they should come up with some plan. What do they need at which place? And the National Health Mission, the steering committee, the steering group is always very conscious about all these things. And the annual meeting takes place and we also monitor it. So we'll see accordingly. Supplementary, third, Susri Dola Sen. Thank you, Chairman, sir. You are welcome, most welcome back, sir. Hope you are in good health and spirit.
Somehow nowadays the price of the general medicines needed for the pregnant women and the general medicines needed for the newborn children, which is very much related for Janani Shishu Suraksha, and also the life-saving drugs for the mother and child, and also for the cancer patients, for the high blood pressure, diabetes patients also, increasing day by day. Our crores of common and downtrodden people and mothers and children are suffering always for this reason. What measure is being taken by the Union Government, Minister, through you, sir, I want to know, to address these people's issues so that the price of medicines may be reduced? Honorable Minister. I would like to enlighten the House through the member, the question which she has asked, that as the Honorable Member Saket Gokhale also said, that the MMR, IMR, and the under 5 mortality has been on decline. And the decline has been more than double of the global decline. This has been possible only because of the interventions which we have done. And I would like to enlighten the House, because through you, the people should also come to know that we have a very exhaustive mother and child treatment program, and the reproductive health care has been taken care. As far as the mother and the child health care is concerned, we should know that the moment any woman conceives, from that very moment, there are 4 compulsory antenatal checkups which are being done. And there are 3 additional checkups for high-risk patients. And we also give them a financial support of up to 1,400 rupees in the rural areas and 1,000 in the urban areas. And Asha's workers are also given the incentive. Along with this, the delivery which takes place, more than 88.6 deliveries are being taken in they are institutional deliveries which are taking place. And for that also, no expense. Transportation is taken care by the government. The normal delivery or the cesarean C-section, that is taken, free diagnosis, free drugs, everything is given. And if the deliveries, they get the meals also, as it was asked by Saket Gokhale ji, for 3 days if it's a normal delivery, and 7 days if it's a C-section. What I mean to say is that as far as the mother and the child is concerned, and I would also like to share with you that all the vaccination, which is 27 vaccinations, 12 vaccinations in 27 sessions, is given to mother and child till the child grows till the age of 18. तो हम पूरा हेल्थ के प्रोग्राम को चेकअप करते हुए एक हेल्दी बॉर्न चाइल्ड किस तरीके से ग्रो करता है, तब तक हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी चिंता करता है. And all this has taken care about the health of the India. One thing more, what you are talking about, इस previous question के आंसर में मैंने कैंसर के बारे में कहा था, और मैंने फिगर्स भी दिए कि कितने करोड़ सर्विक्स कैंसर, कितने करोड़ ओरल कैंसर और कितने करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो चुकी है, और कितने 1000 सस्पेक्टेड केसेस को हम ट्रीट कर रहे हैं. तो बहुत एग्जॉस्टिव हमारा प्रोग्राम है. What I need your support is that every member from all sides, they should contact the chief medical officer and try to discuss with him what is the program, how it is being implemented. हमारा भी भला होगा, पेशेंट्स का भी भला होगा, और आपका भी ज्ञानवर्धन होगा कि किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है. Supplementary 4, Shri G.C. Chandrasekhar. Thank you, Chairman, sir. Sir, whether the ministry is aware of the fact that cancer among the women is growing every year, breast cancer contributes around 14.8% and around 5.4% is cervical cancer in women as per the Indian Council of Medical Research. And what are the initiatives taken by the government to enhance early screening and diagnosis of cancer among the women?
And what is the setup? Specialized oncology specialties in district hospitals, especially in rural areas. Honorable Minister. Sir, the question relates to maternal health. He's asking about cancer, but I'll answer accordingly. Sir, we have got... Sometimes you have to overlook certain Yes, sir. situations. Yeah, I understand. It's a good question. Yes. Sir, we have got the National Cancer Institute in Jhajjar, and it has come up very well. More than 1,400 beds are there, and it is one of the world's best facilities are being given there, and it is taking care. The same way the Chitranjan Cancer Center, Calcutta, that is also taking care. Then the Homi Baba institutes, there are 2 places, and all Indians of medical sciences, the 22 all Indians of medical sciences have got a full-fledged oncology department which is being developed. So this is how we are, and as you talked about the rural, I answered in my previous question that 1,75,000 are Ayushman Arogya Mandirs. There is a CHO, Community Health Officer. They are doing the screening work, and they are also connected to the hub and spoke model with telemedicine. And they advise accordingly which patient has to go which way. But I repeat again that screened up to 16th March 2025, 29.32 crore oral cancers have been screened and diagnosed 1,63,000. The same way for breast cancer, 15 crore 60 lakh has been screened and diagnosed 57,000 to be patient of breast cancer, and 9 crore 48 lakh have been screened for cervix cancer and diagnosed 97,000. So you can understand the volume, and you can understand the level at which we are screening and we are diagnosing and we are treating them also. It was a supplementary to question number 181, as a matter of fact. Supplementary 5, Shri A.A. Rahim. Thank you for this opportunity. Sir, my question regarding the JSSK. Sir, I want to know particularly regarding the non-adult mothers in the tribal area. Sir, I have a bitter experience in this guest house. When I asked the Ministry of Tribal Affairs on March 12th about the number of non-adult mothers, Honorable Minister gave an evasive answer. That's why I am asking again the floor. I now ask the Minister directly, how many non-adult mothers are there in tribal areas? How many of them have received the benefit under the Janani JSSK? What is the infant mortality rate in this area, particularly in this area of tribals? Honorable Minister. From the question is non-adult mother means the teenage pregnancy. We don't have, as such, at this point of time, I don't have the exact figures about it. If you can ask separately, we'll certainly answer this question, because we don't, we keep the register accordingly. ASHA workers note down the age. So we will come out if the separate question is being asked. Question number 184, Shri Bhuvaneshwar Kalita. Honorable Minister. सभापति महोदय, विवरण सभा के पटल पर रखा गया है. Supplementary number 1, Shri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman Cha. I joined the entire House to wish you quick recovery, good health, and long life. Since all are beneficiary of CGHS, and my supplementary relates to only CGHS wellness centers, and particularly in Northeastern region. During the visit to the CGHS wellness centers, we found that in many of the wellness centers, regular doctors are not there. Only doctors on contact basis, they are working. So the complaint from them was that there is no parity
know whether the minister is considering to bring parity in the salary and pension of these contextual doctors. Honorable Minister. सभापति महोदय, जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में सीजीएचएस के बारे में यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछा गया, तो सीजीएचएस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 33 स्वास्थ्य सेवा संगठन को भी इसमें सूचीबद्ध किया गया है कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लोगों का उपचार किया जाए। वैसे ही सीजीएचएस लाभार्थी को नगद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए भी एम्स गुवाहाटी के साथ भी एक समझौता और ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सीजीएचएस ने सीजीएचएस पेंशन भोगी लाभार्थियों को नगद रहित उपचार के लिए 12 नवंबर 2024 को क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स इम्फाल तथा 25 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान निग्रिम्स शिलांग के साथ पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और निश्चित रूप से इसका जो बजट है कि ज्यादा से ज्यादा किया जाए, तो पिछले बार जो 7,500 के लगभग इसका बजट था, तो ये साल में उसको लगभग 1,000 करोड़ से बढ़कर 8,500 तक होने का भी अनुमान है। तो केंद्रीय कर्मचारी की स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधा दी जाती है सीजीएचएस सेंटर में से, तो वो देने के लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। Supplementary to Shri Bhuvaneshwar Kalita. Sir, the Honorable Minister's reply is also already in the written answer. My question was different. That was the parity he is just 1 meter away from you. parity and pension among for the contextual doctors. Anyway, sir, my second supplementary is again during our visits to these CGHS wellness centers, we have noticed that these doctors scantily they prescribe generic medicines, and while we visited those some of the beneficiaries and the Kendras, the reply was from the Kendras that there is lack or shortage of popular diseases like popular diseases like diabetes, like kidney disease, or like blood pressure. So in these areas, there is shortage of generic medicines in the Kendras, Janusari Kendras. Whether the Honorable Minister will look into it so that generic medicines are made available for these rampant diseases. Thank you. सभापति महोदय, जो यहाँ पर जन औषधि पूर्ति के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो मंत्रालय के माध्यम से गुणवत्ता और खरीद में सुधार के लिए भी बहुत सारे पहल वहाँ पर किए जा रहे हैं और दर अनुबंधन विस्तार से भी जन औषधि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का काम भी निश्चित रूप से मंत्रालय के माध्यम से सीजीएस में किया जा रहा है और समान मूल्य निर्धारण के लिए भी सीधी बातचीत और स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता का भी उसमें आश्वासन भी दिया गया है। और जो चिंता सदस्य ने यहाँ पर व्यक्त की गई है कि जन औषधि केंद्र सीजीएस में ज्यादातर लिखे नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भी पड़ताल की जाएगी और लोगों को सस्ती दवाएं ज्यादा से ज्यादा कैसी उपलब्ध होंगी, इसके लिए भी निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय से ध्यान रखा जाएगा। Supplementary 3, Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh. माइक सर, मेरा क्वेश्चन 183 और 184 क्वेश्चन नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में अपने देश में एमएमआर और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR दोनों में काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन
जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है, जैसे असम, मेघालय और मणिपुर, वहाँ का जो MMR है और IMR दोनों नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो मेरा मंत्री जी से ये क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए क्या हमारा कोई स्पेसिफिक प्लान है ताकि उसको नेशनल एवरेज के करीब लेके आए, ताकि हमारा और भी अच्छा दिखे। और CGHS का इसमें कोई रोल बनता है या उसको कोई मिशन मोड पे लगा सकते हैं ताकि उसको हम जल्दी से इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर, हम लोग रीजन वाइज भी, स्टेट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और ब्लॉक वाइज वर्क करते हैं। हम लोग निकालते हैं कौन से स्टेट्स वीक हैं, उन स्टेट्स को क्या क्या उसमें वीकनेसेस के क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं। उसी तरीके से किसी स्टेट में उनके पैरामीटर्स अच्छे होंगे, बट कोई जिला है या ब्लॉक है तो उसको भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस दृष्टि से जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, मिनिस्ट्री एक्ट्स अकॉर्डिंगली, और हमारा जोन वाइज भी होता है। और नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, बहुत से ट्राइबल एरियाज हमारे सेंट्रल इंडिया में भी हैं जिसको हम प्रायोरिटाइज करके और प्रायोरिटी दे करके स्पेशल फोकस पे उन एरियाज को हम एड्रेस करते हैं। सप्लीमेंट्री 4, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। Supplementary for 185, sir. So supplementary number 4, Susri Susmita Dev. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, I have gone through the list of sanctioned posts and the vacancies, and there are 3 units in Silchar. But the figure against sanctioned posts is 0, sir. So therefore, they have not been able to fill it. My question to the Honorable Minister is that, sir, a posting in Northeast is seen in the country as a hardship posting sometimes, sir. So does the Health Minister have any provision to maybe hire doctors, paramedics on a contractual basis rather than filling up these permanent posts, which may help in better human resource? And नड्डा जी सदन में है, सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि NHM के जो एम्प्लॉइज है वो आसाम में बहुत दिनों से एक स्ट्राइक कर रहे हैं फॉर इक्वल पे इक्वल वर्क। बड़ी मेहरबानी होगी सर अगर आप उनके डिमांड को लेकर थोड़ा चिंता करें। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। डॉक्टर्स के लगाने का सवाल है। हमारे यहाँ कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज होती हैं और वो जैसे यूपीएससी लेता है और यूपीएससी ईयर वाइज ईयर लेता है। लास्ट ईयर 165 पोस्ट उन्होंने भरी थी और वो हम प्रायोरिटी पर नॉर्थ ईस्ट में ही हम भेजते हैं। और वैसे ही अब इस बार हमने 225 पोस्ट की रिक्वेजिशन भेजी है और वो एग्जामिनेशन होगा तो वी विल अपॉइंट अकॉर्डिंगली। जो आपने कहा कि लोकल लोगों को या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो मैं इनका सजेशन है, सजेशन इज गुड। देखते हैं मैं मंत्रालय में क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। और आपने एक बात और कही कि NHM के लोगों का इक्वल पे वाला विषय हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप मुझे चेंबर में कोई इसके बारे में डिटेल पर्टिकुलर्स देंगे तो आई विल सर्टेनली लुक इनटू इट। I called out the name of Dr. Syed Nasir Hussain because he was trying to catch my attention. So I sent the marshal to find out what does he want, and came a chit he wants to ask supplementary on 184. Therefore 184 we'll try to accommodate in 185. But the best is we must send the slips now. Question number 185. Shri Rita Brata Banerjee. Question 185. Honorable Minister. Supplementary 1, Shri Rita Brata Banerjee. Thank you, sir. Sir, roughly the
written off loans for the nationalized banks tends to around 12 lakh crore. It has been written off by the nationalized banks. The recovery rate from the answer that the amount of recovered loan is 1,26,000 plus, that is roughly 10%. Through you, sir, I want to know from the Honorable Minister that can the Honorable Minister please provide the House with the details of the top 20 willful defaulters in India as on date, and state specifically what action has been taken to recover the outstanding amounts from these willful defaulters. It will be greatly appreciated if the Honorable Minister can furnish a written response on this with details. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने एनपीए की बात किया है, अगर देखें तो बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के अनुरूप और अपने बोर्डों के अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार एनपीए लोन को राइट ऑफ करती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो राइट ऑफ करने से पहले 100% का प्रोविजन किया जाता है ताकि जमाकर्ताओं को कोई भी नुकसान ना हो। और राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा माफ कर दिया गया। जिस प्रकार से बैंक रिकवरी करती है और यथावत करती रहती है, और ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करती है। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि एनपीए बहुत बढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो एनपीए लगातार गति से घट रही है और 2024-25 में अगर देखें तो 2.42% रह गई है। Supplementary to Sri Rita Brata Banerjee. Sir, my specific question was that the nationalized banks, overall 16.35 lakh crores have been written off. Overall, the nationalized bank amount is 12 lakh crores. Of that, the answer that is given by the government, it shows that the recovery rate is 1,26,000. That is merely 10%. So 90% of the loans is not recovered. Now my second supplementary, through you, sir, I want to know, can the ministry please state the details of the cases where the government has taken recapitalization measures for public sector banks facing a high volume of non-performing assets? Please also state the details of the funds for recapitalization released to these banks in the last 5 years. I will urge through you, sir, I need a specific answer. The earlier answer was not at all specific. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए, मैं निश्चित तौर से बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आरबीआई और सरकार मिल करके कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई ताकि बैंकों को मजबूती प्राप्त हो सके, और आज हमारे देश में सभी बैंक रोबोट्स तरीके से काम कर रहे हैं। Honorable Finance Minister is responding. Once again, Honorable Finance Minister is responding. Sir, I just want to add a few more things to what the Honorable Minister of State has said. On the recovery of written-off loans, sir, first of all, I'm sure the Honorable Member realizes that when we say a loan is written off, it is not as if it has been completely waived off. The defaulter doesn't escape consequences. Action is taken through courts, action is taken through the IBC process, and recovered monies are restored to the banks. And that record of how much has been restituted to the banks have been periodically answered when questions are asked in the parliament. We have done that. But I just want to, because the honorable member kept saying he wants specific details, the numbers that he mentioned are probably old. I want to give the latest numbers, sir. Actually speaking, recovery in written off loans by banks, sir, had reached a peak in the sense by about 22-23 public sector banks, recovery of written off loans has gone up to the level of 35,378 crores. Cumulatively, the public sector banks have recovered written off loans of a total of 2,27,288 crores. Now, private sector banks on their own are also recovering, and they have recovered
something like 55,598 crores. And therefore, the recovery is an ongoing process. Every year adds to the total of money recovered. Now, as a whole, there is 2,27,288 crores which are recovered by just the public sector banks. So that is on the recovery of written off loans. Supplementary 3, Dr. John Britas. Sir, thank you very much, sir. Sir, this is the first time I am speaking after you have come back fit as a fiddle, sir. It must have been very difficult for you. Yes, sir. Very difficult. So without you, sir, I feel orphaned, sir. Sir, through you, sir, I thank the Honorable Finance Minister for her kind gesture of going over to Kerala House to have breakfast with my Chief Minister, sir. Sir, having said this, there is an impression that all the sectors are equal in its default. In this context, I would ask a specific question here. Part A, what could be the sector-wise industry, service, agriculture, NPA, write-off, and the recovery thereof? These three sector-wise. And the B part of the question is that there is a growing concern that education loans are becoming NPAs on account of growing unemployment. Will the minister be kind enough to give the statistics of the amount of NPAs on this account, the write-off and the recovery? Thank you very much, sir. Honorable Minister. Specific details which are being asked about, let's say, the agriculture, the manufacturing and the services, and also on the student loans. I may have to obtain it. I don't have it ready in my hands. I'll always take it, share it in the House, and also share it with the Honorable Member. Difficult choice. I tilt in favor of Shri Digvijay Singh for supplementary number 4 at the cost of Dr. Syed Nasir Hussain. Come on now. Sir, if I call out someone, there has to be compliance. I have accepted. Okay. I have acceded to your request. Come on. Sir, I would be very happy to withdraw in his favor, sir. Doesn't matter, sir. I have taken a call. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एनसीएलटी के प्रकरणों में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब तक हेयरकट एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक एनसीएलटी आदेश नहीं देता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम को पूछना चाहता हूं कि एसबीआई लगभग 65% लोन्स वो हेयरकट के वजह से नुकसान हुआ। इसी प्रकार 2 प्रकरणों में जो उसके क्रेडिटर्स की जितना अमाउंट था केवल 4%, 96% हेयरकट हुआ है। एक हुआ है रेडियस एस्टेट के लिए और वीडियोकॉन इंडस्ट्री के लिए। वहां का जो लाभार्थी कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अडानी गुड होम्स। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जो आपने उत्तर में बताया है जितना लोन राइट ऑफ हुआ है उसमें क्या हेयरकट का जो फिगर है वो शामिल है और क्या उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूरी दी है? Honorable Minister. Sir, the committee of creditors will have to give manzoori. There is not as if any one liquidation process or resolution process can. Is that a finding? Honorable Finance Minister is on her legs. Sir, very senior member sometimes is in a hurry to get the reply, just as he is in a hurry to also arrive at the numbers. 34% haircut and all that is on the basis of what claims have come through. Liquidation, and when it is done, and the calculation of haircut is being done by one section in one way, but the laid down procedures talk about liquidation value
the liquidation value on the basis of which you've recovered, and that is what is counted when you're talking in the terms of IBC resolution process. So the same number per the laid down rules approved by this parliament through the IBC law shows that 169% has been realized. 169% has been realized, sir. And therefore, looking at it from the value of claims alone does not count for what I will perceive as a haircut or somebody else will perceive as a haircut. Haircut is when you already have seen what's the liquidation value. And if you're realizing 169% of the liquidation value, Honorable Member Digvijay Singh will probably have to look at these figures also and then take the inference about how the system works. And moreover, this is the kind of number that we're talking about for those cases where the claims are more than 1,000 crores each. 164 corporate debtors whose cases were admitted have realized 169%. So, sir, it is important. If you're talking about particular cases, I do not want to get into who's the beneficiary, who's the bidder, who came to claim, and who is now taking over that defaulted company. Is the company's defaulting promoter coming through back door, which the law does not permit? All this, I'm sure the honorable member knows. But since he's talked about prominent cases, I will take the liberty 1 minute extra to tell through you, sir, Honorable Chairman. SR Steel India Limited, realization as percentage of admitted claims is 77%. And number of days it took for resolution is, of course, a protracted long one, which goes beyond what we wanted it. It had taken 583 days. Sir, in the case of Binani Cements Limited, 99% has been the realization. MBL Infrastructure Limited, 120% realization. IVRCL Chengapalli Tollways Limited, 100% realization. So there are instances where realization is in this order. And to talk of haircut, 30%, 15%, 90% has been given away as a haircut are all, I'm sorry to say, will you allow me some indulgence, exaggerated. In the last session, the Honorable Finance Minister was very graceful to enlighten me about phone banking, this time about haircut. Shrimati Sangeeta Yadav, supplementary 5. माननीय सभापति जी, आपको आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। यहाँ चर्चा तो बैंकों के एनपीए और राइट ऑफ की हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें चल रही है डिजिटल फ्रॉड का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस स्थिति से कंडीशन से निपटने के लिए कोई प्रयास कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार शुरू से जब से आई है, कहीं ना कहीं आरबीआई और सरकार मिलकर के लगातार बैंकों को शुद्धिकरण के लिए काम कर रही है। जहाँ तक डिजिटल फ्रॉड का मामला है, अगर देखें तो भारतीय साइबर सर्वेलेंस केंद्र I4C की स्थापना की गई। रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन फाइनेंशियल साइबर क्राइम रिपोर्ट और मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट कर इसे NPCI से इंटीग्रेट किया गया। 1930 की टोल फ्री नंबर चलाया गया। दूरसंचार विभाग के चचू पोर्टल पर कॉल एवं SMS के संभावित फ्रॉड पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम का मन की बात का संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने सदन में दिया था कि रुको सोचो एक्शन के इन्हीं प्रयासों से परिणाम में आता है। और मैं 2014-15 में देखें अगर तो डिजिटल फ्रॉड जो हो 56,215 करोड़ हुआ था, वहीं 23-24 में घटक कर वो 4,224 करोड़ ही रह गया है। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं उस पर लगातार प्रयास करी है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सबको मिल करके उसकी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी की बहुत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 186, श्री नीरज शेखर। प्रश्न संख्या 186। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, श्री नीरज शेखर।
सर, सबसे पहले तो मैं भगवान से कामना करता हूं आपके स्वास्थ्य लाभ की, और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। विस्तृत उत्तर दिया इन्होंने। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि विशेषकर पूर्वांचल में, जहां से मैं आता हूं, बलिया, गाजीपुर, मऊ, वहां पर अनाज के भंडारण की बड़ी समस्या है। आज किसान ज्यादा उगा देता है, उसका भंडारण नहीं हो पाता है। कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था कि स्टील साइलोस बनाए जाएंगे। ऐसा हम लोग ने भी सुना था कि पूर्वांचल में, गाजीपुर, बलिया में बनेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार उस पर विचार कर रही है और क्या स्टील साइलोस बलिया, गाजीपुर में बनेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ओवरऑल देश में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास तो जारी है। इसमें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइलोज अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर हमने शुरू किया है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी पीजी स्कीम अंडर पीपीपी मोड में है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टोरेज एंड गोडाउन फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट है, और हायरिंग गोडाउन फ्रॉम द सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत कुछ स्कीम के द्वारा क्वेश्चन आवर हम चला रहे हैं सर। ओवर। थैंक यू। हैप्पी। जयराम जी बहुत पर्टिकुलर थे कि जवाब पूरा न हो। Reply to the discussion on the budget Manipur 2025-26 and the motions regarding appropriation bills moved by Shri Pankaj Chaudhary on the 17th March 2025. The discussion was concluded yesterday, and the Honorable Minister to reply now, Srimati Nirmala Sitharaman. So thank you very much for giving me this opportunity to respond to the discussion which have happened on the 4 bills which we laid. The 4 bills relate to the second and final supplementary demand for grants 2024-25, excess demand for grants 21-22 of the Union Government, budget of Manipur 25-26, and supplementary demand for grants 24-25 of Manipur. So I think more than 20 honorable members have spoken. I was a bit disappointed, sir, if you allow me to say it, that the discussion was more on the situation and also the political viewpoints on Manipur, which is a very important, very, very sensitive, much needed to hear that, but less on the budget, both of the supplementary demands for grants and also on the Manipur budget itself. However, sir, I will give a broad picture of the budget the 4 bills say, and also respond to some of the questions and worries which the honorable members have raised both on Manipur and the general budget. Sir, this final supplementary demand for grants is the second. Although we are allowed to come up with up to three supplementary demands, we have chosen to have only 2 supplementary demands, and hence the second is the final supplementary for this year. It has 52 demands. Honorable Finance, it is always a pleasure to listen to you, but for few days I am subject to certain medical prescriptions. Thank you, sir. Sir, I did have a word of message conveyed to you, but I welcome you, and my prayers that your health is good and recovery is fast. Deputy Chairman, sir, I commenced my response with stating what the 4 bills which are before us, and I will try to respond
First of all, let me talk on the contents of the budget, sir. Sir, it has 52 demands and 3 appropriations. I take a minute to explain about the elements of the supplementary demand. There is a technical supplementary, which the supplementary demand for grants includes. It is required for using savings from one section. It is more as a matter of information for the House. It is required for using savings from one section to another section within the given or between grants, and also when additional expenditure is matched by concurrent receipts or recoveries. For example, the technical supplementary of 750 crores, which is being sought for transfer to Senior Citizens Welfare Fund in the DEA demand. So it is only a transfer within. The token supplementary, on the other hand, it is a provision, sir, of 1 lakh of rupees made to seek prior approval of Parliament on specific items attracting the financial limits of the new service or new instrument of service. It enables the department to reappropriate resources within the same section of the grant. So they can just be 1 lakh rupees made as a grant, which is a token supplementary. Later on, more can be added, but we create that window by providing that 1 lakh. And for instance, in that token supplementary, sir, a token supplementary is being made sought for education, school education, to meet additional expenditure under the grants for creation of capital assets in the Samagra Shiksha Abhiyan from savings within the same section of the grant. So that is a new instrument which is coming in, new scheme or new idea for creation of capital assets. So you would have created the token and then it will get expanded. Finally, sir, there is a cash supplementary which we explain, and the cash supplementary entails cash outgo. It increases the BE of the year by an equivalent amount when provided. It is given when adequate savings are not available to meet the additional fund requirements through reappropriation. For example, the cash supplementary in this particular supplementary demand for grants of 2,500 crore is being sought for urea and P&K subsidy this year. So that is a cash supplementary. So a token, a cash, or a technical are the 3 headings under which we come for appropriation-based approval. So that is what is explained, sir. The net cash outgo or cash supplementary is 51,463 crores in this budget. Technical supplementary is 6,27,045 crore, and unusually a big amount. Normally you don't have this kind of a large technical supplementary, but this is being matched by savings from different sections and the same grant or among the same grants, and therefore it doesn't recover newer payments. Token supplementary is only 0.67 crores, 67 lakhs. So I just want to highlight that. And also to say, we are also in this batch of supplementary demands for grants, provides for recoupment of contingency fund advance of 19,765 crores. So even a recoupment is mentioned here. Now, as I was saying earlier, the cash supplementary pertains largely to the fertilizers, oil and industry development fund, that is OIDF, 11,600 crores. This is a transfer from Consolidated Fund of India to the OIDF, maintained in public account. There's also the urea, the P&K fertilizers subsidy of 2,500 crores. The other is related to additional allowance being made of 2,186 crore for the PM Kisan. This is an additional amount being provided over and above the budget supplement for the current year itself. I'm not getting into the technical supplementary, sir, which is already very much in detail explained in the budget document itself. So the excess demand for the year 21-22
amounts to 1,291 again crores. Again, that year's excess demand goes towards Department of Fertilizers and Pension, that is a civil pension, and two appropriations, namely for Defense Ministry Civil, which is a charge section, and Ministry of Railways, which is again a charge section. So now I come to the Manipur budget and also the Manipur supplementary demands. I first deal with the supplementary demand for Manipur, sir. This supplementary demand, sir, is for 1,861 crore, covers 20 demands and one appropriation. 948 crore rupees supplementary is being sought for revenue expenditure itself. These include, and very importantly, interest payment and debt services, additional requirement of pay and allowances, relief measures and security expenditure on account of law and order situation, and taking over the DISCOM losses for the state. So that is one heading, sir. 913 crores supplementary is being sought for capital expenditure also. We gave the revenue expenditure and the items under it. Now the capital expenditure. I'd like to say that for Manipur, we have already given the special assistance for state capital investment, which is a 50-year interest free, which all states get. But however, because of the disturbance and the administration being focused on that, last 2 years, they hadn't claimed anything under the 50-year interest free. Manipur needed it. So 913 crores are being given under the special assistance for states capital investment. That is for 24-25, sir, the current running year. Other than this, Manipur as a state had never had contingency fund created for itself, which is very important, and most states create and have contingency fund arrangement because that helps them to meet with emergent situations. So we have created now a contingency fund for Manipur with 500 crores being given to them. So that is about this supplementary demand for 24-25 Manipur budget, sir. But the coming year, 25-26 budget is also presented here. And I would like to remind honorable members, particularly members Sushmita Dev, because of a concern about Manipur and its requirement for funds, given the situation they are in, she had said, why are you not announcing a package? I would like to tell her, honorable member, through you, sir, that this is a vote on account budget for Manipur. We are presenting a vote on account for 6 months so that the government runs, its immediate emerging expenditure can be taken care of, and the government, when it comes into place, will obviously make provision for whatever they want, and that is the budget, which is the year-long budget. So this is a budget vote on account for 6 months, and this is for 17,947 crores. The total receipts which I've projected is 35,368 crores. Revenue receipts are estimated to be 27,231 crores. Sir, the state's own tax is 2,634 crore rupees as receipts, and non-tax is 400 crore respectively. So at this stage, sir, we are looking at giving all the assistance which I've committed. I said this in Lok Sabha, I'm repeating it here. We extend the fullest support from Ministry of Finance so that the recovery of Manipur will be sooner rather than later. And we have absolutely extended all assistance, and in the meanwhile, making sure the public finance and the fiscal situation of Manipur is well assessed. Central government will be fully of support to the state.
So other than that, there are, I'm going by individual observations made by honorable members, trying to respond to them. Again, commencing from Manipur budget and Manipur law and order issues, several members have spoken. Member Honorable Shakti Singh Gohil, Bikash Ranjan Bhattacharjee, Sushmita Dev, Sanjay Singh, Sulata Dev, Manoj Kumar Jha, Mr. P. Wilson, Vaiko, Santosh Kumar, all of them have spoken about it. So I will broadly explain the context, sir. I want to understand, equally state some facts before the House. Sir, Manipur is a border state. Manipur, at least all of us know, since some decades, has gone through quite a crisis. And every time there is a recovery, it goes back to some other situation. So every government has handled it with that sensitivity. I am not differentiating between this government or that government. There have been situations much more in terms of human loss, more in terms of asset loss and so on. So when we speak about the state, I will say that every voice which has been voiced in this House has the same sensitivity as much as all of us have. There is no way any one of us will be doing any help to Manipur by pointing a finger at one another. But even with that said, I will definitely try to remind some passionate voices which speak as if everything was calm and never has there been a situation like this ever before in Manipur. Sir, in 1990s, I've heard quite a few members speak about, oh, double engine sarkar, center be BJP, state be BJP. There have been double engine sarkar of Congress earlier. Center be Congress, Manipur be Congress. And what kind of agitations and loss of life have happened? So your double engine did not do anything. In fact, it worsened the situation, if I have to get into that kind of a talk. We are, all of us here, committed to get that state back to some normalcy, and we want that state to grow and prosper as much as any other state. They cannot be, even for a moment, a mockery of kind of things that we want to state when that state is suffering, and all of us will have to be working towards. Please take your seat, Mr. Gokhale. Nothing is going on record. Please take your seat. Madam, take your seat. Please, nothing is going on record. Take your seat. I will not get distracted by the TMC. Now I take the name. The TMC technique of shouting members down. Susmita ji, please. Every time somebody tries to answer the points that they raise, they shout them down. Please take your seat. That kind of a thing will not work in this House. I'm sorry to say this. We are trying to answer the questions that have been raised here. There is no need to shout me down here. I will continue my answer. Please. Sir, to 1990s, double engine Congress sarkar, double engine Congress sarkar ke samay, how many people died? I want to say, why in 1990s, the then Prime Minister did not visit, the then Home Minister did not visit? I would like to ask that question as much as... Please take your seats. I am not allowed to put in question. This tactics, I'm now saying the name, sir. This tactics of Trinamool Congress to shout down ministers when they speak will not be allowed, will not be entertained. We are giving answers. We are giving answers. You should have the strength of your conviction to hear the answers here. Please listen the answers, please. I'm coming point by point for every one of the questions that they've raised. If they don't have the conviction to sit and listen it, they can choose whatever they want. But it is not appropriate to shout the minister down when they are answering your questions. Have the patience. Sir, I will remind you, sir, in 2002, 2017, 2002 to 2017, Manipur had a Congress government. There was central government till 2014 run by the Congress party. Manipur witnessed 628 months. Sir, Honorable Member Sushmita Dev
Sushmita Dev, honorable member, has reasons to be worried about Manipur, she said, and I agree. She comes from an area which is close to Manipur and she knows so much about what's happening there. She raised a lot of questions. I am trying to answer each one of them. If it is an attempt to shut me down, it means that her allegations are not right. If she's got the strength of her conviction, she should hear my answers. And after that, I will sit down, welcome, if you permit her, to ask any number of questions more. But what's the point in shouting me down if there are other members who can also benefit from the answer that I'm giving? She's raised valid questions. I want to answer them. No, they've run out. That's because their tactics is always, don't allow a minister to answer, do all your mudslinging, go away. I know they are watching on the television. Sir, 2000, sorry? I'm giving you the answer. I'm giving answer. To their chief minister, they have to register that they protested. But this house is not the street of Bengal, not any street of Kolkata. Order prevails. You run the house per the rule, and we obey the rule. It's not, sorry, street, any street in Kolkata where they can scream, shout, pelt stones and run away. Sir, in between that time when Congress was ruling in center and in Manipur, 628 burns had happened. Blockade, several blockades had happened during the 15 years then, and also cost huge loss. The state exchequer had lost nearly 2,828 crore. It was assessed. 2,828 crore was lost during that period. Sir, and the worst economic blockade had happened at that time. And it occurred in 2011, lasting over 120 days, causing severe shortages. Petrol price was 200 rupees per litre. LPG cylinder cost 2,000 rupees per cylinder. LPG, petrol price is 200 per litre and LPG cylinder 2,000 per cylinder. So, what is the current situation, sir? The current situation when this problem started? Union Minister, Home Minister, visited the state and went one camp after another camp belonging to different communities, spent 4 days in Manipur. Home Minister of India. At the time when it was really peaking with the problem, he went, spent camp after camp. Sorry? Please. Please take your seat. The question is, this sort of communal violence is unique in Manipur. Which there. Thank you. No, Please. I'm reading out before. Sir, interestingly, sir, I'm sure the honorable members will know, honorable member is from CPM. So, yeah, I would like to say it again. No doubt in my mind about it. But I'm sure you don't have a doubt yourself. Honorable member is from CPM, sir. West Bengal saw the worst riots ever in history under the CPM rule. Tripura suffered under the CPM rule. Kerala is not able to recover because of the horrible policy of industrialization that they had. To the extent, sir, Please. to the extent, sir, Santosh Kumar ji, please sit down. Please take your seat. To the extent, sir, today Kerala's minister gives an interview in the papers saying Loku Kuli is not there anymore in Kerala. Can I say what that Loku Kuli was, sir? Loku Kuli is a place where Loku Kuli happens when workers are all sitting together looking if there can be some work. You and me or anybody going to Kerala get off the bus. On the top. Yes, I will talk. Please. Because you came up with a lot of things. Let her reply. Please take your seat. Please. Sir. Please take your seat. You get off the bus, sir. Honorable members will find this interesting. Nowhere else you will find it. From the bus, you have to remove your luggage. People are sitting on the ground. You will say, hey, please help me. Kitna dena hai? You will say some coolie and then you will have to bring the luggage down.
Assume he has to be paid 50 rupees. You will actually have to pay 50 plus another 50. You'll ask why? The other 50 is Noku Kuli. What is Noku in the Malayalam, sir? Noku means look. Meaning, I will be sitting and watching here. I may be a CPM card holder. I'll be sitting and watching, and the person, actual Kuli brings the luggage down, he gets 50 rupees. But for me, being a card holder member, watching that act itself, I need to get 50 rupees. That is Noku Kuli for you, sir. So, it is that kind of communism that has killed industry in Kerala, that kind of communism which has killed industry in Bengal, that kind of industry. Santosh Kumar, listen to me. No permission from the chair. Sir, with your permission, sir. Yes, with I your have not given permission, sir. permission. I want to say, if he's trying to tell me that no such a practice exists, 2 days ago, Honorable Chief Minister, I think, gave an interview. Kerala Chief Minister, I think, gave an interview in which he says there is no Noku Kuli nowadays, which means it was there before. Am I bluffing? Come on, Santosh ji. It's all right. You're doing all right. Don't deny what I'm saying. I'm also from that region. I may not be from any particular city in Kerala, sir. Sir, therefore, I want to say, Home Minister went to Kerala, to Manipur, spent 4 days moving from one camp to another of affected people belonging to all communities, irrespective of communities. That happened under Prime Minister Modi. Home Minister Amit Shah went there. The number of times since 1990 till 2014, when Congress was in ruling in center and Congress was in power, double engine Congress, not a minister went when there was this 162 days of blockade, 120 days of blockade. Tell me which minister went? No one went. But today they will mock your double engine. Of course, double engine. That's why the Home Minister went. That's why Nityananda Roy was there for more than 23 days. MOS Home was there for 23 days. So don't please compare how you handle Manipur and how this government is handling Manipur. We have greater sensitivity. We care for Manipur and every state of this country. Nowhere do we, stay back. Prime Minister himself went to Wayanad. Prime Minister himself went to Wayanad, hasn't he? Therefore, we should not speak as though we treated it better and you are not, whereas we are handling the legacy of 60 years of mishandling of states. And that is why the problems are so compounded today. It wasn't like this before. He went to Wayanad or not? Of course, that's what I'm saying. That's what I'm saying. You don't agree to it. Please, Santosh. You are putting words in my mouth. You are putting words into my mouth, Santosh Kumar. I said he also went to Kerala. Don't you try that communist tactic on me. Put your words into my mouth. I will not take it. No, you don't give me the tactics. Sir, so the special assistance scheme, again, the same culture has been inherited by TMC, sir. Shout people down. That's communist. TMC has inherited it. That's it. Sir, contingency fund have been created for 500 crores and that will help the state so that if there is emergency, they can handle it. Sir, in 1993, Rajkumar Dorendra Singh of the Congress was the chief minister of Manipur. A major flare-up happened between Kukis and Nagas between April and December 1993. 750 deaths unfortunately happened at that time. And 350 villages were completely burned down. A grave situation. Neither did the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao nor the Home Minister Shankar Rao Chauhan went to Manipur. And these are the people now questioning when both the Home Minister is gone, MOS is gone, we are trying to quickly recover the state. So, I'm sorry to say, sir, and even in the debate here, the Home Minister came and gave a statement. No,
what kind of noise was created, saying Prime Minister replied. Prime Minister took it as a part of his reply when he replied in the House. No, you wouldn't want to hear him like the way they do now. They all came to the well, shouted the Prime Minister down so that they don't hear him. But Prime Minister is made of a different stuff. He continued answering and spoke about how he's handling Manipur and did not relent. So on Manipur, I would submit to the House, go into the detail of what work is happening, how restoration is happening. It is our Manipur, your Manipur, all our Manipur. Deal with it with a sense of ownership, rather than saying, you doing that, it doesn't work. It's a very sensitive issue, and all of us will have to support one another so that we give a proper support to that state. Even in 97, 98, Prime Minister I.K. Gujral, even at that time, there was a major clash. 350 lives were lost at that time also. Even I.K. Gujral ji did not go to Manipur. So I want to have questions asked of the opposition members to contemplate, to introspect, and then stand up and speak. I'm here to hear it. All of us are here to hear it. Just don't throw mud and run away. But throw mud if you think you want to, but stand here to equally face the music. So no. Sir? Yeah, please listen. Okay. Because you're from Kerala, no? You're from Kerala, right? So, Manipur law and order, sir, I want to please put it on record and also inform the ministers and the members of parliament as to what steps that we are taking to restore normalcy. Both of the center and state collective efforts are being put so that there will be improvement in the law and order. Except for some sporadic incidents in the fringe areas and the unfortunate incident of 8th March 2025 in Kangpokpi, there has been a decreasing trend in cases of death, injuries, arson, firing incidents, and protests. Currently, there are 286 companies of CAPF and 137 columns of Army and Assam Rifles. Both are deployed along with the state police to maintain law and order in the state. Recovery of arms and ammunition looted are being recovered, and it is underway. Public notice by the Honorable Governor on 20th February 2025, the recovery has also seen an increase. Steps are also being taken to ensure free movement along the national highways. Convoy movement carrying essential commodities are continuing to ensure availability of essential commodities in the state. Helicopter service has resumed so that most district headquarters are connected for ease of travel for the public. Various measures have been taken up for the persons displaced in the violence, which is very important, sir. About 60,000 persons are currently residing in relief camps. About 7,000 persons have returned to their homes. About 400 crores of rupees have been provided under the MHA special package for relief camp operations and support to those affected in this lawlessness, riot, and everything else. More support will also be provided. Under PM Awas Yojana Gramin, 7,000 houses have been approved recently to provide for housing to those who are displaced. Various other support have also been given to those relief camps, such as healthcare, including mental health support, skill and livelihood training, and also education. Engagement with the civil society is underway from the level of the governor down to the level of the district administration. There is a clear step towards bringing peace in the state. Pending issues of the public are also being resolved quickly on a top priority mode. Sir, centrally sponsored schemes, priority is being given to clear up all the dues and nothing is kept pending at all. Major and critical projects are monitored and reviewed regularly for timely completion, including tying up of required funds for national highway projects, railway projects, civil secretariat, Chura Chandpur Medical College, Manipur water supply project, triple IT at Mayang Kang, and government residential accommodation is also being provided.
have given the pictures of revenue expenditure and also about the capital expenditure that we're giving through special assistance. Sir. There was concern expressed on the GSDP being stagnant. The unrest has led to reduction in economic activity. There's no denying that. With improvement in law and order and consequent improvement in economic activity, I expect the GSDP to show some recovery this year onwards. So I've already told about the amount that we've given for relief and rehabilitation. Temporary shelter, 15 crores, 15 crores have been given. This is the final installment payment with additional funds for extra works which are being provided. Permanent housing gets 30 crores. This is provided for works already taken up. And in addition to that, we are providing the 7,000 PMAY Grameen, which has been approved already. Relief operations for that, 100 crores have been given. That is specifically shown also under the new demand for 25-26. And for internally displaced persons, requirements in the relief camp are itemized and being serviced. So for the relief under the natural disasters, 200 crore is being put under the NDRF allocation. 68 crore is allocated under the SDRF and for mitigation purposes also, as per the recommendation of the 15th Finance Commission. So that was on Manipur, sir. Honorable Member Shakti Singh Gohil and also Member Girirajan from DMK raised questions about fiscal consolidation at the cost of cutting public spending. They said better financial discipline is required. Manrega is not being released. I want to take a minute to explain this, sir. Union budget, sir, total expenditure is 50.65 lakh crores, which is higher by about 2.44 lakh crores and 3.49 lakh crores compared to 24-25 and 24-25 RE, first number being BE related and the second being RE related. So the capital expenditure target itself is 11.21 lakh crores. The effective capital expenditure actually is only 15.48 lakh crore, not 11, because you're looking at the actual money being given to states which are actual for asset building. They may count as revenue for me, but for the states, it will be capital expenditure. So effective capital expenditure is 15.48 lakh crores. But all this is being done without any reduction in social welfare measures. The social welfare budgets are from 56,501 crore in 24-25 has in 25-26 gone to 60,052 crores. So it's actually increased. We are not doing any fiscal consolidation by cutting down on social welfare. Education has gone up from 1.26 crore in 24-25 to 1.29 lakh crores for 25-26. Health has gone up from 89,287 crore to 98,311 crore in the BE of 25-26. So there is no reduction in the social sector spending. I also want to draw the attention of honorable members to the statement 4AA, which has been given in Annexure C for me, for my reference, and in the budget documents. It is provided as a separate document. I want to highlight the fact, and I will request the honorable members to take a look at that statement. It comes as a part of the expenditure profile, shows how unspent balances are lying with the states, which are more than 1 lakh crore as on 31st December 2024, and they are for various centrally sponsored schemes. So our money has already gone there. It's lying unutilized, 1 lakh crore. Now, we also borrow money and then send it for the schemes. They should be utilized appropriately and speedily. Sir, on the question of Bengal funds not being released, honorable members don't seem to be here. Probably they don't want an answer from me because they know that even the CAG has pointed out on how many inappropriate actions have happened. Many of the bogus ghost accounts
have been given money to, and when the realization had to happen from those ghost accounts, the state government chose to pay that amount which has actually got to be realized from the ghost accounts. They gave that money itself from their own state's treasury. So one, first of all, you give the money for non-existing individual. Two, when that has to be recovered as per the orders of CAG, you again give from the taxpayers' money to saying, no, I've recovered, take it. You have not recovered from people for whom it went, who were not deserving of it, or probably people who don't even exist. Whereas for that, to make up that, you again take it from the taxpayers' money. Such blatant misuse have happened, and therefore, about Bengal screaming and shouting at me, I can understand the anxiety, but they should follow the rules laid down and be transparent in the ways in which they use the money. Sir, there are two matters which I bring in which were not probably discussed so much in this house, sir, but related to the economy. There's a lot of discussion about household debt has increased, and what is the government doing about it? Your policies are not working. I want to highlight, sir, this is a very appropriate forum. I want the honorable members to know that one of the long-term impacts of COVID has affected the nature of work itself. People have either chosen to work from home or they don't want to work full-time. So I want to understand, I want to lay before this House, one, the factors of production are being reset. The industry is also looking at using robotics. Industry is also looking at Web3 driven production. And therefore, there is definitely a lot of churn. There was this feeling that compensation for employees is not going up. I'd like to highlight the national account statistics. Compensation of employees at current prices achieved a compound average growth rate of 11.1% during 14-15 to 22-23. So the first 10 years of Prime Minister Modi's rule, you had the wages going up 11.1%. And that is the data given. Now this is up to 22-23, which is inclusive of the COVID years as well. So post-COVID as well, increase has happened. However, I would also like to say that India's household debt is relatively low compared to the other emerging market economies as well as some developed countries. Sir, except for Brazil, where it is 35%, ours being higher than them at 39%. So household debt, loans and debt securities as a percentage of GDP for India is 39, whereas for Brazil it is 35. But all other countries which are comparable with us, say Malaysia 69%, Greece 42%, Canada 102%, Hong Kong 93%, Australia 110%, Israel 42%, France 63%. So household debt, if people are talking about it as though India's is high because the way in which we handled COVID, I'm sorry, they are wrong. Our household debt to GDP is far lower compared to our peer group and compared to some of the advanced economies. So the stock of financial liabilities of the household as a percentage of GDP has increased from 38% in March 2023 to 40.2% in March 2024, which is Reserve Bank of India numbers. Stock of financial assets of households as a percentage of GDP increased from 103.5% in March 23 to 108.3% in March 2024, given by the Reserve Bank of India. So I want to put before this honorable House, India and its asset and liability figures are very much better than very many of our comparable emerging market economies and even some of the developed economies. Outside again, sir, discussion on inequality prevailing in India. I just want to highlight the fact consumption inequality in rural and urban areas has declined significantly, as reflected by the significant improvement in the Gini coefficient, which is a key measure of income inequality, sir.
I'm stating the number for 2011-12, 22-23, and 23-24 in that order. For rural areas, sir, in 2011-12, it was 0.283, whereas today it is 0.237 only, which means the situation is improving, it's bettering rather than widening. The inequality is not widening. In urban areas, sir, it was 0.363 in 2011-12. In 22-23, it improved to 0.314, whereas now in 23-24, for which the data is last available, it is 0.284. Drastic change, improvement in the inequality index. So the inequality is not widening, it is only narrowing. So I want that to be laid in the House, sir. Approximately 25 crore people escaped multi-dimensional poverty in the last 9 years. This is due to the significant initiatives that the government has taken up, and this data has come from Niti Aayog. Sir, more important, one of the data which is important for talking about inequality in that debate, a paper which has been put out and which has been remarkably, I was surprised, written in the Economist magazine, says that inequality declined over the last decade. First time since 1990s in India, inequality has declined in the last decade. This has come out through that article in Economist, which draws on the paper written after extensive research by Dr. Surjit Balla and Karan Basin. It also says, the Economist also says, poverty has declined across all possible poverty lines. The Economist doesn't write about our government in favorable terms, but you have them saying this means it is in your face. You cannot deny it. Third, sir, extreme poverty has been eliminated. That's what it says. In India, under Prime Minister Modi, extreme poverty has been eliminated. Poverty at 15% for World Bank's higher poverty line of $3.2 PPP, down from 52% in 2011-12. So from 52% in 2011-12, it's come down to 15%. So on the inequality debate, I honorably request all the honorable members that the data that we're giving you here, please go through it. And then, of course, we have all ears to listen to your comments. But without the data, please let us have a considered debate. So there was also this noise about how India's Make in India is failing. In fact, Honorable Member Jairam Ramesh had tweeted about it. He's incidentally gone in. But I would like to respond to him. Make in India has not failed at all. On the contrary, it has given a great momentum for manufacturing in India. India's manufacturing sector has faced significant challenges due to externalities rather than due to anything to do with India. We have taken short-term and long-term measures. Honorable Prime Minister Modi has prioritized national interest in economic policy making. He has spoken about it even yesterday in a podcast, which is being received all over the world, for extensive and comprehensive viewpoint on how this government deals with very many issues. India's own domestic growth, India's cultural rootedness, India's foreign policy. He has given extensively his thoughts on all these subjects. So has he prioritized national interest in economic policy making also. In order to curb dumping of goods into this country, sir, several measures have been taken up. Anti-dumping duties have been imposed. Strengthening of our trade defense mechanism have been taken up. I want to highlight how Atmanirbhar Bharat and related policies have brought in defense sector today to become an exporter, net exporter. They are able to earn more than 30,000 crores. And as a result, you see what Make in India has achieved for defense production in this country. And I see enthusiastic, I'm sorry to say, Congress members taking vicarious pleasure in saying, oh, Make in India is dead, RIP Make in India.
Make in India made defense to become net exporter and earn 30,000 crores. Don't be too quick. And above all, Congress has had absolutely a hypocritical approach to Make in India. They had remained in power from 2004 till 2011 when they came up with the national manufacturing policy. 2014, of course, they went away. It took them 7 long years just to make a policy rather than implement it. Now, that national monetary manufacturing policy was there, which said 25% we'll achieve in manufacturing contribution to GDP. They said that. But before even moving that paper, people send them out. So when Prime Minister Modi in 2014 brings Make in India, the kind of statements which have been made by Congress members, one eminent member at that time said, the objective of Make in India plan to attract investment and technology and promotion of exports cannot be part of a partisan narrative. Do you want manufacturing to grow in this country or not? And having brought out this national manufacturing policy, they also said, being, I don't know, hypocritical or confused, they said when Make in India was announced, Make in India is just a revamped version of national manufacturing policy. And you claim that Make in India isn't working. You claim that Make in India isn't working. Doesn't that mean that national manufacturing policy itself was flawed? Are you suggesting that? It is your policy. But it remained a policy, it didn't find an action ground. And when we make it an actionable policy, we bring in Make in India, we want to bring in several steps towards improving it. They have this problem of either not knowing whether they should accept it, not knowing whether they should reject it, because it also has their own national manufacturing policy into it. They claim 25% of contribution, manufacturing will reach 25% to the GDP level. No, they didn't move an inch. Whereas Make in India today is showing how, for example, in the defense industry, we are able to export. And also, I would want to highlight, sir, the national manufacturing policy guided them to set up national investment and manufacturing zones in several parts of the country. They're called NIMS in the short. NIMS also remained where they were. They were in far-flung areas, no railway station next to it, no port. They were on patronage basis. And not until when Prime Minister Modi brings PM Gati Shakti, when all this gets integrated into that, when a scheme of things are understood as to does it have a port next to it, does it have a railway station next to it, is a coal mining area or a raw material supply area next to it, bring all that together and do something to improve logistics there. It is only after that PM Gati Shakti has NIMS found the light of the day. Otherwise, they were desolate and isolated places all over the country with no semblance of any making in India. Of course, manufacturing was just a policy for them. There was no more implementation on it. Similarly, sir, they also had a lot of quick fix FTAs, which killed actually many of our manufacturing. Today, Commerce Minister is struggling to have those FTAs hurriedly done during their period, reviewed, because countries have realized it was so loosely worded, it had so many things which was ready giveaways for our partner countries, which is good. You want to give them market access for many of the things. But we didn't get equally anything for ourselves. So the Commerce Ministry today is sitting and asking those countries to review the FTA signed during UPA policy time. So that hurried rushing into FTA, hurried bringing into some kind of a context, manufacturing policy, has not delivered. On the contrary, has hurt us. Believe in Make in India. It is giving you results. I've already quoted how defense exports are flourishing under Make in India. Of course, everybody called during UPA time their growth as jobless growth, which is right. 69, the report of the Standing Committee on Finance itself said that. Sir, but
I would like to highlight the fact that Make in India has actually given us good result. We took step after step after step to strengthen the manufacturing in this country. Corporate tax rate was brought down to 15% for new capacities in February 2019. Production-linked incentives have been given for critical key starting materials, KPI, drug intermediaries, and active pharmaceutical ingredient manufacturers. Manufacturing of medical devices have happened. Automobiles and auto components get PLI. Pharmaceutical drugs get PLI. Specialty steel gets PLI. Telecom network products, electronic technology products, white goods, ACs and LEDs, food products, textile products, MMF segment of technical textiles, high efficiency solar PV modules, advanced chemistry cells, and drones and drone components all get PLI. I just want to highlight one data point, sir. I'm not just listing PLIs. Some of the most notable achievements of PLI schemes are attracted investments exceeding 1.5 lakh crores. Because of PLI, 1.5 lakh crores have come into this country. Employment generation has happened to the extent of 9.5 lakh people. It has also led to exports surpassing 4 lakh crores. Electronics, pharmaceutical, and food processing sector are also contributing to the export. 99.2% of mobile phones now sold in the country are made in India. 325 to 330 million mobile phones are being manufactured in India every year. Mobile phone exports reached $15.6 billion in 23-24 from 0.2 billion in 2014-15. Significant reduction in the import of raw materials in the pharma sector, thanks to PLI. Considerable improvement in domestic sourcing of raw materials in food processing, again because of PLI. Telecom equipment manufacturing surpassed 50,000 crores in sales under the production-linked incentive scheme. The automobile sector also got a considerable boost, with the PLI directly generating sales worth 2.25 lakh crores and creating 1.5 lakh jobs in that sector. So I would request our Congress members, when they talk about Make in India, thinking that they can sing a requiem, I'm sorry, no, it is live, kicking, flourishing, and making our economy absolutely stronger for it. So last one point I would like to highlight. As a result of this concerted effort, sir, our domestic defense production, about which I spoke, reached 1.27 lakh crores, marking a record high with an impressive increase approximately of 174% from 46,429 crores, which it was in 2014-15. So defense is a classic example. In that, I will just put one example forward, sir. You are from Bihar. It's a very good example to show how every state of India is contributing for Make in India. Made in Bihar boots are now part of the Russian army's equipment. So Bihar is contributing for manufacturing, and boots manufactured there are going for our Russian army as well. So number of companies have also increased, which have registered. 13% increased in the number of establishments has been witnessed. Employment marked over 10% rise. Manufacturing sector reported the highest wage growth of 16%. Sir, without elaborating more, I know honorable members are waiting for a long time. Lunch hour, you may run the house even during lunch, but I don't want to take more of your time. But I thank every one of the members who've spoken on the 4 bills which are before this house for consideration and returning to the Lok Sabha. Thank you. Members, please. I shall now put the motion regarding consideration of the Appropriation Bill 2025 to vote. Please, it's over. Yes, tell me. So my point of order is under Rule 238A. Honorable Finance Minister
in an attempt to justify the stand taken by her government. I can understand that. Made a lot of allegations, unwantedly dragged. Please many be states into brief and quote the controversy. rules. I'm Yes. coming to the point, Be sir. brief. Yes. While talking about the honorable member, Mr. Vikas Ranjan Bhattacharya, who is a senior member, I'm telling you, please be patient. Her reference was like this: whether he doubts his CPM membership. There was a passing comment by her. So that is quite defamatory, and she should be. No. I'm kindly go through the verbatim documents. That reference could have been avoided. The reference was whether he himself doubts his CPM membership. Thank you. It's no pointer. Please. I shall now put the motion regarding consideration of the Appropriation Bill 2025 to vote. The question is that Appropriation Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the appropriation number 2 bill 2025 to vote. The question is that the appropriation number 2 bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up. Please keep quiet. Shanti rakhe, please. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025 to vote. The question is that the Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 4 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned.
I shall now put the motion regarding consideration of the Manipur Appropriation Bill 2025 to vote. The question is that the Manipur Appropriation Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharamanji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Now discussion on the working of the Ministry of Health and Family Welfare. Shri Trichu Shivaji to raise the discussion on the working of the Ministry of Health and Family Welfare. माननीय मंत्री जी ने चेयर से परमिशन लेकर गए हैं, अभी तुरंत आएंगे. His two state ministers are here. He has taken permission from the chair to go on. Thank you, Mr. Deputy Chairman, sir. Please. Yes, I have already informed. Please. Please, आप अपने सीट पर बैठे. We are resuming discussion. Please take your seats. माननीय त्रिचू. Thank you, Deputy Chairman, sir. So I'm very thankful that the DMK party has been asked to initiate the discussion on the working of the Ministry on Health. Sir, though health is not very explicitly in our constitution, but Article 21, which is fundamental right. Please take your seats. Which is a fundamental right for personal life and liberty, was interpreted by the Supreme Court that it involves health also. So health becomes a fundamental right. And the health is a state subject. And as per the concurrent list, there are certain responsibilities with the union government also about the medical education, controlling the population and family planning and all other things. Sir, in this situation, the union government has a very important role to take care of the states also by way of funding and financing them. But in India, though health is a right, fundamental right, as per the Supreme Court's verdict, it is a privilege only to meant for those depending upon the geography and wealth. A quality health care to millions of people are not able to be accessed by way of need, only by way of where they live and how much they are affordable to pay. A government that seeks to this reality must invest in public health in both vision and commitment. But what actually the budget allocation for health in the union government, sir, the present government, it is only it has declined. It was 2.5% in 2017-18. Instead of going up, it has come down and now it is only 1.9%. How it is possible a country which has a population of 42 crore of people, in which 30,000 crore people are below poverty, they are poor people, and around 40 crore people are middle class. So considering those people, the government should have allocated more funds to the health, but it is not so.
compared to other countries, sir, the United States has allocated 9.7% of its GDP to public health. China spends 2.9%, and even Sri Lanka surpasses at 1.9%, but for India is only 1.4%. This is very sad. Even a small country, Sri Lanka, has surpassed us. So what actually is in the mind when you are to take care of the people of their health? The budget allocation, when it is so less, and the saddest part is the amount allocated for research is only 3,900 crore. What the word who suggests or the standard which has been deputed is totally does not match with what we are handling. Sir, though the union government plays a significant role, it doesn't take all these things into consideration. Just 4.4% of the ministry's budget is spent towards health research. That is, you know how much, sir? 0.02% of our GDP. Actually, the WHO has suggested it should be at least 1%. Even the Standing Committee on Family and Health and Family Welfare has recommended that it should be 0.1% at least. But actually it is 0.02, whereas the other countries, United Kingdom spends 0.65% and United States is at 0.44%. Sir, this standing committee's recommendations are not taken into consideration. Research is very important as far as health is concerned. So the budget allocation is very much less. It's only less than 2%. And the research is much lesser than the GDP, that's 0.02%. Take, for example, the state governments. The Tamil Nadu state government has allocated 4.9% of its total expenditure towards healthcare. So it must be taken as a cue. The government health expenditure as a share of GDP in other countries. I'm very sorry that when I'm speaking in the parliament, it will go across the world. I'm very sorry to depict my nation in such a sad situation, but the government has to take the responsibility. It's our responsibility to point out, compared to other countries. See, even Thailand is 3.6%, and Brazil is 4.3%. South Korea is 5.4%. But in our country, the government's expenditure towards health is so sad that we stand at only 1.4%. So they have to take into consideration that it is not a thing that should be overlooked just like that and say these things and impose upon. So the medical education is vested with the union government instead of controlling the population. See, for example, we are raising the issue of delimitation, that we may have a very bad consequence if the delimitation is done on the basis of population. Why, sir? In 1976, an amendment was brought in the constitution that birth control will be implemented across the country uniformly, and then only delimitation can be done, and it was deferred to 25 years after. And even in 2001, when Vajpayee was the prime minister, he also deferred it to 25 years since the population has not come to a level. The same situation prevails now also. In 2001, the population was 100 crore, and in 2011, it became 120 crore. And now it is 142, whereas the southern states have controlled the population, whereas the northern states have gone. So the government should have concentrated that uniformly the population should have been controlled and family planning should also have been implemented. But not so. Whereas it comes into the medical education, they bring an examination NEET, which is common to all across the country. Sir, one size fits all will not suit to education. Every state has, see, Tamil Nadu has got 79 medical colleges, the highest in the state, in the country. We give a very good education, everyone is appreciating, that all apart. You introduce NEET, which doesn't suit to one part of the country. See, a student who studies up to 12th standard, night and day, and scores very high marks, it is thrown to dustbin, and they conduct an examination for 3 hours, which is maybe totally new, but now they are being compelled to go through that examination or a crash course.
spending a lot of money going to private institutions, and then only they can appear in NEET and pass. So this NEET examination, it must suit to the states. And so with the par with the state government, we have passed a legislation in the state government. Even after the consent of the governor, it is lying with the union government. You have to take into consideration. A state has got its own right. Health is a right of the state as per constitution. But since the medical education comes under the concurrent list with the union government, instead of concentrating on controlling the population and implementing family control, considering the future of this nation, you are bringing in the education and compelling all other states to go and accept only NEET examination, which has bothered the students so much across. Sir, these are all not just, and now that the finance minister has announced the budget, 10,000 medical seats will be increased. That will be done only by the state governments. Only the aims is with the union government. All the state governments have to increase the medical seats without giving them enough supply, without giving them any facility which they need. How can you expect to increase? So I have to run fast. And sir, the WHO standard, it says that it's very, very important. The patient doctor population, it must be 1:1,000. That is what the WHO recommends. Let me tell what is the situation in India. It is 1:1,272 average. But state-wise, I'll go. Uttar Pradesh is 3,767 per doctor. Jharkhand is 8,180 per doctor. Haryana 6,037. Chhattisgarh 4,338. And I will not rush up. I'll rush up with everything considering the time. Kerala is 535 per doctor. And Tamil Nadu stands number 1, 253 per doctor. Sir, why? How it is possible? See, when one part of the country, when 4,000 persons are depending upon one doctor, you are not increasing the health workers. They are not being taken care of as they should have been. But actually, it is not so. And another very important thing is the non-communicable diseases. Because of the non-communicable diseases, what is happening is non-communicable diseases are like diabetes, cancer, and pulmonary diseases, and all other things. Because of that, probability that a 30-year-old dies before the age of 70 due to this NCD, that is non-communicable diseases. In Japan, it's only 8%. Out of the total deaths, the deaths because of NCD is 8%. UK is 11%. USA 14%. Brazil 15%. China 16%. Bangladesh 18%. Vietnam 20%. Malaysia 22%. India 24%. Again, I feel sad and sorry to say all these things. The non-communicable diseases are not brought under control. Whereas Tamil Nadu, what it has done is, I will rush up with bullet points. Tamil Nadu diabetic food care policy, because it is one of the non-communicable diseases. And mental care wellness. In India, it is 0.07 per 1 lakh population, the psychiatrists are there. They are not taken care of. It's a very important. Mental health and wellness is very much important. Whereas in Tamil Nadu, we have got Natpudan Ungalodu Mananala Sevai. So we are taking care of those who are mentally ill. And Punnagai scheme, that is about smiling. Punnagai means smiling. Aims to ensure the dental health of students by providing dental treatment and creating awareness about one disease. And anemic. Anemic is spreading to the alarming level in India with pregnant women and children. So what has been done towards that? The Tamil Nadu government across India, it started from Tamil Nadu and now implemented all over the nation the midday meal scheme. But only in Tamil Nadu, we give breakfast also to students of primary school because they should not suffer from anemia. And this is being followed by other states like Kerala also. Yes, sir.
Kerala also following. So southern states always stand first. That's why we are victimized. That's why we are penalized. For everything, we are not taken care of. We are not being ignored. We are being ignored for the way we are performing very well. We have never heard that an outstanding student is punished anywhere, sir, only in our country. This government is with a stepmotherly attitude and partiality looking into it. Strong public health infrastructure we have. We have got a strong focus on preventive care and community health services. Many PHCs across the country, what the union government should do is it should focus on those states where the things are getting worse. Whereas we are doing very well. The PHCs are more in number. The community medical center, health centers are more in number. The secondary, tertiary hospitals are providing the best health. We go to the people where they live and give service. So the states are doing their responsibility and performing very well, whereas the union government is not focusing on the states that are not performing well, rather they try to punish us. That's what I say. Whatever is responsible with the union government, you say that first you increase the budget. With that budget allocation, you have to do the needful. But that is not done so. No research. Without research, medical advancement cannot be. You cannot be depending upon other countries for technology development. Sir, I got very important concerns because I think you have to give me a minute or two for more. The health insurance. You have got one scheme, what is that, Pradhan Mantri Ayushman, and the state government has a different, the Chief Minister's health scheme, which gives 5 lakhs to people. That's all different. But the saddest part is the minister should take it into consideration. Excuse me, only the MOs is here, don't disturb them. What is take care? Please, ma'am. When we are talking much about the insurances, the term insurance, health insurance, and life insurance premiums are taxed at a steep 18% GST, the highest. Treating them as luxuries rather than necessities. How sad it is. Health insurance premium is charged at 18% GST. And out-of-pocket expenditure. The middle class people are too rich to get any aid from the government and too poor to spell out from their own pocket. And another thing is toxic air. India has some of the world's highest rates of lung disease. And aging population, the TFR, and it is increasing alarmingly, enormously this side, but in southern states, it is under control, the total fertility rate. And very importantly, I would urge the health minister who is here to take into consideration 2 things. One is this insurance premium should not be charged at 18% GST. Another is one paraquat poisoning. It's available very freely. If anyone consumes that, even medical intervention cannot save them. I think the ministers are very much aware of it. Already the European Union, China and UK have banned that. Only India is having that. The poor people who get frustrated in life, who cannot resort to anything when they try to commit suicide, at least to frighten their family or anyone else, they resort to something. So they get the rat poison, which is very easily available, and this paraquat poison, which is very much easily available, and they are not at all able to be rescued. They get worse. They cannot be saved on one hand. They deteriorate in the worst manner that no patient should suffer. And so I urge the ministry to ban this paraquat poisoning and rat poisoning in the concern of the people. The common man, the poor man in this country, whoever is attempting to commit suicide, they are very easy. It's a herbicide. It's a herbicide and very easily available. And this is not just a suggestion from the ruling party side. I'm speaking on behalf of the people who are suffering at the hospitals because of committing suicide. And the most important is the AIIMS at Madurai in Tamil Nadu. It was announced in 2018 with a proposed completion by 2022. The project remains in limbo
with only excuses and shifting deadlines. Whereas at the same time, some aims have been announced to various other states and all have been completed, all have come to functional. That's why I say, don't look with a partisan eye the states. You have to look all the states as one. I have repeatedly told, we consider that we are a part of India and the union government has to consider the state of Tamil Nadu as a part of India. And so also, healthcare is not a very easy thing. Many are suffering, not able to get a quality access to quality care because of the hospitals. In Tamil Nadu, 50% is government hospitals, 48 is private, whereas in other parts like Uttar Pradesh and all, only 26% are government hospitals. So the government hospitals are not so easy. Anyone who has got an opportunity, please come and see the hospitals, government hospitals in Tamil Nadu, the best ever. Nobody will go to a private hospital if they enter into the government hospital. So also all the schemes we are implementing before, prevention is better than cure. That is the policy what we are implementing. Kindly take Tamil Nadu as a cue and implement it across the nation. And I urge the ministry to increase the budget and especially the GST must be reduced. Thank you very much. Thank you very much. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Bhagavat Karad. माननीय उपमहापौर महोदया, उप सभापति महोदया, मैं आपका और हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे हेल्थ इस सब्जेक्ट के बोलने के लिए वक्त दिया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, सर्वे संतु निरामय। इसका मतलब ऐसा होता है कि वी विल बी ऑल फ्री फ्रॉम द डिसीजेस। और इंग्लिश में एक कहावत है, जैसे मे ऑल द फ्री फ्रॉम द डिसीजेस, दैट इज इफ यू आर एबिलिटी टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, लव योर हेल्थ, लव योर कैरेक्टर एंड लव योर नेशन। मैं इस बजट के ऊपर बात करते समय बताना चाहता हूं कि अभी तक 1947 से अभी तक 43 हेल्थ मिनिस्टर्स हो चुके हैं और इस हेल्थ मिनिस्टर के हेल्थ मिनिस्टर ने अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेल्थ सुविधा दिया है, माननीय हेल्थ मिनिस्टर के गाइडेंस में जो कुछ काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छी लंबी छलांग लगाया है। अगर हम एवरेज एज ऑफ इंडियंस का अगर देखें तो 1951 में एवरेज एज ऑफ इंडियन वाज 37.2 इयर्स। 2006-14 में इंडियन का एज बढ़कर 67 इयर्स हुआ था और 2014 तक अभी का इंडियन का एवरेज एज 70.7 इयर्स हो चुका है। अगर हम ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो 71 इयर्स हुआ है। हम अबाउट ग्लोबल एक्सपेक्टेंसी के पास जा चुके हैं। अगर हमारे पेरीफेरी के देश देखें तो पाकिस्तान की एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ इज 66.43 इयर्स, नेपाल की कम है, श्रीलंका की कम है। दूसरा इंडिकेशन जो महत्वपूर्ण रहता है हेल्थ में तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट रहता है, यानी आफ्टर डिलीवरी मदर का कुछ जो डेथ होता है उसके ऊपर काउंट किया जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 1997 में 398 था, 398। अगर हम ग्लोबल मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो 223 पर लाख लाइव बर्थ है। लेकिन मैं आपको सदन में बताना चाहता हूं कि इंडिया का मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ है, यानी 83% रिडक्शन ये कुछ सालों में हो चुका है। थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर हेल्थ इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैं ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में न करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जा रहा है। 2014 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 28 पर 1000 लाइव बर्थ, 2022 में 27.5 लाइव बर्थ और 2024-25 में 25%। एवरी ईयर इट इज डिक्रीजिंग। अगर हम बात करें
तो जैसा हमारे तिरुचि शिवाजी ने बताया कि डॉक्टर का रेशो क्या है। डॉक्टर का रेशो अगर हम देखें तो हमारे ओवरऑल कंट्री में अगर हम डॉक्टर का रेशो देखें तो इट इज 1.2 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन एंड विकसित देशों में ये रेशो 2.5 to 4.5 है। हम जरूर इसमें कम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल एजुकेशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जैसे मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग हो, नर्सिंग कॉलेज का स्टार्टिंग हो और पैरामेडिकल कॉलेजेस का भी स्टार्टिंग हो, बहुत सारा हो चुका है। कोई एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज अगर हम देखें 2014 में 383 थे, 2025 में 780 हो गए। एमबीबीएस सीट 2014 में 54,348 थे, अभी 2025 में 1,18,190 हुए। पीजी सीट भी अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स तो 2014 में 31,185 थे और अभी 2025 में 72,727 हो चुके हैं। 133% राइज ये पीजी सीट्स में भी हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं, अगर इस बजट में, इस साल के बजट में, हेल्थ बजट में जो टोटल इंक्रीमेंट ये जो हुआ है, इंक्रीज जो हुआ है, वो भी मैं अगर the share of the health budget increased marginally from 1.9% to 1.97%. This was the budget. Total budget was 50.65 lakh, out of which the health budget is 99,858 crores, and this budget in 2015 में 34,286 करोड़ था, इसमें भी 191% राइज हो चुका है। इस बजट में हेल्थ के लिए बहुत सारे सुविधा दिया है। जैसा मैं बताना चाहता हूं, ग्रीग वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत की योजना है। जीवन रक्षक दवा जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बॉर्डर कस्टम्स ड्यूटी कम किया है। उसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर के लिए 4,200 करोड़ का राशि रखा है। वैसा ही जैसा पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम के माध्यम से 2,445 करोड़ रखा है, जिसके माध्यम से हम फार्मा मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आयुष वीजा यानी कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए अगर वीजा करना है तो उसके में भी सुविधा इसका संविधान रखा है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज और बेड्स का अगर हम बात करें तो टोटल भारत देश में अराउंड 70,000 हॉस्पिटल्स है। इसमें प्राइवेट अगर हॉस्पिटल देखें तो 44,000 प्राइवेट हॉस्पिटल है और 44,000 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल 26,000 है। अगर WHO के हिसाब से बेड रेशो अगर हम देखें तो 1.3 पर 1000 पॉपुलेशन अभी हमारा भारत का रेशो है और WHO का रिकमेंडेशन है 3 होना है। डिफिसिट 1.7 पर 1000 पॉपुलेशन है। ये हम बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हेल्थ सर्विस अगर बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल एलिमेंट टू एनहांस हेल्थी केयर डिलीवरी का भी सिस्टम किया है। जैसा है इंडिया एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए टेलीमेडिसिन हो, टेली कंसल्टिंग हो, टेली डायग्नोसिस हो और मेडिकल मोबाइल हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ सुविधा भी दे चुके हैं। इन शॉर्ट जो अगर मैं बताना चाहता हूं, प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी हेल्थ केयर हो, टर्शियरी हेल्थ केयर हो, अलग अलग सेक्टर में काम हो रहा है। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सब सेंटर्स हो प्राइमरी जिसमें 5,000 सेंटर्स है, 3,000 लोगों के लिए एक सेंटर रहता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 30,000 है, जिसमें 20,000 लोगों के लिए एक सेंटर रहता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अगर हम देखें दैट कवर्स अराउंड 1,20,000 लोगों के लिए रहता है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तालुका हॉस्पिटल्स, इसमें भी राइज हो रहा है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो, इनमें बढ़ावा दिख रहा है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, रिमोट प्लेसेस पे डॉक्टर का अवेलेबिलिटी होना, इसीलिए स्टेट के माध्यम से
डॉक्टर्स को भी निगोशिएशन करके ज्यादा पेमेंट यानी यू कोट वी पे इस स्कीम से माध्यम से सैलरी दिया जाता है। और अगर डॉक्टर ने प्राइवेट यानी रिमोट एरिया में अगर काम किया तो उनको पीजी को एडमिशन भी दिया जाता है। ऐसे अलग अलग स्कीम्स डॉक्टर्स को दिया जाता है जिसके माध्यम से काम हो रहा है। सब सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कॉमन हेल्थ सेंटर हो, डिविजनल हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, यहाँ अलग अलग 14 से लेके 318 तक अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं और पेशेंट की केयर जाती है। अगर हम बीमारी की बात करें तो कैंसर वन ऑफ द लार्जेस्ट किलिंग डिसीज है। इसमें मैं बताना चाहता हूं, इस बीमारी को कम करने के लिए स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर, जैसा ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनका स्क्रीनिंग के अलग अलग कैंप के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन से माध्यम से काम हो रहा है। और जैसे ही सवेरे माननीय आरोग्य मंत्री जी ने बताया कि कैंसर का स्क्रीनिंग करने के बाद 1 लाख कुछ ऑड अमाउंट लोगों का डायग्नोसिस हो गया और उनको ट्रीटमेंट भी हो रही है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से लोगों को फायदा मिल रहा है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में पीएम आयुष्मान भारत स्कीम हो, पीएम जन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, पीएम आयुष्मान भारत ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम जो 25 सितंबर 2018 को शुरुआत हो गई। उसी दिन दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती, उसी दिन एक स्कीम चालू किया और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा हो रही थी। उसी में इस स्कीम के बारे में चर्चा हो गई और सभी देश के 80 देश के लोगों ने उसका अच्छा बताया। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। टोटल अगर हम देखें तो 55 करोड़ को लोगों को इसका फायदा मिलता है। उतना ही नहीं तो ये स्कीम ट्रांसफरेबल है। समझो एक पेशेंट अगर कोई एक आधे स्टेट में रहता है, दूसरे स्टेट में गया तो ये स्कीम के माध्यम से उसका फायदा ले सकते हैं। ये स्कीम के लिए 24-25 के बजट में 6,606 करोड़ रखे थे और इस बजट में 25-26 के बजट में 9,406 करोड़ रखे हैं। इसमें अभी तक 29,000 हॉस्पिटल्स का एनरोलमेंट हो चुका है। इस स्कीम इज अनफॉर्चुनेटली इस स्कीम जो है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा और दिल्ली इस सरकार ने नहीं चालू की थी। अभी उड़ीसा और दिल्ली में हमारी सरकार है तो मुझे लगता है ये स्कीम जल्दी ही चालू हो जाएंगी और गरीब लोगों को फायदा हो सकता है। इसके साथ बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं है। इसी के साथ हेल्थ सेक्टर में वैक्सीनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैक्सीनेशन में मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वैक्सीन ऑन दिस अर्थ वाज innovated by the Edward Jenner and first vaccine in India was given in 1802 to a 3 years old girl who was suffering from smallpox. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आते ही तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा साहब ने इंद्रधनुष एक स्कीम चालू किया था। इंद्रधनुष के स्कीम के माध्यम से 7 अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की और ये वैक्सीनेशन के माध्यम से 2.53 करोड़ चिल्ड्रन और 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दिया और अलग अलग डिसीज के माध्यम से उनको प्रोटेक्शन मिला है। मैं और एक सदन को बताना चाहता हूं, इस गवर्नमेंट के माध्यम से जन औषधि परियोजना की शुरुआत किया है। जन औषधि परियोजना के माध्यम से 25,000 करोड़ जन औषधि केंद्र शुरुआत किया है, जिसके माध्यम से जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन लोगों को, गरीब लोगों को मिलता है। इस मेडिसिन की कीमत 50% से 80% से कम रहती है और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2047 मेडिसिन आर अवेलेबल इन जन आरोग्य केंद्र और 300 सर्जिकल आइटम्स आर अवेलेबल ऑन दिस मेडिकल सेंटर्स। इतना ही नहीं तो अभी तक हम अगर 6 साल की बात करें तो 30,000 करोड़ का फायदा गरीब लोगों का इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से हो गया है।
COVID-19 was a very bad situation all over the country. और उसी वक्त मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से 2 वैक्सीन इनोवेट किए। इनोवेट करने के बाद 220 डोसेस इंडियन को मिले और दिस वाज द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन गिवन बाय मोदी जी गवर्नमेंट टू एवरीबडी। अब उतना ही नहीं तो कुछ 70 to 80 कंट्रीज को हम वैक्सीन भी सप्लाई कर सके। ऐसा हर क्षेत्र में काम हो रहा है। वायरल इंस्टीट्यूशन भारत देश में अभी तक 4 वायरल इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं। इन शॉर्ट मैं इतना ही बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तो आयुष्मान बढ़ चुका है, वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, पेंडेमिक में काम हो रहा है, प्रिवेंटिव डिसीजेस में काम हो रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स सबकी बढ़ रहा है, तो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है। अंत में मैं मेरा वक्तव्य एक हिंदी कविता से समाप्त करता हूं। इस कविता के माध्यम से मैं कवि ने स्वास्थ्य के दुनिया में को सबसे बड़ा धन बताया है। यह कविता सरल और स्पष्ट शब्दों में समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, इससे बढ़कर कुछ नहीं, रोग मुक्त रहना सच्चा सुख, यह सच है इसमें शक नहीं। धन दौलत का मतलब जब शरीर को रोग से भरा, सुख शांति के खोज में हम, स्वास्थ्य ही है सच्चा धारा। तो इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणु को विराम देता हूं और हमारे आरोग्य मंत्री का अभिनंदन करते हुए खत्म करता हूं। धन्यवाद। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदया, सभापति कराड़ साहब के बोलने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी पार्टी की ओर से आपने बोलने का मौका दिया। संयोग की बात है कि स्वास्थ्य विभाग से हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन 2000 में दोनों राज्य मंत्री हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री बोला, अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूं, तो आगे तो सुनिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं नीरज जी, कि मैं 2000 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था और नड्डा साहब भी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। अब लगता है सिंपल हो गया होगा। और धन्यवाद। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। महोदय, इस सरकार के कार्यकाल के लगभग 11 साल पूरा होने को है। मैं बहुत ज्यादा आपके आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इस सरकार का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसको दर्शाने के लिए कुछ ब्रॉड इंडिकेटर की बात करूंगा। साल 2017 में यह सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लेकर के आई थी और उसमें कहा गया था कि साल 2025 तक हेल्थ सेक्टर का जीडीपी का 2.5% खर्च किया जाएगा। हालांकि WHO के अनुसार हेल्थ पर जीडीपी का कम से कम 5% खर्च होना चाहिए। लेकिन इस साल के बजट को भी देखें तो हेल्थ पर इस सरकार का टोटल खर्च है जीडीपी का 1.28%। तो यह है आपकी पहली उपलब्धि। दूसरा एक आंकड़ा जो बहुत चौंकाने वाला है, अगर हम 2025 को 2010 से कंपेयर करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली मौतों की संख्या पिछले 15 सालों में भारत में लगभग 12% तक बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तेजी से हमारे देश में लोग जीवन शैली आधारित रोगों का शिकार हो रहे हैं, वह दुनिया में सबसे ज्यादा है। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो राष्ट्रीय जो टीबी है, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य आपने रखा था कि 2025 तक देश में टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा, इस टीबी से को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी दुनिया के 25% टीबी रोगी भारत में है।
साल 2023 में कुल 25,37,000 तपेदिक के मामले सामने आए थे, जो 2022 की तुलना में 1,15,000 से भी ज्यादा थे। तपेदिक से होने वाली मौतों के मामले में भी भारत में स्थिति दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा खराब है। इसके अलावा जिस तरह से हर साल बरसात के बाद पूरे देश में डेंगू का आतंक फैल रहा है, यह भी पिछले 10-12 साल में देखने में आया है। और चिंता की बात यह है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर कोई बृहद कार्यक्रम मेरी जानकारी में नहीं है। रूटीन तौर पर नेशनल हेल्थ मिशन में इसका जिक्र जरूर आता है। कुपोषण की बात करें महोदय, तो कुछ मामलों में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है। 17 जुलाई 2023 को इंडिया टुडे ने एक न्यूज आइटम पब्लिश किया था, जिसमें कहा गया था कि यूनिसेफ और WHO की एक ज्वाइंट स्टडी के अनुसार भारत में 4 में से 3 व्यक्ति को हेल्दी फूड मैसर नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब एक साधारण आदमी रोजमर्रा के खर्चे के लिए पूरा संघर्ष कर रहा है, तो वह हेल्दी फूड की बात कहां से सोच पाएगा। फिर चेयर पर आज आप बैठी हैं, महिलाओं में एनीमिया अभी भी एक भारी समस्या बनी हुई है और मेरी जानकारी के अनुसार 45% महिलाएं आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की दिन रात आप लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी जमीनी हकीकत क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने में आयुष्मान कार्ड धारक को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल लाभार्थी को परेशान करता है तो कहीं डाटा मिसमैच होता है। हम लोगों के सामने तो लगातार ऐसे मामले आते ही रहते हैं। पता नहीं मंत्री जी और सरकार की जानकारी में यह सब बात आती है कि नहीं। इसी तरह जन औषधि केंद्र में जो जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। जेनेरिक दवाइयां खाते जाइए और बीमारी वैसे के वैसे बनी रहती है। पीछे इस प्रकार की भी कई रिपोर्ट आई है कि जन औषधि केंद्रों में सही तरीके से दवाओं का भंडारण नहीं होता है और कई बार तो एक्सपायरी दवाइयां भी दे दी जाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो पूरा कंसेप्ट है, हालांकि यह यूपीए के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसमें सारा जोर इस बात पर है कि दवाई की क्वालिटी चाहे जो भी हो, उसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। मेरे हिसाब से तो हेल्थ का जो बेसिक कंसेप्ट है वही इसके खिलाफ है। हेल्थ सेक्टर में एक और चीज है जो आज के समय में बहुत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। मैं मेंटल हेल्थ इशू की बात कर रहा हूँ। WHO की इस रिपोर्ट के बारे में जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार भारत में लगभग 14% लोग मानसिक समस्याओं के शिकार हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 0.3 है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मेंटल हेल्थ पर एक नेशनल प्रोग्राम बनाने के बारे में विचार किया जाए और इसको उचित प्रायोरिटी दी जाए। अब हम थोड़ा सा, चूंकि बिहार से आते हैं, तो बिहार की बात करना चाहेंगे। यह तो सबको जानकारी है कि हेल्थ सेक्टर में बिहार की दुर्दशा है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक आंकड़े देकर अलग अलग सेंट्रल स्कीम में बिहार का क्या हाल है, इसको सदन से अवगत कराना चाहता हूं। कैग ने नवंबर 2024 में बिहार के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट दी है, मैं केवल उसी के आधार पर अपनी बात यहां रखूंगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में हेल्थ सेक्टर में कुल मिलाकर 49% पद खाली पड़े हुए हैं, मतलब आधा पद खाली है। राज्य में एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है 1,25,000 और डॉक्टर की उपलब्धता केवल 58,000 है, मतलब आधे से भी कम है। इस तरह से नर्सों की भी घोर कमी है। अधिकांश सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि अस्पतालों के पास जो एम्बुलेंस है उनमें इक्विपमेंट नहीं है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है
और जहां ब्लड स्टोरेज यूनिट है भी वहां पर उसके लिए मैन पावर नहीं है। जिला अस्पतालों में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। क्योंकि अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए जो वेंटिलेटर हैं भी वह ऐसे ही खराब इधर उधर पड़ा हुआ है। यह सब बात मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह सारी चीज कैग की रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड्स की बात करें तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 25 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज 141 है। हर ब्लॉक में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भवन बन के खड़ा है, लेकिन कहीं डॉक्टर या स्टाफ का अता पता नहीं है। मैंने खुद कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जायजा लिया तो पता चला कि डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो कोई आएगा कहां से। विभाग की अक्षमता का हाल ये है कि हेल्थ बजट का 30% से ज्यादा खर्च ही नहीं हो पा रहा है। बिहार में मातृ मृत्यु दर जो MMR है और शिशु मृत्यु दर IMR राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2023 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 174 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 100 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर भी 34 प्रति 1000 जन्म के करीब है। यह दर्शाता है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी और अस्पतालों की अपर्याप्तता इन समस्याओं का मुख्य कारण है। बिहार में टीकाकरण दर 75% से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसी तरह औसत आयु के मामले में भी बिहार नेशनल एवरेज से पीछे है। और इम्यूनाइजेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ अगर सही में कोई आपकी तरफ से स्टडी करे तो रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनका भी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक जो प्रधानमंत्री बंधन योजना है उसमें बिहार में केवल 25% आवेदकों को ही उसका लाभ मिलता है। बाकी 75% एप्लीकेशन किसी न किसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस ग्राउंड का कोई कारण नहीं बताया जाता है। अब जाहिर है कि बिहार में जानकारी का अभाव तो है, लोग उतना पूछताछ भी नहीं करते हैं। सत्ता पक्ष के हमारे मित्र हमेशा आंकड़ों की बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप लोग यहाँ भूल जाते हैं कि हर आंकड़े का कोई न कोई संदर्भ होता है। अब हेल्थ सेक्टर में मैं आपको एक संदर्भ देना चाहता हूँ। जब यूपीए सरकार 2004 में पावर में आई, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो हेल्थ पर सरकार का टोटल खर्च था 7,500 करोड़ रुपए। हम लोग 10 साल में उसको लगभग 4 गुना बढ़ाकर 27,500 करोड़ रुपए तक ले गए। और परसेंटेज वाइज आपके 11 साल की हमारे 10 साल से तुलना करें तो आपका हेल्थ बजट का इंक्रीज है लगभग 350%, जबकि हमारे 10 साल में इंक्रीज था 400%। हेल्थ सेक्टर में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश को पोलियो मुक्त बनाना। एक समय भारत दुनिया में पोलियो का एपिसेंटर हुआ करता था, लेकिन यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को सफलतापूर्वक पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरा किया था। यूपीए के टाइम का कुछ और आंकड़ा देख लीजिए। 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी तो MMR था 301 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ, और जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी तो हम लोग MMR को 135 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ तक नीचे ले आए थे। यानी 10 साल में MMR में ऐतिहासिक 55% की कमी आई थी, जो आपके 10 साल के कार्यकाल की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था। इस तरह IMR में हमारे कार्यकाल में जितनी कमी आई वह भी आपकी तुलना में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने की उपलब्धियां उसमें अभूतपूर्व थी। उसके पीछे मूल कारण था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमारे नेतृत्व ने 2005 में एक दूरदर्शी कदम उठाया था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में वर्ल्ड बैंक और WHO ने कहा था कि ये भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने वाला ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, और आज भी आपके समस्त रूरल हेल्थ प्रोग्राम का फ्रेमवर्क यही NRHM है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि
काम तब ज्यादा हो रहा था या अब ज्यादा हो रहा है? एक और मुद्दा है मेडिकल एजुकेशन का। प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री लोग अपना पीठ थपथपाते हैं कि 10 साल में हमने 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिया, तो इतना मेडिकल सीट बढ़ा दिया, आदि आदि इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है? आज हमारे लगभग सारे मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की भारी कमी से जूझ रहा है। खुद नड्डा साहब एक दिन यहीं सदन में बता चुके हैं कि देश भर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में फैकल्टी की भारी कमी है, जिसमें एम्स नई दिल्ली में 34%, एम्स भोपाल में 24%, एम्स भुवनेश्वर में 25%, एम्स जोधपुर में 28%, एम्स रायपुर में 38%, एम्स पटना में 27%, एम्स ऋषिकेश में 39% की कमी है। बाकी के कॉलेजों में तो 50% तक की फैकल्टी की कमी है। और फैकल्टी की कमी होगी क्यों नहीं? फैकल्टी के लिए पीजी की डिग्री चाहिए और देश में पीजी सीट की डिमांड है 2 लाख और सीट की उपलब्धता है केवल 68,000। अंत में महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में हेल्थ सेक्टर की स्थिति बीजेपी सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल में पहले से और ज्यादा खराब हुई। लेकिन ये सरकार न तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है और न ही सच्चाई को मानने के लिए। इनको दिन रात पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को केवल कोसना है ताकि इनकी विफलता से देश का ध्यान भटका रहे। मुझे उम्मीद है आज जो हेल्थ सेक्टर में मैंने यूपीए की उपलब्धियों के प्रमाणिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इससे ये लोग थोड़ा अपना आत्ममुग्धता छोड़ के आत्मनिरीक्षण करेंगे और आगे थोड़ा कोर्स करेक्शन करके भी प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं मैडम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई। सुखेंद्र शेखर राय। धन्यवाद वाइस चेयरपर्सन मैम। हम माँ दुर्गा की पूजा करते समय जो मंत्र से प्रार्थना करते हैं उनमें से एक मंत्र ये भी है, देहि आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये जीवन का मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है। But when I as an old man look at the health sector of the country, I feel utter shock and desperation. Why this feeling has crept in my mind? Ma'am, according to Global Cancer Observatory estimates, there were 19.3 million cancer cases worldwide in 2020, and India ranked third after China and USA. Globocon 2022 report also predicted that cancer cases in India would increase to 2.08 million, accounting for a rise of 57.5% in 2040 from 2020. यानी कि पिछले 5 सालों में 28% increase हो चुका है. Ma'am, apart from cancer, the major diseases which cause deaths in India are ischemic heart diseases, cardiovascular diseases, respiratory diseases, tuberculosis, diabetes, liver, kidney, and asthma diseases, indicated by World Health Organization data published in May 2024. Even the Honorable Prime Minister on the other day expressed his serious concern about steep rise in obesity. Ma'am, with the mushroom growth of private nursing homes and clinics, the sale of spurious and substandard medicines are skyrocketing. The Central Drug Standard Control Organization also found that more than 50 products as not of standard quality. This finding of CDSCO came even after banning of
344 drugs in 2016 and 156 FDC drugs last year by the government. अभी तो नड्डा जी नहीं है, लेकिन जो अनुप्रिया जी है और दूसरे राज्य मंत्री है आदरणीय, उन दोनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज कंसीडर सेटिंग अप a combined combat force with personnel from the central and state governments to initiate a nationwide crackdown on the units and agents engaged in manufacturing and sale of spurious and banned medicines. They are the real enemies within the country who are destroying people's health. देशी और विदेशी दवाई कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। कोरोना काल में हमने देखा जबकि हजारों लाखों संख्या में एमएसएमई थप गए, तब दवाई कंपनियां और दूसरे बड़े कंपनियों का मुनाफा गगन तक पहुंच गए। Government is greasing the oily heads. Ma'am, the government has allocated rupees 95,957 crores to the health sector for fiscal year 2026. That is a 9.46 increase from the 2025 budget. But it does little to address the long-standing resource gap in public health infrastructure because the healthcare sector accounts for 1.94% of the total budget, reflecting a declining trend compared to previous years. Ma'am, despite the rising cost of medicines and treatment, there was a legitimate expectation among the people across the nation, particularly the senior citizens, missing middle-class families, and the workers from the informal sector, that there would be reduction of GST on health insurance premiums from 18% to 5%, and the TDS limit under Section 80 of the IT Act will increase from 25,000 to rupees 50,000, but in vain. Now, let me look for a while to my state, West Bengal. The Honorable Chief Minister of Bengal, Mamta Didi, had introduced Swasthya Sathi in December 2016, long before the introduction of Ayushman Bharat by Government of India. And Swasthya Sathi was acclaimed worldwide, like many other welfare schemes undertaken under the aegis of Didi. Today, 2,914 hospitals in Bengal are empaneled in Swasthya Sathi. In 2021-22, the spending on account of Swasthya Sathi was rupees 2,263 crores, which went up to 2,694 crores in 23-24, benefiting immensely over 8.72 crores people till February this year. We are happy that Government of India and some other states are following the innovative healthcare measures of Didi. Let there be healthy competition to ensure welfare of the common people, the marginalized, and the backward classes who are suffering for centuries in absence of proper nutrition and healthcare. Ma'am, at the same time, I am putting a question to myself as to why there should be stepmotherly attitude by center towards Bengal. West Bengal is an integral part of India. That is Bharat, which is a union of states, as envisaged in the very first article of the Constitution of India. It was never and can never be a unitary state. The history of 190 years British rule is witness to the valiant liberation war launched by the people of Bengal from the Battle of Palashi in 1757 by Nawab Siraj-ud-Dawla to Sipai Mutiny in 1857 at Barakpur led by Mangal Pandey, from the revolutionary upsurge organized by Sri Aurobindo, Khudiram, Bhagajotin, Master Das Surya Sen, Rajbihari Bose, and many others, which culminated into war declared by the Supreme Commander of Indian National Army, Netaji Subhash Chandra Bose, against the British on October 21, 1943, and unfurled the national flag on the Andaman and Nicobar Island, as well as in Moirang, nowadays in Meghalaya. More than 3 million of Bengalis died of man-made famine in 1943. To add salt to our injuries,
Bengal was partitioned and millions of people became refugees overnight. It continued for 3 generations to settle down and to live with human dignity. Why should we be discriminated against even after 75 years of independence? Let me quickly refer to the funding under the National Health Mission and PMMYV program by the central government. No fund under National Health Mission has been released by Government of India since August 2023, in spite of fulfillment of all conditionalities. Similarly, no fund has been released by Ministry of Women and Child Welfare since November 2022 under Pradhan Mantri Matru Bandhana Yojana. Not to speak of rupees 2 lakh crore, which is due and payable by Government of India on account of Manrega, Awas Yojana and other centrally sponsored schemes, compelling the Bengal government to continue with the scheme out of its own fund. I had never witnessed such an inimical attitude on the part of the central government towards the poor people of Bengal in my 58 years of political life. This is going too far. अगले साल बंगाल की आम जनता इस आर्थिक भेदभाव के खिलाफ मुंह मांगा जवाब देंगे. Before I conclude, I would urge upon the government to take care of the increasingly environmental hazards, rampant use of dangerous chemical components in fertilizer, insecticide, pesticides in farming. Organic farming continues to be a beach. हम जहर पी रहे हैं, पानी में जहर, पवन में जहर, खाद्य में जहर. क्यों ये? क्योंकि ये अमृत काल नहीं है, जहर काल है. सरकारी नेता लोग हमें वेद उपनिषद शास्त्र के बारे में हमेशा बोलते हैं. तो कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए ऋग्वेद का 1.9 सूत्र, जहां जिस मंत्र में बताया गया हमारे पूर्वज जिन्होंने ऋग्वेद का जन्म दिया था, लिखा गया था, उसमें है मधुबाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधव माधुर्न संतोषधि मधु नत्तो बुतो शशि मधु मत पार्थ मज्जो मधु दौड़ंतु न पिता मधुमन्न वनस्पति मधुमान अस्तु सूर्य मधुर्गाव भवन्तु न. Om Shanti Shanti Shanti. May the winds blow sweetly, may the rivers flow sweetly, may the herbs be to us sweet and beneficial. May there be sweetness during the day and night. May the heaven be sweet to us. May the fruit-bearing trees be sweet to us. The sun be sweet and benevolent to us. Om Shanti. आप चिल्लाइए मत. अगर हिम्मत है तो गवर्नमेंट को बोलिए पर्यावरण को रक्षा करे, नहीं तो कोई दवाई से कुछ नहीं होने वाला है. ये बीमारू देश. बैठिए, मंत्री बाधा डाल रहे हैं. ये हो रहा है यहाँ, मंत्री बाधा दे रहे हैं. अगर हिम्मत है पर्यावरण को रक्षा कीजिए, नहीं तो ये बीमारू देश को कोई बचा नहीं सकता. धन्यवाद. श्री संदीप कुमार पाठक. धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम. आज हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ और वेलफेयर डिपार्टमेंट के विषय में चर्चा पर मुझे भाग लेने का जो मौका दिया गया है, इसके लिए मैं सदन का और आपका आभारी हूं. ऑनरेबल चेयर मैडम, हेल्थ का विषय एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम राज्य के मैटर और केंद्र सरकार के मैटर में अगर बांट कर देखें तो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग इस भावना से प्रताड़ित होते रहेंगे. इसलिए यह विषय किसी राज्य का नहीं है, यह विषय सिर्फ केंद्र का नहीं है, यह विषय इस पूरे देश का. ऑनरेबल चेयर सर, इससे पहले कि मैं आगे की बात रखूं, मैं 2-3 चीजें आपके समक्ष लाना चाहता हूं. 2014 में गवर्नमेंट रन मास स्टरलाइजेशन कैंपेन छत्तीसगढ़ में 10 महिलाओं की मौत हो जाती है.
पहले दिन वो सर्जरी कराकर जाते हैं, घर पहुंचने के बाद उनकी मौत हो जाती है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है। कारण क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। इसी हॉस्पिटल में 2016 में टोटल 5000 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। इसी हॉस्पिटल में एक साल पहले 2014 में 6000 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। ऑनरेबल चेयर सर, आप नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में देखें कि एक दिन में 33 लोगों की मृत्यु होती है और उनमें से 12 बच्चे होते हैं। कारण क्या होता है? कारण यह है कि मेडिकल स्टाफ है वो सफिशिएंट नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रश आ गया। ये आज भारत देश की हेल्थ व्यवस्था या सिस्टम की एक पिक्चर है जो हम सबके सामने है। इससे मुझे लगता है कि हम सबको अपराध बोध से ग्रसित हो जाना चाहिए। और अगर हमें अभी भी इस बात का खुद पे ये नहीं है कि दुख नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि हम इस काबिल हैं कि इस देश को एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा परिवार दे पाए। ऑनरेबल चेयर सर, निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार कोई टारगेट बनाई होगी। अगर टारगेट बनाए हैं तो कोई प्लानिंग किए होंगे, अगर प्लानिंग किए होंगे तो उस पर कुछ बजट दिए होंगे, अगर बजट दिए होंगे तो उसका एग्जीक्यूशन करने की प्रक्रिया शुरू किए होंगे। क्या वो टारगेट सफिशिएंट है? क्या वो प्लानिंग सफिशिएंट है? क्या वो बजट सफिशिएंट है? क्या एग्जीक्यूशन सफिशिएंट है? ये प्रश्न है जिसके बारे में आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आज का ये डिस्कशन पक्ष या विपक्ष के प्रिज्म पे ना होकर देश के पक्ष में होना चाहिए। ऑनरेबल चेयर सर, 2017 में सरकार एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर आती है। इस पॉलिसी में ये बताया जाता है कि भाई इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अच्छी और क्वालिटी वाली हेल्थ मिले, यही फ्रेमवर्क था पूरा। इसमें आप अगर देखेंगे कि सरकार ने एक प्लान बनाई, इस प्लान में 2 प्रमुख पैरामीटर्स थे। एक तो था नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरा ये लेकर आए आयुष्मान स्कीम लेकर आए। नेशनल हेल्थ मिशन का क्या आइडिया था? नेशनल हेल्थ मिशन का आइडिया ये था कि केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसे देगी और ये पैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो जिला अस्पताल होती है उसके इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति अगर ये देखें, किसी भी आप पब्लिक हॉस्पिटल में चले जाइए, जिला में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या तो हॉस्पिटल ही नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो टेस्टिंग नहीं है, और अगर ये सारी चीजें उपलब्ध है तो वहां भर्ती करने के लिए बेड अवेलेबल नहीं। और ये किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर इसको मैं क्वांटिफाई करूं बड़े सिंप्लीफाइड, मैं ज्यादा नंबर्स नहीं देना चाहूंगा, ये पूरी परिस्थिति को अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूं तो क्वांटिफाई करने के लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार ने अपने खुद का एक सर्वे कराया। इस सर्वे में ये कहा गया सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन को कि भाई अपना सेल्फ असेसमेंट करो। जब सेल्फ असेसमेंट किया गया तो ये पाया गया कि 80% से ज्यादा जो पब्लिक सेंटर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, छोटे बड़े, वो फिट थे और अनफिट थे और सब स्टैंडर्ड थे। 80% से ज्यादा सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अपना ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी चला रहे हैं। और ऑनरेबल चेयर सर, एक अच्छी बात रही सरकार की कि सरकार ने IPHS और NQS ये स्टैंडर्डाइज देने का या रेटिंग देने का एक पैमाना है, सरकार लेकर आई है। पहली सरकार दूसरे नाम से चलाती थी, इस सरकार ने रिफाइन किया है, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस लेके आए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके इस स्टैंडर्डाइजेशन में इतने साल सरकार चलाने के बाद भी दुर्दशा जस की तस है। ऑनरेबल चेयर सर, एक और चीज ऑनरेबल मेंबर ने ये कहा कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो काफी अच्छा है। मैं बता दूं कि 10,000 मरीज के पीछे 10 डॉक्टर है इंडिया में, और डेवलप्ड कंट्री में अगर आप लेंगे तो वही 26 और 30 के आसपास है, अगर इंग्लैंड का ले ले और किसी कंट्री का ले ले। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप डेवलप्ड कंट्री के रेशियो और पेशेंट के कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, मतलब शहर में भी उतने यही रेशियो है, गांव में भी है। हमारे देश में स्थिति यह है कि शहर में तो ओवरक्राउडेड है डॉक्टर्स का, गांव में आप जाते जाएंगे तो वहां पे स्कैर्सिटी है, वहां पे है नहीं। तो आप सिर्फ ये नंबर को उठाकर कंपेयर करके ये नहीं कह सकते, थोड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है
मैंने जिया है, मेरे साथ मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि गांव का एक आदमी वो क्या क्या बेच के अपना इलाज कराता है। ऑनरेबल चेयर सर, ये तो नेशनल हेल्थ मिशन की स्थिति है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो आयुष्मान योजना में सरकार की तरफ से मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। और मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं अच्छी भावना से कह रहा हूं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। क्या डिजाइन फॉल्ट है? आप ये देखिए कि, और ये क्या है ये मेथड है कि इंश्योरेंस किया जाएगा 40% बिलो, जो नीचे के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के तबका है उन पे इंश्योरेंस किया जाएगा। 5 लाख का कवर दिया जाएगा पूरे परिवार के लिए हर साल के लिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जो 10 करोड़ के आसपास ये बेनिफिशियरी इनलिस्ट किए हैं, अगर उसको पॉवर्टी लाइन से अगर आप मैच करते हैं, सरकार नहीं किया, अच्छी बात है, सरकार नहीं किया, मैं डेफिशिएंसी बता रहा हूं, तो सिर्फ 2 करोड़ ऐसे लोग मिले जो एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, बाकी का मैच नहीं हुआ। फिर सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि ये मैचिंग में मत पड़ो, काम बिगड़ जाएगा, जो आते जा रहा है उसका करते जाओ। तो सबसे पहली दिक्कत तो यहीं पे है। ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट में लैक्स ऑफ फॉल्टी और फ्रॉडुलेंट नेम इस पे मिला। दूसरा इसमें सबसे बड़ी खामी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट का है। ये इस पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा अजूबा इंश्योरेंस स्कीम है जो मरीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, अस्पताल को ध्यान में रख के बनाया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर स्थिति में सर सीरियसनेस ले आते हैं सर, सीरियसनेस सर। ऑनरेबल चेयर सर, ऑनरेबल चेयर सर, ये अजूबा स्कीम है। आज तक जितने भी इंश्योरेंस स्कीम उठा लीजिए, सारे इंश्योरेंस स्कीम ऐसा होता है कि इंश्योरेंस हॉस्पिटल को देखकर किया जाता है। ये ऐसा स्कीम है जिसमें बीमारी पे इम्पैनलमेंट होती है। मतलब कोई अस्पताल ये कह सकती है कि भाई मैं सिर्फ आंख का करूंगा, मैं बाकी चीज का नहीं करूंगा। कोई हॉस्पिटल ये कह सकती है कि मैं पेट का करूंगा, मैं हाथ पैर का नहीं करूंगा। तो जो इम्पैनलमेंट है बीमारी के आधार पर है। आप सीजीएचएस ले लीजिए, इसमें हॉस्पिटल के हिसाब से होता है। आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लीजिए, हॉस्पिटल के। क्या कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसके सर्जरी के लिए खुला पड़ा है और वो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया आंख में, तो वो बोलेगा कि भाई करा लो, मेरे पास 5 लाख है। बोले भाई साहब आपका इस पे नहीं होता है, आप अभी बंद करवाओ, सिलवाओ पेट को, या दूसरे हॉस्पिटल जाओ या प्राइवेट में पैसा लाओ, आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं ऑनरेबल चेयर। तो इसमें बड़ा डिजाइन फॉल्ट है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में एक और प्रॉब्लम है। जो मैच्योर्ड सिस्टम होता है, मैच्योर्ड सिस्टम क्या होता है? मैच्योर्ड सिस्टम में ऑपरेशन या बड़ी सर्जरी तब तक नहीं करते जब तक जरूरी ना हो। ये इम्पैनलमेंट जो छोटे छोटे सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहां पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो, आयुष्मान का। मैं ये सही कह रहा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, मैंने देखा है। ये संभव है कि शहर में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होगा। तो और जो इंपॉर्टेंट सर्जरी है ऑनरेबल चेयर सर, जो इंपॉर्टेंट सर्जरी हार्ट से रिलेटेड, उसमें 8,000 रुपए एक सर्जरी होता है। तो जो इंपॉर्टेंट सर्जरी जो होनी चाहिए वो हो नहीं सकती। जिसको दवाई से आप ठीक कर सकते हो वो वहां पे खींच के उसको ऑपरेट कर दिया। ऑनरेबल चेयर सर, प्लानिंग और क्लैरिटी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, इस देश की पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को 3 चरण में आप बांट सकते हैं। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप के लिए आप नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए, सरकारी सिस्टम को आप, अभी मैं सिर्फ प्लानिंग और आपके आइडिया की बात कर रहा हूं, क्या हुआ है वो अलग बात है। नेशनल हेल्थ मिशन में आप सरकारी अस्पताल को आप ठीक करना चाह रहे हो, वो किसको कैटर करेगा? वही लो इनकम ग्रुप वालों को करेगा। उसके बाद आप आयुष्मान लेकर आए, इंश्योरेंस स्कीम, वो किसको कैटर कर रहा है? लो इनकम ग्रुप को। मिडिल क्लास को क्या होगा? मिडिल क्लास को क्या होगा? इतना बड़ा मिडिल क्लास का सेक्शन है, ना वो सरकारी अस्पताल अवेल कर रहा है, ना वो इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर ये दोनों नहीं कर रहा है तो फिर ये तो डिजाइन फॉल्ट है सरकार के पूरे मेथड में। सरकार को पता ही नहीं है कि आपका डायरेक्शन क्या है। अगर आपको आपका डायरेक्शन नहीं पता है तो आप क्या ही एग्जीक्यूट करोगे? डियर सर, इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप टैक्स लेते हो मिडिल क्लास से, भाई आपका खर्चे के लिए कहां से पैसा आ रहा है? कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है। मिडिल क्लास से पैसा आ रहा है, पैसा मिडिल क्लास से आ रहा है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। एक और है, इसमें
इसमें अंडर स्पेंडिंग, क्या कारण है? क्या कारण है भाई? केंद्र सरकार 2 लेके आई, नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरा आयुष्मान, दोनों में ही मैंने आपको आपके सामने डिजाइन फॉल्ट बता दिया, इनसफिशिएंट बता दिए। क्यों ऐसे हो रही है? क्यों ऐसे हो रही है? ऐसा होने का कारण सर यही कारण है, ऐसी राजनीति के कारण ही देश यहाँ पहुंचा है। आपके पास पैसा है, आप इलाज करा सकते हो, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा सकता। नीरज जी प्लीज, अगर आप बजट को देखेंगे, अगर आप बजट, भाई आपकी भावना का अंदाजा तो आपके बजट से लगता है। आपने बजट में 1.4% का आपने टोटल जीडीपी का एलोकेट किया है। आप कहते हो कि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। भाई मार्जिनल इंक्रीज तो जीडीपी के ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है वो होना ही होना है। आपको विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी एंड ऑल्सो करेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा। अगर ये सारे अकाउंट फॉर करते हो तो ये नीचे आ जा रहा है। सर आप जो भी प्लानिंग कर लीजिए, पैसा ही नहीं डालोगे तो होगा क्या? ये आपका हिडन एजेंडा है कि भाषण दो, इस तरीके से डिसरप्ट करो, देश को गुमराह करो और फिर पैसा मत दो आप। सर एक और चीज आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं। तो क्या इस देश में अस्पताल नहीं है? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, अंडर बजट है। देश में डॉक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सीट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट नहीं है। देश में मेडिसिन कम पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, क्यों? क्योंकि बजट कम पड़ रही है। सिस्टम खराब है, क्यों? क्योंकि बजटिंग। बजट एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन क्या एक अकेला कारण है? अकेला कारण नहीं है ऑनरेबल चेयर सर, मैं बताता हूं इसका महत्वपूर्ण कारण है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर जो राजनीति है वो राजनीति मिसप्लेस्ड राजनीति है। कैसे मिसप्लेस्ड राजनीति है? और मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास को ये कह रहा हूं, पूरे पॉलिटिकल क्लास ये समझती है कि हेल्थ और एजुकेशन, इससे चुनाव में वोट नहीं मिलते। जिस दिन पॉलिटिकल क्लास ये समझ जाएगा कि हेल्थ और राजनीति को गंदे चुनाव की अपनी राजनीति से दूर रख के देश के लिए करोगे, उस दिन ये देश आगे बढ़ जाएगा। हमने किया, हमने दिल्ली में, हमारी राजनीति क्या है? आप पूछो हमारी राजनीति क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी स्कूल है, हॉस्पिटल है। ऐसी राजनीति करेंगे, पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक देते हैं। आज अभी जब मैं बोल रहा हूं, दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बने उनका नाम बदल रहा है, 251 मोहल्ला क्लिनिक को आप बदल रहे हो। इस भावना के साथ आप देश चलाओगे? ऑनरेबल चेयर सर, Sandeep ji, 1 minute. Sandeep ji, 1 minute. Okay, please. Sir, can I request everybody, please let him finish his speech. You will have your opportunity to reply. नीरज जी, आप नहीं, नीरज जी, जब आपका मौका आएगा या बता दीजिए, let the member have the freedom to speak. नीरज जी, मेरा आपसे विनती है कि जब आपका मौका आएगा आप बता दीजिए सच क्या है, आप उनको बात करने दीजिए, वो पॉज करेंगे। संदीप जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज लेट द मेंबर फिनिश। You are all senior to me. I am looking for you to help me do this program better. Let the speaker. कारण एक तो पॉलिटिकल है और दूसरा इच्छा शक्ति है। सर मोदी जी ने एक बार कहा था कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। अरे जलाओ ना, क्यों नहीं जला रहे दिया? आप जलाओ दिया, हम प्रोटेक्ट करेंगे दिया को, हम सबको मिलकर दिया जलाना है। जलाओ दिया क्यों नहीं जलाते? मेरा एक सबमिशन है। संदीप जी, I have a suggestion. No, please conclude in 30 seconds because I stopped you in between. Conclude in 30 seconds. Honorable Chair sir, इस देश में 788, let us consider 800 के आसपास जिला अस्पताल है। मेरा ये सबमिशन है, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, सर 800 के आसपास 778 जिला अस्पताल है। अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए, प्रधानमंत्री जी, उनकी सारी कैबिनेट, पूरी पार्टी, सारे विपक्ष, पूरा देश अगर इकट्ठा हो जाए, तो क्या इन 800 के आसपास जिला अस्पताल को ठीक करना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है। क्या डिफिकल्ट है? मेरा एक और सबमिशन है, डू नॉट मेक मल्टीपल पैरेलल स्कीम्स। आपके स्कीम्स तब तक सफल नहीं होंगे जब तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिट्स रेडी नहीं होंगे। आप पहले कैपेसिटी बिल्ड करिए, आप पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ठीक करिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ठीक करिए, फिर आप स्कीम्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संदीप जी। The next speaker is Sri Golla Babu Rao ji. Sir, you have 10 minutes.
Babu Rauji, please continue. You have 10 minutes today. Thank you very much, Vice Chairman ji. Sir, in fact, pause कर दीजिए. Yes, sir. Thank you very much, Vice Chairman ji. It is a wonderful opportunity to speak on the health subject today. I really say that everybody knows the health is wealth. Even peace and prosperity is second, but health is most important to every human being. Coming to our national health policy, which is formulated in 2017, says preventive and promotive care to every citizen and free access to the health care in entire India. Coming to three stages of the national policy, primary health needs are still loggerhead. Even the poor people, if they go to any PSC, primary health center, even many hospitals, I know, even there are no medicine for snake bite. There are no medicine for at least diabetes. There are no complete doctors. There are no other health staff. For example, I tell my own Andhra Pradesh example. Now in Andhra Pradesh, till the former Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy, came to the post of the CM, these situations were happened. Now, after he became the CM, really he took a revolutionary measures. He started a new program called Andarki Vaijyam, health to everybody. Kui, 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 and its sound will come to anybody who wants the medical help. That vehicle will take the patient to the hospital and do everything to that patient. Now he also started beautiful scheme, family doctors method, family doctors scheme. Every house, one doctor will come once in 3-4 days, sit with the family members of everybody and take their all precautions. What do they want? Medicines they want, or any other bigger hospital care they want. They take care of these hospital doctors. Now coming to the intermediary level, the health needs, most of the district hospitals are, of course, situated everywhere. In every district, there is a district headquarters hospital. But there are no research facilities in the district hospitals. For example, in my Visakhapatnam, King George Hospital. King George Hospital is the hospital constructed by British people. But even till today, I think many
Varia MPs also know Jharkhand, that the Chhattisgarh MPs also know this is the biggest hospital situated in north coastal region of Andhra Pradesh. It caters the needs of lakhs of people. What I want is the minimum facilities in the hospitals and doctors. Now in this connection, I want to congratulate the lower level employees of medical staff, higher workers and other lower level workers did a marvelous job in the corona time. Even in the corona time, I still remember, I was an MLA, everybody did a marvelous job to save the lives of even lakhs of people. That's why medical care is utmost important. Coming to the tertiary level, IIMS hospitals, I really congratulate the union government to start the IIMS in the Delhi. Sir, And also these IIMS are being started in every state headquarters. I saw my IIMS in Andhra Pradesh, Mangalagiri. It is just like a foreign hospital. Foreign doctors cannot do anything. But our Mangalagiri, that IIMS doctors are experts. They take every inch of pain to see the patients. Now, what I request the government of India to start more and more tertiary hospitals like IIMS in every one region, one hospital. For example, in Andhra Pradesh, one Visakhapatnam, you construct one IIMS. At one Tirupati, you start one IIMS, and just in Amaravati, that is Vijayawada, so that people can go and take care of their health needs. Coming to the research avenues. Now the government of India has granted nearly 1 lakh crore of rupees. 1 lakh crore. It is not ordinary fund. We can do miracles with this 1 lakh crore. What I request is you utilize these funds properly for the use of all the patients. Now, coming to most important program is Ayushman Bharat. Ayushman Bharat is a wonderful even medical program. Under Ayushman Bharat, so many diseases, cancer, kidney, so many diseases are being taken care. Now, up to 5 lakhs, they are giving the insurance coverage. What I request the union government to extend the insurance coverage more than 5 lakhs. Even some diseases require 10 lakhs, 25 lakhs. Even my Jagan Mohan Reddy ji in Andhra Pradesh has given a chance up to 25 lakhs. Any poor man, he has any disease, the 25 lakhs will be taken and do the health care to that patient. That's why this is the most important department as a whole.
Coming to me, all other departments are secondary in my opinion. That's, I request you, sir. Just Adhyaksha Mahoday, I tell you, the Ayushman Bharat, so far, I think 9 crores people are covered. Now our population is 142 crores. Now increase your coverage to the as many people as possible. And coming to most important point, I also congratulate the union government for eradicating most dreaded diseases like communicable diseases, like the AIDS, cancer, so many other diseases. These are very, very dangerous. Now kindly you please improve the research to these communicable diseases. These communicable diseases are still facing the people are facing in the country like India, and leprosy is there. Leprosy, of course, in South India it is the incidence of leprosy is more. I have seen in my childhood days with leprosy is most dangerous. That's why, but I am very sure leprosy is 99% is now eradicated. To my wonder, even AIDS is also mostly just eradicated. Now other diseases like diabetes or even cancer or kidney problem or other even chronic diseases should be taken care of. So many lakhs of people are losing their lives, and we should also take care of these medical department utmost care and just value to the every human being in the society. And so much I thank you so much for giving me this opportunity to speak on the health subject. Thank you very much. Thank you, Babu Raoji, for heeding to the warning bell. Sir, I congratulate you to occupy the seat of Vice Chairman from my party. On behalf of this House, I congratulate you once again. Thank you so much. If I may call upon the next speaker, Srimati Sulata Devji, you have 7 minutes, please. How much? 7 minutes, ma'am. 10. No, I'm sorry, it's 10 minutes. I'm so Yes, sorry. thank you, sir. Thank you, Vice Chairman, sir. जय श्री जगन्नाथ. स्वास्थ्य ही संपदा, हेल्थ इज वेल्थ, हमारे उड़िया में बोलते हैं स्वास्थ्य ही संपदा. हम अभी सुन रहे थे डॉक्टर भागवत कराड़ जी जो बीजेपी से बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बोला कि उड़ीसा ने आयुष्मान योजना नहीं लगाया. मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि BSKY जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है हमारा, ये अगस्त 15, 2018 से स्टार्ट हुआ उड़ीसा में, जबकि आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2018. तो ये हमारा पहले लगा हुआ है. मैं तो बोलूंगी कि हमको देख के भी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भी लगाया. मैं ममता योजना को आती हूँ. हमारे यहाँ ममता योजना भी है, जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी यहाँ लगाया गया. मैं हमारे वहाँ पर संपूर्ण को देखकर प्रधानमंत्री पुष्टि योजना भी बनाया गया. अब मैं हेल्थ के जो ये है मैं उस पे आती हूँ. ऑक्सफैम 2024 में एक रिपोर्ट किया था कि भारतवर्ष में GDP के 1.9% ही एलोकेशन हो रहा है हेल्थ में. कम से कम 3% एलोकेशन होना चाहिए, मगर अभी भी हम कम है. और हम बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं. स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, शिक्षा तो ठीक नहीं, फिर विकसित भारत कैसा विकसित हो ये भारत? अमेरिका जो कि 10% खर्चा कर रहा है. मेरे पास और भी कुछ
डाटा है, टॉप 20 कंट्रीज जो हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे ज्यादा। पहले यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, जर्मन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, जापान, साउथ कोरिया। ये 20 है, मगर हम लोगों का भारत में जो है वो नीचे से 4 नंबर है, नीचे से 4 नंबर है हमारा हेल्थ का बजट। देखिए, हम जब ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आए तो इंडिया को 134 नंबर है, क्योंकि जहां हेल्थ के बजट में पैसा नहीं है, कम पैसा दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है वो खर्चा कम हो रहा है। तो ऐसे कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा? उसमें कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसमें मानव संबल का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज 134 है, मगर पहले भारत ने 112 था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम और भी नीचे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है। ऑक्सफैम और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कुपोषण में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न में एफिडेविट करके देने के लिए बोले तथ्य। जो तथ्य मिला तो उसमें क्या हुआ ना, मंत्रालय का तथ्य है ये भारत में 0 से 5 साल के बच्चे 5 साल में 69% उनका कुपोषण में डेथ हुआ है 5 साल में। कैसे स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं, क्या स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं, क्या विकसित भारत के बारे में हम बोल रहे हैं? ये है विकसित भारत, इसको हम बोलेंगे, इसको लेके ये है, हम लोग बोलते हैं विश्व गुरु। खुद अब विश्व गुरु बोल देने से कोई विश्व गुरु नहीं हो जाता। विश्व गुरु होने के लिए काम करना पड़ता है, जो काम मेरे नवीन पटनायक जी ने किया है। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कहती हूँ कि देखिए जो MMR है, आज भारत, जब मेरे नवीन पटनायक जी चार्ज लिए थे तो MMR जो है वो 3 डिजिट में था। आज ओडिशा भारतवर्ष में MMR जो है उसको डिक्लाइन करने में सेकेंड हाईएस्ट स्टेट है ओडिशा। IMR के ऊपर आते हैं। इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट जो था वो भी बहुत ज्यादा था। माननीय नवीन पटनायक जी जब प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट में पहले बार बैठा है, जब पहला डिसीजन था बच्चे और माँ के मरने के जो ये है उसको पहले कम करना चाहिए। इसीलिए आज वो जो IMR है हाईएस्ट डिक्लाइन है ओडिशा में, भारतवर्ष में। ये है गर्व के साथ कहती हूँ कि कहना बात करो कोई बात नहीं है, काम बात करना चाहिए, जो मेरे नेता का काम बात कर रहा है। और देखिए इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो 22% था 2019 और 21 को 92% हो गया है ओडिशा का। वैक्सीनेशन इंक्रीज, वैक्सीनेशन बढ़ के 44% से 19 और 21 को देखे तो हाईएस्ट हो गया है 91%। ये है ओडिशा, विकसित ओडिशा। क्या सच रिपोर्ट, इतना रिपोर्ट तो आएगा, कितना जाएगा ये नहीं मैं बोल रही हूँ, मगर देखिए भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये NFHS 5 कह रहा है रिपोर्ट। क्या आज पर NFHS रिपोर्ट स्टंटिंग हाइट फॉर एज 35.5%, वेस्टिंग वेट फॉर हाइट 19.3%, अंडरवेट इज 32.1%। ये जो पैरामीटर होता है, इंडिकेटर्स होता है कुपोषण का, ये है। इसके वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरकार? और बात बोलेंगे कि देखिए जब BSY के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर आयुष्मान भारत के बारे में भी बात हो रहा था। मैं आपको एक बात बोलूंगी, खुद
BSY जो स्कीम है हमारा उड़ीसा में, एक साल में 6,500 करोड़ का बजट एलोकेशन है। और आयुष्मान भारत में समग्र भारत वर्ष में देखे तो 7,000 करोड़ का बजट था। देखिए, एक स्टेट में 6,500 करोड़ और पूरे भारत वर्ष में 7,000 करोड़, हमारे हिस्से 300 करोड़ के करीब आ रहा था। ये अच्छा है या ये तो बोल रहे थे लगाने के लिए, अब लगा लेंगे, अब तो हो गया डबल इंजन, अब लगा लेंगे, मगर नहीं लगा था, लोग जिंदा थे, लगा लेंगे तो लोग भी मर जाएंगे। ये है स्कीम, पैसा तो है ही नहीं, इंश्योरेंस स्कीम है, पहले सामान बेचो, इंश्योरेंस में जाओ, फिर पैसा दे तो दे, ना दे तो ना दे, मगर BSY एश्योरेंस स्कीम था पहले। ये ऐसे कितने लोग वहां पर ट्रीटमेंट होके अच्छे हुए हैं, इसको भी देखना चाहिए। और मैं बोलती हूँ और एक बात, आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे हैं, जहां गुजरात, जहां खुद प्रधानमंत्री एवं होम मिनिस्टर की खुद की राज्य है, वहां पर आयुष्मान में कैसे घोटाला हुआ, हॉस्पिटल ख्याति नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे हुआ, आप देखिए। वहां पर जबरदस्ती जाके गांव में कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, मगर क्या होता है, हेल्थ कैंप लगाने के बाद में ये झूठ मूठ का रिपोर्ट बना के ले आते हैं। कोई उसमें कोड वार्ड भी है, अगर एंजियोप्लास्ट होना है तो बोलते हैं क्या, कचरा साफ करो, एक कोड वार्ड भी है। ऐसे करके 2 आदमियों को मौत हो गया और 7 सीरियस भी थे। मुझे बोलने के भी ये नहीं है कि 3,000 कार्ड डुप्लीकेट हुए थे। 1500 रुपया दो, 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बन जाते थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आपके वहां के शरद सिंघल जी जो कमिश्नर के पोस्ट में है, जो जॉइंट कमिश्नर है क्राइम ब्रांच के, वो खुद बोले उनके नाम पे भी कार्ड बनाया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो हम बोले। और हम बोलते हैं कि देखिए जो बोल रहे हैं, देखिए हम अभी बोलते हैं, देखिए भारत में पैंडेमिक हुआ, हम सब देखते हैं पैंडेमिक हुआ, भारत में पैंडेमिक हुआ, तब पता चला भारत का हेल्थ, स्वास्थ्य का नग्न छवि सबके सामने आया। ये देखे, ऑक्सीजन के कारण ना लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल रहा था। आप एक बात बोलिए, हमारा स्टेट ओडिशा, नवीन पटनायक जी ने 18 स्टेट को ऑक्सीजन भेजा, जान बचाई, ये है ओडिशा। जिसको आप अभी मेडिसिन का दाम कम कीजिए, सर्वाइकल कैंसर में लोगों को वैक्सीनेशन कीजिए, सबको स्वास्थ्य कल्याण में शामिल कीजिए, तब पता चलेगा हेल्थ क्या है। मगर हेल्थ PM केयर फंड हो, इसमें हेल्थ नहीं है। PM केयर फंड तो ऐसे गायब हो रहा है जैसे घोड़े के सर से सींग गायब हो रहा है। मैं डिमांड करूंगी, ये जो पैंडेमिक के चलते हमको इतना सीख मिली, PM केयर फंड से कम ऐसा हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसको लेके भारत में ऐसे आगे हो तो ऐसा कोई जान मान का नुकसान नहीं हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी। श्री मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे दल से। सर माय टाइम शुड बी पॉज्ड, सर माय टाइम शुड बी पॉज्ड। मनोज झा जी, एक मिनट। इसको ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ऑथेंटिकेट मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आप निर्देश दें। आपको मतलब किस इश्यू पे ऑथेंटिकेशन? जो उन्होंने आयुष्मान के एक मिनट मैडम, नहीं, ऑनरेबल मेंबर इज स्पीकिंग, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। वन मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको ही मौका दे रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग अदर मेंबर्स। माननीय सभापति महोदय, बहुत स्पष्ट प्रणाली है, आरोप लगाया जा सकता है जनरल, लेकिन व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल सा नियम है, और आप देखे होंगे उस चेयर पे माननीय सभापति महोदय सारे वरिष्ठ नेताओं से भी ऑथेंटिकेट करने को कहते हैं। तो आप जो जिस चीज का ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचार का जो एलिगेशन है। गुजरात में आयुष्मान भारत की योजना पर इन्होंने स्पेसिफिक आरोप लगाए, उनको ये ऑथेंटिकेट करें। सुलता जी,
1 minute. Sulata ji, 1 minute. Sulata ji, 1 minute. हॉस्पिटल का नाम लिया और बताया कि वहां पर 2 पेशेंट के साथ ऐसा हुआ और कितने आयुष्मान कार्ड 15 मिनट में फर्जी बन गए। ये सर बहुत बड़ी बात है। इसका सर पता लगवाइए क्या है ये। हाँ। सुलता जी, 1 मिनट। देखिए, Sulata ji, you have heard the objection that was raised by some of the members. No, please hear me fully. They are saying that certain allegations made by you are not correct. This will need to be examined by the chair. But from your side, you please furnish whatever information you relied on. This will be examined by the chair for the purpose of taking a decision. No, you may not have to respond now. See, there are 2 issues. सुलता जी 1 मिनट, नहीं सुलता जी 1 मिनट, सुलता जी 1 मिनट प्लीज, मेरी बात सुनिए सर। 1 मिनट, सर 1 मिनट। सुलता जी 2 इश्यूज है सर प्लीज, सर 1 मिनट, सर प्लीज, सर मैडम, मैं इश्यू से मैं डील कर रहा हूं। प्लीज आप 1 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट प्लीज शांत रखिए। सुलता जी सुन लीजिए, सुलता जी, सुष्मिता जी प्लीज। नो, see the chair will examine, but I'm just indicating to Sulata ji, see, as a parliamentarian, we have complete liberty to speak, but it has been a convention that while you have the freedom to speak, if you are speaking on some issue which is being seriously contested, आप जिस बुनियाद पे या जिस बेसिस पे आप जो आपके स्पीच में जिक्र किया था, उसका इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। The office will examine it and then take an appropriate decision. Sir. From responding, sir. Sir. No, I'm not. Shashmit ji, I have not permitted. Shashmit ji, I have not permitted you to speak, so you will not say you are not yielding. It is only when the chair permits. Shashmit ji, no, sorry. Shashmit ji, I have not permitted anybody else to speak. Shashmit ji, no. And Shashmit ji, 1 minute, please. No, I have not permitted. No, 1 minute. I have not permitted anyone to speak. 1 minute. No, 1 minute. Shashmit ji, please. Neeraj ji, बैठिए आप. Neeraj ji, बैठिए. Shashmit ji, now please listen to me for 1 minute. Shashmit ji, no, 1 minute. Shashmit ji, please. 1 minute. Just give me 1 minute. No, I have not permitted anybody to speak. So the question of no, 1 minute. I gave an opportunity. Shashmit ji, please listen to me. No, you hear what I am saying if you want to speak. No, Shashmit. 1 minute. Manoj Kumar Jha ji. 1 second. Please start the clock once again. Sir, no, sir. Sir, I have heard. No, I'm sorry. Manoj Kumar Jha ji, your time will start now. Please start. No, it will restart. How can I speak in these kind of situations? Sir, please. Yes, sir. Shashmit ji, 1 minute. Shashmit ji, 1 minute. Sir, please sit. 1 minute, sir. Sir, allow the chair to.
Sir, sir, please allow the chair to deal with it. Shashmit ji, I will not. Sir, no. I have heard you. Sir, Neeraj ji, please. No, Neeraj ji, please. Please. Neeraj ji, one. Sir, Shashmit ji, please, 1 minute. Sir, I have heard you. 1 minute. I have heard you. Sir, 1 minute. Neeraj ji, 1 minute. Neeraj ji, 1 minute, please. Nagar ji, 1 minute. Sir, I have permitted you to speak. I just want to explain why I asked Sulata ji to give whatever basis. Only one reason. Sir, please, can I request? Sir, can I please request? Please, can I request you all to sit just 1 minute? Sir, please sit. Yes, sir. No, I have not allowed them to speak, like I have not allowed Shashmit ji to speak. I have asked you to speak, sir, because you're a senior member. All that I am saying is, someone objected, they said, let her authenticate. 1 minute. Shashmit ji, please. Sir, please sit. I am not concluding it. I am just responding to what the honorable member said. I said, when certain objections were taken with regard to factual inaccuracies, I have told Sulata ji that as a member of parliament, every member of parliament will have the freedom to speak. 1 minute. Now, when a member of parliament speaks, if I ask the member to respond to an allegation, I will be demeaning the member. Because I will respect the member, I will think the member knows what she speaks, and I respect the member to think that she has done her research before she spoke. Now, if someone makes an allegation, if I ask the member, please respond, I'm demeaning Sulata ji. I don't want to demean a member of this house. So what I have said, please, Shashmit ji, I have told only one thing. Sulata ji, as a responsible member, you have spoken, you have the freedom to speak. There have been some complaints made about inaccuracies. Because this house is now following a convention of asking members to authenticate, I did not even ask her to authenticate. I asked the honorable member, आप जिस बेसिस पे, जिस बुनियाद पे जो आपके स्पीच में बोले, मैं एलिगेशंस भी नहीं बोल रहा हूं, वो आप चेयर को सबमिट कर दीजिए. The house will take a decision after taking a decision. It's very fair. I think it concludes this issue. I want Manoj Kumar Jha to take it over. I'm not letting any member hijack the house. Sir, I am running the house. Manoj Kumar Jha will speak, and the time will start once again now, sir. Thank you, Honorable Deputy Chairman साहब, Vice Chairman साहब. पूरा तारतम्य ही टूट गया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बहस में. कहा तो हम ये सोच रहे थे कि शुरुआत एक मिनट सर, इनका टाइम अभी से शुरू कर दीजिए, आप यहां से शुरू कर लीजिए जी. तो कहते हैं ना कि कुछ कटी हिम्मतें सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में. तो मंत्री महोदय 2 लोग थे यहाँ, तो अपनी बात वहां से रखना चाहता था. एक बहुत ही अनयूजुअल चीज से शुरू करूंगा अपनी बातचीत. माननीय उपसभापति महोदय, हाल के दिनों में एक किताब पढ़ी, बड़ी प्यारी किताब है. एक पत्रकार हैं, उल्लेख केरला के हैं. उन्होंने लिखा है मैड अबाउट क्यूबा. क्यूबा हम सबके बचपने से एक अट्रैक्शन का पॉइंट हुआ करता था. और उसमें बताऊं, खास तौर पर क्यूबन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, एक बड़े साम्राज्य से लड़ने के बावजूद क्यूबा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके लोगों का जीवन स्तर मानवीय सूचकांक के हर चीज पर ऊपर जाए. ये क्यूबा ने किया. मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा सर, 1-2 मिनट ले लूं तो माफ कर दीजिएगा. सर, सहजन जिसको मोरंगा भी कहते हैं, वो क्यूबा में नहीं होता था, लेकिन क्यूबन डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया कि ये मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है और कई तरह के रोग निरोधक तत्व हैं इसमें. सर, केरला आई क्यूबा से टीम, तमिलनाडु गई और बेस्ट सीड्स लेकर के मोरंग के क्यूबा में गए. और आज क्यूबा में दर्जनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारी जो हेल्थ सेक्टर की दिक्कतें हैं, वो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म से भी पैदा हुई है. सर, मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं
सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। सर, एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, मेडिकल पॉवर्टी। लोग मेडिकल एक्सपेंस के कारण गरीब होते जा रहे हैं और इसका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस सदन में। सर, प्रतिदिन हमारा दो काम बिहार के सांसदों के हैं। एक है रेलवे पीएनआर कंफर्म कराना और दूसरा है एम्स में भर्ती करवा दो किसी तरह। ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं सर? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा सर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा टूट गया, इस देश का सपना टूटेगा। इस देश के करोड़ों लोग कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े 5 सितारा अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं करता है, और करता भी है तो जमीन बेच करके। सो वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही है और यह भी इसी व्यवस्था की जनक है सर। इसी पूंजीवादी समाज की वजह से फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री का ग्रिप इतना जबरदस्त है, कई जगह पर तो सरकार बनाने बिगाड़ने लगे। उस संदर्भ में ये बात मैं रखना चाहता था। सर, हमारे अपने सरोकार में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी एनएमसी को लेकर के, जो चिंताएं थी, मैं चाहूंगा कि मैं उस पर विस्तार से ना जाऊं, आप खुद उसका, क्योंकि आपके पास वो रिपोर्ट है। सर, कॉन्ट्रैक्चुअलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, एक्सपर्ट्स हो, टेक्नीशियंस हो, नर्सेस हो, वो प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं। और ये लग रहा है जैसे कि किसी के इशारे पे हो रहा है, किसी के इरादे से हो रहा है। ये चिंता का विषय है। और एक तरह से जो मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट का एक डिस्कनेक्ट है प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ से, और वो भी फार्मा इंडस्ट्री का देखिए उसमें ग्रिप। फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो रोग महत्वपूर्ण है, जिनकी दवाइयां महंगी है, जिनसे पैसे इकट्ठा होते हैं, धन इकट्ठा होते हैं, उन पे ज्यादा जोर है। सर, इससे पहले कि मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी कहूंगा, बजट को लेकर के, बजट एलोकेशन को लेकर के हमारे तमाम साथी बोल चुके हैं, मैं उस पर वक्त नहीं लूंगा। लेकिन सर, कोविड वाले पीरियड में हमारा बजटरी एलोकेशन बढ़ा होगा, उसको बढ़ा था, उसको एपिसोडिक ना रहने दिया जाए, उसको एक निरंतरता प्रदान की जाए, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाए। 5% जीएसटी यूनिफॉर्म की बात हुई थी मेडिकल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उस पर विचार करिए, सलाह दे रहा हूं सर, सलाह दे रहा हूं। आज एक सुबह संयोगवश 0 आवर में था और आप थे माननीय मंत्री महोदय। आशा वर्कर्स और बाकी स्कीम वर्कर्स जो इस देश की योजनाओं को ढोती हैं, पहुंचाती हैं गांव गली कूचे, उनका मानदेय मैं समझता हूं कि सर पीनट्स के बराबर भी नहीं है। हालांकि मैं मूंगफली की भी तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको उसको बढ़ाना होगा और रिटायरमेंट बेनिफिट तय करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं है, खास करके टायर 2 और टायर 3 सिटीज में मेडिकल एजुकेशन के मसले को लेके। शुक्रिया, बहुत बहुत आप कैसे समझ गई? शुक्रिया सर। हो जा रहा है 10% R&D फंड उसके लिए। अब सर, मैंने पहले कहा बिहार से आता हूं, हम लोग का बहुत बड़ा ताल्लुक है एम्स से। सर, इससे पहले कि भूल जाऊं, एम्स कई जगह बना है, नए एम्स बने हैं, पुरानी सरकार ने बनाया, आपने भी बनाया। लेकिन सर, मैं माफी के साथ एक कहता हूं, दिल्ली के एम्स की एक संस्कृति है, कल्चर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कल्चर सर्जिकली इम्प्लांटेड नहीं हो सकता, ये ऑर्गेनिक पैदा करना होगा, कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है। मैं एक कहूं कि बिहार में आपने सब राज्यों को कहा 8% खर्च करो, बिहार में 5.7% है। सर, 1-2 मिनट बस माफी के साथ। हमारा एनएचएम के अंदर लोएस्ट पर कैपिटा ग्रांट बिहार को है। हम मुफ्त में बदनाम हुए बजट में, सब लोगों ने कहा बिहार को दे दिया, बिहार को दे दिया, तो बिहार अक्सर मुफ्त हुए बदनाम वाली कैटेगरी में आ जाता है। वो 217 रुपए पर कैपिटा ग्रांट सबसे कम है देश में।
कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेलेंस और उससे होने वाली डेथ में भी बिहार अव्वल नंबर पे है। मैं अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि देश में कहीं भी कोई मौत होगी तो आपको उसमें एक बिहारी जरूर मिल जाएगा। हमारी प्रिवेलेंस इतनी ज्यादा है, चाहे रोग का मामला हो, मौत का हो, ये सारी चीजें चिंता हमारी भी है सर। आपके ही निर्देश पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम 4 से 6 बेड होने चाहिए। हमारे बिहार में सिर्फ 38% पीएचसी के पास ये हालात है सर। एक डेढ़ मिनट, माननीय उपसभापति महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का शॉर्टफॉल बिहार में 71% है। बीच में छोटी अवधि के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, कई व्यवस्थाएं बदल दी थी। जो अस्पतालों में एक रौनक, एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए था, वो बहाल हुआ। सर एक टिप्पणी में हमारे संदीप जी ने भी की। सर ये जो पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का एक स्लोगन पढ़ते थे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, आज उसके मानी बदल गए हैं सर। बीमा कंपनियों का ही हम जीवन बीमा कर रहे हैं और उनके जीवन के साथ भी, उनके जीवन के बाद भी, उसके मायने बदल गए हैं सर। ये चिंता का विषय है सर। एक छोटी टिप्पणी करके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के शॉर्टफॉल 71% का। मेडिकल सीट्स जो अगर रीजन के हिसाब से देखें तो बिहार की मेडिकल सीट्स महाराष्ट्र की 30% ओनली। एक एम्स की मांग अक्सर होती है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एक बार मांगा था, उन्होंने कहा था बगल में दरभंगा में है। मैं कोसी क्षेत्र के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि एक पीजीआई टाइप इंस्टीट्यूट माननीय मंत्री महोदय और महोदय, सभी महोदय, सहरसा में, कोसी के रीजन में सर। Please wind up. You asked for 2 minutes extra. I'm giving you 2.5 minutes. 30 सेकंड दे दीजिए सर। पहली बार तो आपको बैठा देख रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक पीजीआई टाइप इंस्टीट्यूट सहरसा में, और एक आखिरी अपने प्रोफेशन के बारे में, मैं सोशल वर्क से आता हूँ। देयर इज ए पोजीशन इन हॉस्पिटल्स कॉल्ड मेडिकल सोशल वर्क। सर उसकी पे पैरिटी नहीं है, उसको एक बार दिखवा लीजिएगा। कई ऐसे एम्स हैं भुवनेश्वर जो डीयू के हमारे डिपार्टमेंट की डिग्री को कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते। ऐसे कैसे चलेगा सर? छोटी मोटी टिप्पणी से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं सर। अच्छे वक्त में आए आप। जय हिंद। Any time is good time. Honorable members, I am indeed honored, and so would the members of this august house, with the felicitation I am indicating from the chair. Honorable members, it is a privilege to honor Shri Ilaiyaraaja ji, the legendary composer whose music has shaped Indian cinema for over 5 decades, revered as Isai Gyani. The musical genius, his extraordinary mastery of blending classical traditions with contemporary sounds has given rise to timeless melodies that transcend generations and borders. His compositions are much beyond songs. These are deeply felt emotions that have touched millions. He has composed over 8,600 songs. Besides being the only composer in the world
to have composed music for about 1,523 feature films, and in over 9 languages. Sri Ilaiyaraaja's unparalleled contributions to music have been accoladed and recognized with numerous honors, including 5 National Film Awards, 3 for the Best Music Direction, and 2 for Best Background Score. A gold medalist in classical guitar from Trinity College of Music, London. He has elevated Indian music to global recognition. In 2010, he was conferred the Padma Bhushan and followed by Padma Vibhushan in 2018. And in 2022, he was awarded an honorary doctorate by the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in recognition of his remarkable legacy. Honorable members, I join you in proudly announcing that Sri Ilaiyaraaja ji is the first Indian to compose, record and perform live a full English classical symphony music titled Valiant this month in London with the Royal Philharmonic Orchestra on March 8, 2025. This symphony was composed by him in 34 days, which is a very unique achievement. And the whole nation and people beyond are proud of this. The achievement is yet another testament to his enduring brilliance and global appeal. Beyond his musical achievements, Sri Ilaiyaraaja ji's presence in this august house since July 2022 as a nominated member enriches our collective discourse. On behalf of this house, I extend my heartfelt felicitations to him. May his legacy continue to inspire, motivate, and may his melodies captivate the world for generations to come. I will now revert to continuation of the debate. But these are occasions when the world recognizes sublimity and depth of Bharat. And in the same line with equal recognition, I now invite Jiaji to take the floor. Thank you, sir. And what a pleasant coincidence. After Ilaiyaraaja's felicitation, we have Jiaji here contributing. I'm just saying, Vanakkam Periyanna, Ilaiyaraaja ji. Vanakkam Periyanna. I've had the opportunity of
spending a lot of time with him. In fact, we've had the opportunity to work with his son as one of the composers of one of our films. I'm very happy and thankful to the government for bringing such illustrious people from this industry into this house. They are truly the representatives of the upper house, house of intellectuals. It makes me extremely happy. I congratulate the government for doing so. आपको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। सर, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो बोलना चाहिए राम गोपाल जी को, चेयरमैन है हेल्थ कमेटी के, मगर मैंने हाईजैक कर लिया है। कितना अच्छा लगता है जब इस हाउस में खड़े होकर एमपीज अपने स्टेट की उन्नति के बारे में बात करते हैं और बढ़ाई करते हैं। दुर्भाग्यवश हम ये नहीं कर सकते सर। अगर डायलॉग बोल भी दूंगी सर तो अच्छा ही बोलूंगी, आप लोगों से तो अच्छा ही बोलूंगी। Sir, respecting lives of people who bring us to this position is a very, very important duty. And let's together give them that respect that they have given us. To speak for them, to speak on behalf of them, and to take care of them. And I am sure that any government that comes in power, their basic interest is to provide good health care. पिछली बार जब आप मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला और साथ काम करने का भी मौका मिला। But sir, I have, सबने बहुत कुछ कह दिया. I just will bring in some emotional points. Technical data वगैरह ये सब बोल रहे हैं. दो तीन बहुत छोटी-छोटी चीजें कहूंगी. First, how can we claim progress in medical facilities when mothers bleed to death in transit and children starve? Our infant mortality rate is higher than countries like Sri Lanka and China. And we also rank highest in wasted and stunted children under 5 years. I will not elaborate on it, क्योंकि इस हाउस में जितने लोग बैठे हैं, उम्मीद करती हूं कि most of them are above intellectual level. They will understand what I'm trying to say. The next target or the next population that I would like to speak about are the elderly people, the senior citizens of this country who are grossly neglected. Especially senior citizens who live alone and in urban cities, क्योंकि छोटे शहरों में परिवार इकट्ठा रहता है, पेरेंट्स की देखभाल हो जाती है, मगर बड़े शहरों में पेरेंट्स जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनके बच्चे या तो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए या उस शहर से कहीं और चले जाते हैं उन्नति के लिए, अपने प्रगति के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर parents who live alone in flats, in houses, are completely ignored by the society, by all of us. एक बिल्डिंग में अगर कोई एल्डरली कपल रहता हो, कितने लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जो जाके पता करते हैं कि आप कैसे हैं, आपने कुछ खाया, आपको किसी चीज की जरूरत है? उस तरह की भावना अब हमारे यहाँ से खत्म होने लगी।
You can continue if you want for a minute. May I? Thank you. अब तो सर बात यह है कि ऐसे लोग जो सेलिब्रिटीज का दिन है ना. सॉरी सर. सेलिब्रिटीज का दिन है. आप बोले. अच्छा. Thank you. You consider me to be a celebrity. I thought I was a maybe. सर ये अर्बन एरियाज में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, they suffer from undetected dementia and Alzheimer's. There is need to conduct a census of such elderly people so that timely health care can be given and dignity upheld during the twilights of their lives. Next is organ donation. Sir, हमारे देश में awareness की कमी है, religious beliefs की वजह से and strict laws की वजह से more than 112,000 Indians are waiting for transplant. And a new name added to the national transplant waiting list every 10 minutes. This requires urgent attention. हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि किसको क्या बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, बट एक छोटी सी एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बात करते हैं ध्यान नहीं देते, एंड दैट इज मेंटल एलिमेंट्स. India allocates less than 1% of its total health budget to mental health. सुष्मिता और आप खत्म कर लें तो मैं आगे बढ़ूं, because you are disturbing me. आप कंटिन्यू करें, 1 मिनट. Everyone speaks, sir. Less than 1% of its total health budget to mental health, while developed countries allocate 5 to 10%. Nearly 15% of Indians suffer from mental health disorders, and there is only one psychiatrist per 100,000 people. It's a very sad situation, sir, and completely ignored. Thank you, Jaya ji. Thank you. Conclude नहीं करूं? कंक्लूड करिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सब कंक्लूड करिए. अरे राधा मोहन जी अगर मैंने सिफारिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात. अगर सेलिब्रिटीज को बुलवाया तो आपको तो फिर 10 मिनट बुलवाना पड़ेगा. अच्छा सर, मैं खुद अपने लाइफ में, मुझे याद है जब मेरे पति अस्पताल में बहुत बीमार थे, बंबई में नहीं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी 24 hours. He was in the very ICCU. Or I was personally supervising, there were no nurses available. Cylinder khatam ho gaya and he was gasping for breath. We got cylinders in the middle of the night and they were empty. Can you imagine the condition of the patient and the family? Anyway, because I think someone was kind, we managed to get so this is very important, and this comes under the category of medicines as well. You get spurious medicines. In fact, medicine, a simple thing like Vicks is full of wax and scent. It is very, very bad. These things need to be controlled and taken care of. I don't want to say too much. I would like to conclude by saying that the government should consider bringing a unified healthcare law which will ease various aspects of healthcare services for Indian citizens. Thank you very much. Thank you, Jayaji. Thank you, Jayaji. Mr. Irana Kadadi. For 10 minutes. धन्यवाद उपसभापति महोदय. आज मैं कर्नाटक से आ रहे हैं, इसलिए कन्नड़ में बोल सकते हैं. You have requested. आपकी रिक्वेस्ट मिल गई. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಜೆಟ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರಾದ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 99,858.56 ಕೋಟಿಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರತಿಶತ 190ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,406 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 55 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8.39 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಡವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳು, 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಜರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ 50% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10,000 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಕೈಗೆಟುಕಿದಾಗ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಜನರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಔಷಧಗಳು ದೂರ ಮಾಡಿವೆ. ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದೆಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬಿಪಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇ ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ 200 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 36 ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ BCD ಬೇಸಿಕ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 37,227 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 19 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 736ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 1100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸದನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಮೀನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ESI ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸದನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 1,237ರಿಂದ ಈಗ 195ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 13.28ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತ ಭೀಕರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಜೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ದೇಶದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you. Srimati JB Mathur Hussain. Thank you, Vice Chairman, sir. Regarding working of the Ministry on Health and Family Welfare, I wish to speak on 10 points. As I'm from Kerala, my first 3 points would be on Kerala. And the first point is on ASHA workers, the silent pillars of public health. Let me start with a story, not of a celebration, but of a suffering. So in Kerala, there are about 27,000 ASHA workers. And these ASHA workers have been on indefinite strike for the past 37 days in torrential rain and scorching sun, and no steps, and in the steps of Secretariat of Kerala. And now ASHA workers have announced that they will go for an indefinite hunger strike from day after tomorrow. Why, sir? Because the honorariums remain unpaid, their wages have not been revised, and their demands are met with silence. Neither the government of Kerala nor the center has had the willingness to even listen to the concerns of ASHA workers. On International Women's Day,
when the world celebrated, the Asha workers in Kerala stood in darkness of neglect. Currently, an Asha worker in Kerala receives rupees 7,000 per month. That is equivalent to rupees 233 per day. Even this meager sum is delayed. Can a family survive on 233 rupees a day? And even for this meager amount, Kerala government had brought a circular which they had to withdraw under pressure yesterday because of the ongoing protest of Asha workers. 20 years ago, when under NRHM, when Asha workers became as scheme workers and when they were as voluntary part-time service. Today, they are the first-time responders to our most pressing health issue. During COVID-19, like angels, Asha workers went from door to door, identifying patients and quarantine, treatment, giving them medicine, PPE kit. And not just for COVID, they have been at the front line of battle, whether it's dengue, malaria, tuberculosis, cholera, leprosy, Nipah, taking even pregnant women to hospitals and even vaccination. Sir, as a three-term municipal councillor, I have had first-hand experience and I've watched them from close quarters, and this is not a part-time job and it is undoubtedly a full-time job. But their shifts are endless, sir. Even after going home, they have to do the data entry and reporting. So their responsibilities are boundless, yet their compensation remains disgracefully inadequate. And sir, they work over 12 hours a day without social security, without job benefit, without a pension, and they retire with nothing. Asha ab nirash ho gayi. This is not just a policy failure. This is discrimination. This is exploitation. This is violation of human rights. Yes. Can a nation that prides itself in women empowerment justify this exploitation, sir? Meanwhile, Government of Kerala and central government are engaged in a blame game regarding funds. The Finance Minister of Kerala claims Centre has to give 100 crores. The Health Minister of Kerala claims that 636 crores have to be given and it is pending. Whereas the Union Health Minister in the floor of the House says nothing is pending. Where is the truth? What is the truth? And why should Asha workers suffer? Sir, the recent announcement of considering enhancement remuneration by the Union Minister in the House is a solace, but that is not enough. I am glad JP Naddaji is here. Asha workers must be institutionalized as a government employees, and refusal to do so is a deliberate, systematic undervaluing of women labor. So therefore, most respectfully, I urge the central government, regularize Asha workers as employees, implement a structured pay scale of rupees 21,000 per month, ensure a retirement benefit of 5 lakhs, social security, EPF and pension. So I have raised this issue in this house on Feb 6, 2024, and we will continue to raise it. So now I move on to my second point, Anganwadi workers and helpers, the backbone of child nutrition. Like Asha workers, Anganwadi workers in Kerala is around 66,100, and they are also on an indefinite strike since yesterday. Their wages have not been meaningful revision in 8 years, but their workload has increased exponentially. An Anganwadi worker earns only 12,500 per month and a helper rupees 8,700 per month. Often they pay for the daily expenses and they have to crave for their reimbursement. So this is a state-sanctioned injustice.
So I urge the central government, treat Anganwadi workers as government employees in line with Supreme Court observation, implement a minimum wage of 21,000 per month, increase retirement benefit to 5 lakhs. So I had raised this issue also in the House on 5th December 2023 and will continue to raise it. So the protest staged by Asha workers and Anganwadi workers in Kerala is a show of strength, of perseverance, of women power. Jwalikkette Stree Shakti, Unaratte Keralam, Bayakkillini Naamdellum, Karuttode Viral Chundum. The women power will rise and shine. Kerala will awake and point fingers on the injustice of state and central government. Very good. Sir, I have started Mahila Sahas Kerala Yatra from Jan 4th, covering 1,474 mandalams, 941 panchayats, 87 municipalities and 6 corporations. And I want to share here, in 40 days when I traveled to 30 panchayats, in every panchayat, Asha workers and Anganwadi teachers and helpers, they came and narrated their sad story. So if a state like Kerala, which has, due to continuous different successive governments, stay ahead in public health, if this is the plight of Kerala's Asha workers and Anganwadi, then what will be the plight across the nation? So I urge both, this has to end, and both Asha and Anganwadi workers will have to be treated as government employees and benefits given. So my third point, Kerala's fight for AIMS and the tale of stepmotherly treatment. So Kerala has done everything, whatever is required for AIMS. Initially 4 locations were identified. Thereafter 150 acres of land acquired and transferred to Directorate of Medical Education in Kinalur in Kozhikode only for the purpose of establishment of AIMS. But in spite of doing all that, the union government turns deaf to Kerala and for AIMS. I asked the union minister, very respectfully asked the union minister, why does Kerala not deserve an AIMS? Why the delay when other states are given AIMS? And this discrimination should end and Kerala should get AIMS. So now moving on to the national picture, sir. A tale of, my fourth point is tale of 2 eras. Before 2014 and after 2014. So before 2014, across different governments from Jawaharlal Nehru to Manmohan Singh ji, yes, of course, with Atal Bihari Vajpayee also as Prime Minister, so there was a common priority. The common priority was building of a robust healthcare system in India. The focus was on infrastructure, inclusivity, and also accessibility. Priority was provide health. Now from Achhe Din to Sabke Saath, Sabka Vikas, Prayas to Amritkal to Viksit Bharat, there is no substance. There is only slogan. Now it is, the GDP is only 5%. If when the WHO recommends 5%, India barely allocates 1.9%. This is embarrassingly low, sir, when compared to giants. Sir, my fifth point is public healthcare system in ruins. I wish to say about Ayushman Bharat. Ayushman Bharat, the healthcare shifted responsibility to private players, ensuring free and accessible which is not there. And Controller and Auditor General itself has said that there are fake claims and there is total fraud. So my sixth point is collapse and violence against doctors and health professionals. Conclude. India has become where AIMS is like that. So rising violence against doctors is a big issue and Central is not doing. So my seventh point is NEET catastrophe. Government promised 10,000 medical seats but can't even conduct the NEET exam. And Union Minister, I hope Naddaji has seen Jairam Rameshji's tweet about what has happened about the postgraduate exam. So my eighth point is unacceptable 18% GST on health insurance. That has to be revoked, sir. That is much, much higher than what people in pay Please US, conclude. UK and South Africa. My ninth point, sir, drug quality concerns. Whereas our drugs, which being used in Gambia and Uzbekistan, people have lost life. In US, there is people are turning
blind eye. So all that is a big concern. So my final point, if I don't say this, it will be a big loss to the nation. So my final point, India and the WHO, silence is not an option. WHO plays an important role, and even during COVID time, we know what WHO did. Thank you and very much. President Trump has unilaterally announced the decision to withdraw from WHO. This is the time our India self-proclaimed Vishwaguru, Honorable Prime Minister, must step up and support WHO. I urge you, Prime Minister, sir, I do not speak today merely to criticize, I speak to warn. Our healthcare system is dismantled before our eyes. The government's policies are misplaced, flawed and dangerous. I conclude, sir. I conclude. People of India deserve better. Thank you not very just much. slogans, but action. Not just speeches and podcasts, but solutions. Not just promises, but justice. Jai Hind. Thank you. What is your point of order? Sir, point of order. Rule 239. So when the purpose of explanation during discussion or any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member or any matter that under the consideration of the council, he shall ask the question through the chairman, sir. So I am using your good officer. Is it not a fact that, as Mr. Manoja stated in the morning during the 0 hour, that Kerala gives the highest honorarium for ASHA workers? And second, is it not a fact that Congress is in hand and glove with the BJP in Kerala to distort the LDF administration there? And three, will they have the guts to take on the BJP? Will they come to Delhi and fight BJP instead of taking? This is not point of order. Please. Sir, 239. This is not point of order. No point of order. Sir, 239. Yes. Please. No point of order. Thank you. Thank you, sir. Mr. Abdul Wahab. सर बार बार यही हो रहा है सर, बीजेपी के बाद कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस की टर्न आता, आपने काल भी वो तोड़ दिया था, आज भी तोड़ा, क्यों सर? Hello, there is no point and there is no order. What is the reason? It's chairman's discretion, but please maintain the convention, sir. Please. Okay. If I am sitting on the chair, I am also bound by the chairman discretion. Please, Abdul Wahab. No point, no order. Respected Vice Chairman Saab. आप आगे देख के बोलिए, पीछे क्यों देख रहे हैं? Thank you. No. Just the point of order. Any other point of order coming? When we are telling about the truth about Kerala government, then these people start making point of orders. As ASHA workers and all, already my colleague explained. I don't want to explain more about that one, about ASHA workers. Both the Kerala government and central government, they are playing. We don't know who is right and who is wrong. Now the Britas is telling of center, and we are telling both are culprits in this one. ASHA workers case, minimum 21,000 rupees anywhere. If I am starting a business, then only this minimum wages comes. But government of Kerala, there is no minimum wages, 21,000 given from Kerala government, either for the help of center or not. There should be 21,000 at the time of retirement. They need 5 lakhs, or they are fighting for that. And demanding for the aims already done. How many times, I don't know. We are telling Nadaji just to make aims wherever it is in Kerala, second one. And National Institute status for Kottakkal Aryavaidashala. You all know Kottakkal Aryavaidashala. It should have a national status. Kottakkal was bagged All India third rank in Quality Council of India rating. And the government should elevate the status of Kottakkal Ayurveda to National Institute of Ayurveda status, like the one in Jaipur. A memorial honor of the late Sri P.K. Warrior, who took the Ayurveda to masses, should also needed to be set up. And now my request is to Nadaji need to increase the seats for MBBS seats. As you all know, because of no seats much and everybody is going outside. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, they are going. I don't know what they are getting and all. But a lot of money is spent our students there. So increase our MBBS to
to a level which you are all telling this much doctors should be needed for this much people. The quality of examination to practice in India is great entry barrier for many students coming back. We need to ease the entry of foreign educated medical students by giving them license to practice in India. Increasing attack against medical practitioners, already mentioned by J.B. Mathur. The medical practitioner doctors are having a lot of problems from the families and some people they are coming for the medical care. So medical practitioners feel that they are being unfairly targeted and being treated unjustly. Increased sensitization and strict laws need to be formulated. The pathetic working condition of nurses and other medical staffs in India. Nurses have been one of the most exploited community by private hospitals in India. The minimum wage for nurses in all private hospitals should be also kept at least Indian rupees 21,000. Union government should intervene to make their working conditions better and ensure these countries are not exploited anymore in the hands of private hospitals. One more request. CGHS, this facility for us, for the government employees for us, it is not there in Kerala much. Our district, Malappuram, Palakkad and all, we have to go all the way to Calicut to get the CGHS facility. Thank you. So please include Malappuram also in that one. Thank you. Thank you. Mr. Mohammad Nadimul Haq Sahab. सर, वाइस चेयरमैन सर, मैं अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी लीडर ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे ये बोलने का मौका दिया। सर, कहते हैं कि जान है तो जहान है और यही सेहत का राज है। मरकजी हुकूमत अवामी सेहत को मजबूत बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुल्क में सेहत आमा की इंतहाई अबतर हालत को उजागर करती है। मेरी पार्टी ने बार बार लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में वो कहा है कि 18% जीएसटी को हटाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। सर, हुकूमत नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत पब्लिक हेल्थ के अखराजात को जीडीपी के 2.5% का दावा करती थी, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि 0.28% सिर्फ हेल्थ पर जीडीपी का हिस्सा जो है वो हेल्थ पर उसके लिए मुख्तस किया गया, उसके लिए रिजर्व किया गया है, जबकि वर्ल्ड एवरेज कम से कम 6% होता है। सर, और ये हुकूमत के यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सर, मुल्क में बहुत सारे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से एम्स भी है, और अगर उसकी हालत देखिए तो एम्स में आज के दिन में 18,256 असामियां खाली है और कल्याणी एम्स में सर 151 फैकल्टी और 812 नॉन फैकल्टी मेंबर्स की भी असामियां खाली है। तो ये कैसे ये हुकूमत हेल्थ के लिए ये सहूलत सब फराहम करेगी अगर जो हॉस्पिटल में जो जगह खाली है वही अगर भर्ती नहीं हो। मेंटल हेल्थ अगर देखा जाए तो जो जिसको कहते हैं कि जहनी सेहत, उसमें भी जो हेल्थ का बजट है उसमें सिर्फ 1% उसका खर्च किया जाता है, उससे भी बल्कि कम। तो इसमें भी इंसाफ नहीं हो रहा है। सर, इस नाकामी के बरक्स अगर हम बंगाल में जाएं तो हमारी ममता बनर्जी, हमारी दीदी, उन्होंने 2010-11 में कमान संभाला था, जबकि वहां बजट 2,885 था और आज के दिन में हेल्थ का बजट 20,200 करोड़ रुपया बढ़ करके हो गया है। या एमबीबीएस सीट जो 1,355 थी आज के दिन में 5,650 सीट्स हो गए। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक्टरेट की तादाद दुगनी हो चुकी है और नर्सिंग सीट्स 10 गुना हो चुकी है आज के दिन में। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बंगाल में अस्पताल के बेड्स की तादाद दुगनी हो गई है और कई स्पेशलिटी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र भी कायम किए गए हैं। सर, कौमी खानदानी सेहत सर्वे NFHS 5 के मुताबिक इस इकदाम से, इस कदम से 88% वैक्सीनेशन आज पूरे बंगाल में हो रहा है और नेशनल एवरेज सिर्फ 77% है। यहां तक के
बंगाल में ख्वातीन की ग़िज़ाई सूरत हाल का फिगर भी कौमी औसत से अब बढ़ करके आगे हो गया है। सर, these achievements reflect West Bengal commitment to accessible and quality health care for all. इस कामयाबी की बुनियाद स्वस्थ साथी है। ये मगरबी बंगाल की एक फ्लैगशिप सेहत इंश्योरेंस स्कीम है जो मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमत के जरिए माली आयानत फराहम करती है। ये स्कीम रियासत भर में 2 करोड़ 45 लाख फैमिलीज और जिसमें 8 करोड़ 50 लाख फर्द हैं सर को दिया जाता है। वो लोग सब इसके अंदर कवर हैं। इस स्कीम के तहत 2879 अस्पताल और नर्सिंग होम भी रजिस्टर्ड है। सर, 85 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खिदमत हासिल की है। सिर्फ 2023-24 में इस स्कीम के तहत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है और रोजाना तकरीबन 6,000 मरीज इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। सर, अगर हम लोग कंपेयर करें स्वस्थ साथी को और पीएम जन आरोग्य योजना से तो देखा जाएगा सर कि सबसे पहले कि पीएम जन आरोग्य ये सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट पर मुबनी मर्दमशुमारी के मेयाद तक महदूद है, जबकि स्वस्थ साथी मगरबी बंगाल के तमाम परमानेंट रेसिडेंट्स को कवर करती है सिवाय उनके जो पहले से बीमाशुदा हैं। सर, चूंकि ये पुराने डाटा पर इन्हसार करती है, PMJAY में बड़े पैमाने पर अखराज की गलतियां होती है, जबकि स्वस्थ साथी बुजुर्ग खातून खाना के नाम पर एक स्मार्ट कार्ड जारी करती है जो शनाख्ती अमल को आसान और जामा बनाती है। PMJAY एक इंश्योरेंस मॉडल है जहां पर अक्सर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी किया जाता है, जबकि स्वस्थ साथी एक एश्योरेंस मॉडल है जहां पर किसी को महरूम नहीं किया जाता। सर, मजीद आगे बढ़े तो कौमी सेहत मिशन माने नेशनल हेल्थ मिशन मरकजी हुकूमत की जानिब से एक फंडिंग में बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सर, 60:40 60:40 स्कीम का ये शेयर होना चाहिए, लेकिन बंगाल को जुलाई 2023 में 280 करोड़ रुपया पिछला मिला था और 2023 से लेकर के 2025 तक 1 रुपया भी उसमें कहीं पर भी हम लोग को नहीं दिया गया और अपने पॉकेट से अभी जो बकाया हो गया है 2,720 करोड़, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। और स्टेट गवर्नमेंट पर ये पूरे अखराजात के इसका बोझ पड़ रहा है। सर, मरकजी हुकूमत फखर से दावा करती है कि डॉक्टर की आबादी और आबादी का जो रेशियो है वो 1:811 है, जबकि WHO का जो स्टैंडर्ड है 1:1000 है। लेकिन इसमें आयुष के डॉक्टर को 6,14,000 आयुष डॉक्टर को जोड़ लिया गया है। सर, थोड़ा सा खाली 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट ले लिए। आयुष और एलोपैथी डॉक्टरों को एक साथ गिनने से सर एक्चुअल रेशियो में बहुत फर्क आता है और आयुष की जो दवाएं हैं उसमें भी बहुत हैवी मेटल्स हैं जिसकी भी जांच होना जरूरी है पब्लिक में उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं आखिर में आता हूं सर, आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन सर। पब्लिक हेल्थ कोई रियायत नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है और इस हुकूमत की नाकामी करोड़ों अफराद को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। हुकूमत के दावों और वादों और उनकी अमली कारकर्दगी के दरमियान फर्क पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि मैंने आज बयान किया, मरकजी स्कीमों के लिए फंडिंग नाकाफी है, अस्पताल अमले की शदीद कमी का शिकार हैं, जहनी सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है और अहम स्कीमें बदनजमी की वजह से मुतासिर हो रही हैं। हमें झूठे वादे और गुमराहकुन डेटा नहीं बल्कि अमली इक़दामात दरकार हैं। मैं मरकजी हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि वो बंगाल मॉडल से सबक हासिल करे और मुल्क के अवाम के लिए पब्लिक हेल्थ के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए फौरी कदम उठाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप अभी तक थे कहां? श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी नहीं है। रमीला बेन बारा, रमीला बेन बारा,
धन्यवाद मान्य अध्यक्ष श्री। इस सदन में खूब ज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। आपके माध्यम से आपको प्रणाम करते हुए हमारा देश के यशस्वी प्रधान माननीय मोदी जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को और हमारे कल्याणकारी आरोग्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभापति जी, मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और वो सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। मोदी जी ने तब से लगातार, तब पहले से 2014 पहले, ये जो सामने बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका बजट कितना था? उनका बजट था 37,330 करोड़। और मोदी जी ने जब धुरा संभाली और लगातार बजट बढ़ता गया और इस साल का जो 25-26 वर्ष का जो बजट है वो बजट है 99,859.56 करोड़ माननीय अध्यक्ष के। उसका मतलब यही हुआ, ये सतत बढ़ता बजट हम सब देख रहे हैं। उतना ही नहीं, ये बजट के जरिए ये आरोग्य का कवच प्रत्येक देशवासियों को भी मिल रहा है। माननीय सभापति जी, समग्र देशवासियों उस बजट का लाभ भी उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दूरगामी दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमारे कई माननीय सदस्य जी कुपोषण के बारे में बोल रहे थे, माता मृत्यु दर के बारे में भी बोल रहे थे, नवजात शिशु के बारे में बोल रहे थे, लेकिन किसी ने उपाय सोचा खरा? मैं आज गौरव से कहूंगी, सदन में हमारा देश के प्रधानमंत्री बने तब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से वो चिंतित थे, वो गुजरात में भी काम कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद गर्भ में रहेला बच्चा, माता दोनों सुरक्षित रहे, बच्चा सुरक्षित जन्मे और साथों साथ वो सशक्त भी जन्मे। इसके लिए हमारी आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर और फीमेल हेल्थ वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला बच्चा सशक्त जन्मे, स्वास्थ्यमय जन्मे। इसकी चिंता हमारा आरोग्य मिनिस्टर, हमारी सरकार कर रही है माननीय अध्यक्ष। साथों साथ मिशन वात्सल्य अंतर्गत मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं माननीय सभापति जी। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत 12 करोड़ बच्चों को रसीकरण पण किया गया है। माननीय सभापति जी, मैं गुजरात से आती हूं और 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक जारी किया था। देश के सभी राज्यों का ये जारी किया था बच्चों के केयर करने के लिए, उनका हेल्थ की चिंता करने के लिए। लेकिन हमारी गुजरात सरकार ने जो काम किए हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री बच्चों के प्रति कितना समर्पित है, ये थोड़े आंकड़े में आपके यहाँ सदन में रखना चाहती हूँ। तो गुजरात सरकार ने नवजात शिशु और आंगनवाड़ी से लेकर 18 साल के बच्चों का, उन्होंने जो स्कूले जाते थे, नहीं जाते थे, पाठशाला में पढ़ते थे, मदरसा में पढ़ते, कहीं भी पढ़ते थे, उन लोगों का वो हेल्थ चेकअप करवाया, जो आज गुजरात सरकार कर भी रहे, प्रति वर्ष कर रहे।
और उन्होंने जो बच्चों का स्क्रीनिंग कराया गवर्नमेंट की जो मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से, माननीय सभापति जी, उनको जो चेकअप करा वो आंकड़े थे 1 करोड़ लगभग 61 लाख बच्चों का स्क्रीनिंग कराया। और स्क्रीनिंग बाद जो आंकड़े हमें आए, बच्चे स्कूल जाते थे, अठे कठे थे, उनमें कोई तकलीफ नहीं थी, माँ बाप को भी कोई उसमें दिक्कतें दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जब स्क्रीनिंग किया, हेल्थ चेकअप किया और जो आंकड़े आई, जो हमें उनमें डिजीज दिखाई दी, वो बहुत चिंताजनक है। और उसमें जो बच्चे चेकअप किया उनका मैं आंकड़ा यहाँ रखना चाहती हूँ। जो 206 किडनी के बीमारी दिखाई दी तो उस किडनी का ट्रांसप्लांट करने का काम किया। 37 लीवर की बीमारी आई तो उनका ट्रांसप्लांट। 3260 कॉन्क्लियर इम्प्लांट की तकलीफ दिखाई दी। 211 बोन मेरो ट्रांसप्लांट। 20,981 किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट। 11,215 कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट। और माननीय सभापति जी 1,67,379 हृदय रिलेटेड बीमारी। हम ये बता सकते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल हेल्थ दिखाई देते थे, ये सेंटर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों का ये काम करने का भेजा है। लेकिन गुजरात ने जो कामगिरी अति प्रशंसनीय की, सेंट्रल ने राष्ट्रीय अवार्ड भी गुजरात को दिया है। और आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि और जो हमारा मोदी सरकार जो काम कर रही है, मैं ट्राइबल एरिया से आती हूँ, मैं कुछ बिंदु रखना चाहती हूँ माननीय सभापति जी। सिकल सेल एनीमिया, हमारा यशस्वी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ज्यादातर ट्राइबल लोगों में दिखाई देता है। देश आजाद हुआ, ये जो बीमारियां हैं कई सरकारों आई लेकिन अनदेखा करा, ये बीमारियां बढ़ती गई। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री ने, हमारे आरोग्य मिनिस्टर माननीय नड्डा जी ने जो ट्राइबल बहुमूल्य राज्यों हैं, बहुमूल्य बस्ती वाले राज्यों हैं, उनका चिन्हित करके उनका सिकल सेल एनीमिया मिशन तहत उनका टेस्टिंग करवाया। माननीय सभापति जी लगभग 5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ। आपको जानकर हैरानी होगा, ये चेकअप कराने के बाद, टेस्टिंग कराने के बाद उसमें कितने लोग इफेक्टेड हुए? 2 करोड़ आदिवासी लोग इफेक्टेड हुए। यदि उसका स्क्रीनिंग नहीं होता, उसका टेस्टिंग नहीं करवाते, तो वैसे ये रोग जेनेटिकल है, ये वारसागत है, चेपी रोग नहीं है, लेकिन उनका रोकथाम अति आवश्यक है। तो ये उनको कार्ड जारी करा गया है। आने वाले दिन में उन लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कराया जाएगा। ये प्रशंसनीय कामगिरी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। आपके माध्यम से मैं देश के प्रधान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा काम माननीय सभापति जी, आज सुबह में क्वेश्चन भी आया था कैंसर रिलेटेड। कैंसर एक असाध्य रोग है, जिसको कैंसर होता है वो अपनी जात को मानते हैं कि मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका उपाय ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैंसर को जानते नहीं, मानते नहीं वह सुविधा पहले थी। आज तो मैं धन्यवाद करूंगी कि हमारा वेलनेस सेंटर इतने बड़े गांव हर एक एरिया में हो गया है, तो उनको नजदीक में सुश्रुता प्राप्त हो, उनकी दवाइयां प्राप्त हो, उनका टेस्ट की सुविधा हो। तो प्रत्येक अस्पतालों में कैंसर केयर यूनिट की जो स्थापना करने वाले हैं, लगभग 372 अस्पतालों में तो उसका हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में उसका बजट में जोगवाई है कि प्रत्येक जिला कक्षा की हॉस्पिटलों में ये कैंसर की सुविधा
प्राप्त होगी, कीमोथेरापी की सुविधा प्राप्त होगी, तो मैं मानती हूँ कि प्रत्येक गरीब लोगों की ये सुविधा प्राप्त होगी। उतना ही नहीं, ये जो जन औषधि केंद्र है उनका केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाई भी प्राप्त हो, ये सुविधा इस बजट में किया है। माननीय सभापति जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के प्रति जितना समर्पित है, उतना ही गरीबों की सस्ती दवा प्राप्त हो, सुलभता थी प्राप्त हो, और इसलिए उन्होंने जन औषधि केंद्रों जन औषधि के केंद्रों से प्राप्त हो, तो इसलिए उन्होंने 7 मार्च जन औषधि केंद्र डे उसका सेलिब्रेट किया, और साथों साथ जानकारी भी दी कि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि जन औषधि केंद्र से मिलने वाली दवा गुणवत्तापूर्वक है और उनको सस्ती भी है, तो सभी लोग वहां से खरीदे। वही भी प्रोविजन इस बजट में भी किया है, जानकारी भी दी है। माननीय सभापति जी, बोलने का तो बहुत है। आरोग्य में सरकार ने बहुत काम किया है, गरीबों के लिए भी काम किया है। आयुष्मान कार्ड न भूतो न भविष्य दी, गरीबों के लिए बहुत उपयोगी है। सीनियर सिटीजन के लिए प्रोविजन किया है, गिग श्रमिकों के लिए भी प्रोविजन किया है। तो मैं आरोग्य मिनिस्टर हमारे नड्डा जी बैठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विकसित भारत आने वाले दिनों में हेल्थ रिलेटेड देश आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे, ये बात कह के मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। The next speaker, Neeraj Danki. You have 27 minutes. I'm sorry, 12 minutes. थैंक यू सर। उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर सदन में चल रही चर्चा के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सबकी यही मान्यता है कि एक स्वास्थ्य हजार नियामत, अर्थात स्वास्थ्य मनुष्य की पूंजी है। आदमी चाहे लाख दौलतमंद हो जाए, धनी हो जाए, अगर तंदुरुस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई आशीर्वाद, कोई दौलत उसके मुकाबले नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य बजट पर इसीलिए जब चर्चा होती है तो देश को और सरकार को जो है पूरी तरीके से जो ध्यान सरकार का होना चाहिए वो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ही होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कई सुधार लाने की भी आवश्यकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि दवाइयां और जीवन रक्षक औषधियां जो है आज की तारीख में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, वो आम आदमी के और गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो गई है। इस वजह से जो है स्वास्थ्य लाभ उनको नहीं मिल पाता, गरीब लोगों को। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ बजट वृद्धि जो है वही प्रणालीगत सुधार नहीं ला सकती। स्वास्थ्य बजट में 11% वृद्धि की गई है और 1,03,851 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत PMJY व्यय भी शामिल है। इसलिए जब हम समायोजित करते हैं तो ये वास्तविक वृद्धि जो है वो 9% के लगभग है, और ये 140 करोड़ लोगों के देश के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इस वृद्धि के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में जिस रूप में स्वास्थ्य सेवा आवंटन जो है वो 2% से भी नीचे रह गया है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 की है उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2.5%, उस लक्ष्य से बहुत दूर है। इसलिए यह बजट भी जो है ये स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने में ये कहूंगा कि विफल हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं में जब 2024-25 की बात करते हैं तो उसमें व्यय में भी 11% की गिरावट आई, और उस गिरावट की वजह से जो प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य के हैं उसमें अक्षमताओं और धीमी कार्यान्वयन को उजागर किया गया है। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ साथ अनगिनत चुनौतियां भी शामिल हैं, और सबसे बड़ी जो चुनौती देश के सामने है वो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को पाटने की आवश्यकता है। देश में जो 65% अस्पताल हैं वो शहरी क्षेत्रों के अंदर है, जबकि देश की 70% आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आती है। ऐसे में
एक जिसे कहेंगे कि कमी जो है ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नर्सों की बहुत अधिक है, उसको कम करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और WHO के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है 1/1456 है, जबकि मानक जो है, वैश्विक मानक जो है वो 1/1000 है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ग्रामीण भारत जिसकी 70% आबादी है, वहां अस्पताल के बेड्स अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 40% बेड्स है। और इसमें हम अगर देखते हैं मानक जो जरूरत है वो आवश्यकता 1000 व्यक्तियों पर 3.5 बेड्स की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर हम कमी अगर देखते हैं देश में ओवरऑल बेड्स की, तो वो कमी लगभग जो है 2.5 मिलियन बेड्स की कमी है। वो कैसे पूरी हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब बजट में एम्स और शहर केंद्रित चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई हो, ऐसे में ग्रामीण भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CSC, इसमें पर्याप्त धन नहीं मिला है। आज की परिस्थितियां CSC और PSC की हो गई है। डॉक्टर्स नहीं है, वहां एम्बुलेंस नहीं है, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, बेड्स नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हैं तो MRI जैसे जो है लाभ वो कैसे ग्रामीण क्षेत्र को मिल सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र परिस्थितियों से जो है देश गुजर रहा है। ऐसे में जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा की और जो स्वास्थ्य लाभ के लिए जेब से खर्च होने वाले खर्च की व्यय की जब बात करते हैं, तो भारत के कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 62.6% जो व्यय है वो स्वयं से करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर देखा गया है कि चिकित्सा बिलों को भरते भरते ही आदमी गरीबी की ओर बढ़ता है। पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर जिक्र किया कि गरीबी स्वास्थ्य सेवाएं लेने की वजह से भी बढ़ रही है। ऐसे में जो जरूरत थी बजट में उन नीतिगत हस्तक्षेपों की जिसकी जरूरत थी वो उस पर पूरा नहीं किया गया, वो नजरअंदाज किए गए हैं। अन्यथा ये जो बोझ था इसे किसी ना किसी रूप में कम किया जा सकता था। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पे GST को 18% से अगर 5% किया जाता, वो चूक रही है और ये कवरेज विस्तार इससे हो सकता था। एक पत्र भी इस संदर्भ में मैंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है। इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि अगर सरकार ध्यान देगी तो बहुत बड़ा लाभ देश को होगा। धारा 80D के अंतर्गत भी जो कटौती 25,000 से 50,000 की जानी चाहिए थी, वह बढ़ावा भी मेरे ख्याल से एक खोया हुआ अवसर के रूप में ही देखा जा सकता है। हम लोग बात करते हैं अगर आयुष्मान भारत में PMJAY की, तो बजट में 28.9% की वृद्धि है, उसका स्वागत है। लेकिन निजी अस्पताल जो है वो प्रतिपूर्ति जो है रिएम्बर्समेंट की कमी की वजह से मरीजों को दाखिल करने से ही मना कर देते हैं और वो जो है इसका लाभ गरीब मरीजों को नहीं मिल पाता है। अगर वास्तव में ही कुछ काम करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो वैसा काम करके दिखाना होगा जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय में उन्होंने करके दिखाया। चिरंजीवी योजना का लाभ जो है गरीब जनता को मिला। गरीब जरूरतमंद मरीज को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का काम कांग्रेस की उस सरकार ने उस समय किया। और यही नहीं, कोविड प्रबंधन भी ऐसा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसमें भी उनकी बुरी प्रशंसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस समय थे उनकी की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोविड प्रबंधन जहां राजस्थान में हुआ, हिंदुस्तान में कोविड प्रबंधन में कहीं ना कहीं खामियां रही, कहीं ना कहीं चूक रही, वरना हालात इस तरह के नहीं होते। मैं जिक्र करना चाहूंगा पश्चिमी राजस्थान के उन जगहों का जहां से मैं आता हूं, जालोर, सिरोही, पाली, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक हालात उन क्षेत्रों की है। कुछ बड़ी अगर बीमारी होती है तो पास के क्षेत्र में गुजरात के अहमदाबाद, पालनपुर, डीसा में जाना पड़ता, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े लंबे चौड़े बिल बनते हैं और उन बिलों की पूर्ति करते करते इंसान अपने खेत खलियान, अपने जमीन जायदाद को बेचने पे मजबूर होता है या उसे बड़ा ऋण लेना पड़ता है। ऐसे हालात वहां पर है जहां हम 25 वर्षों के बाद आजादी के अमृत काल की बात करते हैं। अमृत अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो है जहर बरसाने का काम भी नहीं होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे
क्षेत्र में जहां गरीबी ज्यादा है, वहां जहां हालात किस तरह के बने हुए, पिछड़ापन, गरीबी और जहां शिक्षा का भी अभाव है, वहां कहां से वो पैसा लाएगा उन बड़े बड़े बिलों को भरने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जब बात करते हैं ऐसे में तो 70 सालों की बात करते हैं। 10 साल आपको मिले, 3 टर्म आपको मिले, 11वां साल चल रहा है, 10 साल में उन कमियों को आप पूरी कर देते अगर उन 70 सालों की बात करते हैं। बुनियादी ढांचा अगर स्वास्थ्य क्षेत्र का किसी ने बना के दिया तो कांग्रेस ने बना के दिया है। उसी बुनियादी ढांचे पर आज हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं आने वाले कल की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां जालोर, सिरोही और पाली जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा का भी वहां पे अभाव है, ऐसे में हमारे पास सुविधाओं से लेस अत्याधुनिक ट्रोमा केयर सेंटर नहीं है। मेरा केंद्र आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सिरोही, जालोर, पाली क्षेत्र में तत्काल आधार पर एम्स जैसे अत्याधुनिक केंद्रीय उत्कृष्टता वाले संस्थान की स्वीकृति प्रदान करें और उसके लिए बजट की आवंटन की भी आप जो है स्वीकृति करें, तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं तो मेडिकल सीटें बढ़ाना भी जो है वो समस्याजनक है। 10,000 सीटें इस वर्ष और उसको बढ़ा करके 5 सालों के अंदर 75,000 सीटें करने का जो दावा है, मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार जो है वो मेडिकल कॉलेजेस और खोलने जा रही है या निजी जो है मेडिकल कॉलेजों की इसकी अनुमति मिलेगी, यह स्पष्ट करने की जरूरत है। वरना 75,000 जो है पद सीटें बढ़ तो जाएंगी, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ की पूर्ति है वो पूर्ण होना संभव नहीं है। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में जो है चिकित्सा शिक्षा वो केंद्रित है दक्षिण भारत की तरफ, लेकिन आज भी सुविधाओं का अभाव जो है यहाँ, जब हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो आज भी कई सुविधाओं की कमियां यहां पर हैं। यहां जब क्षेत्रीय असमानता की बात आएगी तो ये स्वास्थ्य सेवा की असमानता और ज्यादा गहराती चली जाएगी। ऐसे में हम लोगों को चाहिए था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई सहायता इसमें दी जानी चाहिए थी। मेडिकल शिक्षा को लेकर के भी जो कुछ ऋण मुक्त बजट की बात होती, सब्सिडी भी नहीं दी गई है, जबकि निजी कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस के हालात किस तरह के, 60 लाख से 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा की फीस वसूली जाती है, वो कहां से कोई गरीब व्यक्ति ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगा। हम बात करें अगर कैंसर के उपचार की तो विकेंद्रीकरण करने के लिए जिला स्तरीय कैंसर देखभाल केंद्रों की घोषणा तो की गई है, लेकिन प्रशिक्षित विशेषज्ञों और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं और निदान क्षमता के बिना ये केंद्र जो है वो बेकार रहेंगे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां जब कैंसर के हम लोग बात करते हैं 3 दवाओं पर कर कटौती की, कर कटौती से ही सब कुछ नहीं होगा। कैंसर का पता ही कई बार जो है एन वक्त पर पता चलता है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि देश के अस्पताल, कोई भी अस्पताल सक्षम नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है अस्पताल। एन वक्त के ऊपर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं और कैंसर का मरीज जो है वो मौत को धीरे धीरे गले लगाता है। ऐसे हालात कैंसर पेशेंट के बन जाते हैं। तो इसके लिए ये चाहिए कि प्रारंभिक चरण में ही कैंसर के निदान का पता कैसे लगे, उस पर जो है वो अधिक एक बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए था, ताकि कैंसर रोगियों को जो है मौत के मुंह से बचाया जा सके। हम लोग अगर बात करते हैं जिला अस्पतालों के लिए कोई पीपीपी मॉडल होना चाहिए था। किसी बड़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी की घोषणा भी नहीं की गई है, वो भी एक कमी रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे में कई ऐसे, एम्स की हम बात करते हैं, एम्स में अनगिनत रिक्त पद पड़े हुए हैं। आज अगर बात करते हैं एम्स में पदों की, तो दिल्ली में 34% संकाय के रिक्त पद अभी भी पड़े हुए हैं, और यही हालात अन्य जो है पूर्ण रूप से संचालित एम्स और एम्स जैसी संस्थाओं के भी इसी तरह के हालात हैं। लगभग 60% तक संकाय के पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक विशेष रूप से कहना चाहूंगा, एनटीए जो नीट और CUIT जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए व्यापक जिम्मेदार है, लेकिन एनटीए एक बहुत ही छोटा संगठन है और इस कमजोर संगठन के अधिकांश कार्य जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसे में ज्वलंत जो उदाहरण नीट के पेपर लीक का, वो भी यही कारण है। ऐसे में सरकार को अपनी ही संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा को सीमित करना चाहिए
और उन संस्थानों को विकेंद्रित करना चाहिए जहां राज्य बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य अपनी सीट जो है वो आवंटन प्रवेश के लिए देती है। इसलिए ऐसे में केंद्र से मेरा निवेदन रहेगा उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कि नीट जैसी परीक्षाओं का आयोजन ही बंद कर देना चाहिए और विकेंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली जो है उसे चुना जाना चाहिए। सरकार स्वयं सक्षम होनी चाहिए इस कार्य के लिए। उपसभापति महोदय, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कुछ सुधारात्मक सुझाव हैं जिसमें स्वास्थ्य बजट में जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाए जाने की बात है। सीएसआर फंड्स को जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस्तेमाल करने की बात है। चिकित्सा आयोग जो है उसमें संसाधनों सहित मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरीके से डॉक्टर्स की और नर्सेस की अधिक से अधिक भर्ती जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको अच्छी सैलरी दी जाए ताकि शहरी क्षेत्र से उनका जो लगाव है वो कम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर बैठने के लिए जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक अपने हमें जो है आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन पहुंचाना चाहिए। इसी तरीके से जो है ई संजीव सर कंक्लूड करूंगा बस 2 मिनट सर। ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी उपयोग बढ़ा करके टेलीमेडिसिन सुविधा का भी विस्तार किया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों से मैं समझता हूं कि एक बेहतर हम जो है स्वास्थ्य देश को दे पाएंगे। उपसभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा हेल्थ इज द बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। स्वास्थ्य तन, मन और आत्मा का संतुलन है। हमें इस बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना है, इस संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। यही देश में स्वास्थ्य की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। The next speaker, Milid Murali Jirora. Sir, you have 8 minutes. Thank you, sir. My health is good. सर, मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में हमारे केंद्रीय बजट हेल्थ केयर बजट को उसमें 11% की वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और हमारे बहुत ही डायनामिक मंत्री नड्डा जी, उनके पूरी टीम, हमारे प्रताप राव यादव जी भी है, अनुप्रिया जी भी है, उनको बहुत बहुत मैं बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं। Sir, few things which I am very pleased about in the budget. One is the commitment to increase medical seats, 10,000 medical seats next year, and 75,000 medical seats over 5 years, which I think will significantly improve the healthcare infrastructure in our country. मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, उस ट्रेंड का नाम है फास्ट कॉमर्स। फास्ट कॉमर्स की वजह से गिग वर्कर्स जो है, गिग वर्कर्स बहुत उनकी वृद्धि हो रही है। और नड्डा जी, आपने जो आयुष्मान भारत को गिग वर्कर्स तक एक्सटेंड किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। सर, मैं अपना बजट ये स्पीच एक ही विषय पर फोकस करना चाहता हूं। मेरे पहले कई माननीय सांसदों ने कम्युनिकेबल डिजीजेस पर जोर दिया। प्रिवेंशन इज सर्टेनली बेटर देन क्योर। मैं एक ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर अपना बजट की स्पीच पर फोकस करना चाहता हूं। सर, recently the Prime Minister launched a very positive campaign to curb, to spread awareness about the growing obesity trend in India, and I'm very grateful to the government for doing that. I think one thing we have to be extremely aware of, आज यदि हम अमेरिका का उदाहरण लेंगे, अमेरिका में ओबिसिटी यह केवल एक स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बड़ा आर्थिक क्राइसिस है अमेरिका में। और भारत के लिए अमेरिका से क्या लेसन्स है, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। आज अमेरिका में 42%, staggering 42% of adults and 20% of children in the US are obese. And this is a sharp rise of 30% from just 2 decades ago. Obesity-related illnesses in the US today are accounting for $1.4 trillion annually, which is 7% of the country's GDP.
In fact, 1 in 3 deaths in the US, if you take all deaths, accidents, diseases, 1 in 3 deaths can be linked to obesity-driven diseases like diabetes and heart disease. Sir, it's very clear for India, if we do not act now, we could potentially have an obesity crisis in our country. There are few statistics, Naddaji, I would like to highlight. In just 5 years in India, obesity among men has risen from 19% to 23%. Among women, from 21% to 24%. This is as per the National Family Health Survey data. कई लोगों ने malnourishment के बारे में बात की. Malnourishment, the government is doing an exceptional job. That is one extreme. We get to see that primarily in rural areas, where almost a third of children under the age of 5 have stunted growth, are underweight. But the other extreme, which we see in cities especially, is obesity among children. Today, overweight children have increased by 60% in the last 10 years. And by 2030, it's estimated that obesity-related healthcare costs, in America, that number is 7% of GDP. In India, in 2030, that number could be as high as 1.6% of our GDP, or 7 lakh crore rupees annually. इसलिए obesity मैं मानता हूं कि एक स्वास्थ्य की समस्या नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चुनौती है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो बढ़ते हेल्थ केयर जो कॉस्ट है और घटती प्रोडक्टिविटी भारत की लॉन्ग टर्म आर्थिक प्रगति को अफेक्ट कर सकती है. अमेरिका का उदाहरण मैंने इसलिए एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका ने कई सालों से, कई दशकों से ओबिसिटी को एक प्रकार से इग्नोर किया. और आज मैं 2 देशों का उदाहरण देना चाहता हूं, सिंगापुर और जापान, who are proactively fighting obesity and ensuring that nobody in their country is obese. I'd like to share some initiatives that they've launched. सबसे पहले जो नई सरकार है यूएस में, नड्डा जी जो हेल्थ सेक्रेटरी है, कुछ समय पहले उनको कंफर्म किया गया, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा कि his mandate is to prevent obesity in America, and they have a slogan there called MAGA, Make America Great Again. His campaign is called MAHA, Make America Healthy Again. Few initiatives that they've announced. One is to impose hefty taxes on sugary drinks. Second is calorie labeling in restaurants to help consumers make more informed and healthier choices. Their school nutrition programs, very, very stringent audits that they are implementing. But Japan has some very interesting policies. जापान में एक लॉ है, कानून है, मेटाबॉलिज्म लॉ. उस कानून 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए रेगुलर कमर माप करना उन्होंने अनिवार्य बनाया. Can you imagine? 40 years and above, regular waistline measurements have become mandatory. They are mandating that companies in the workplace must implement healthier choices. Japan has another big problem. They have an aging population. So the government has massive interventions, lifestyle interventions, to ensure that people get married, people have children, but also to ensure that workplaces are healthier. But I think the most stringent regulations are from a small country, Singapore. Singapore has recently completely banned advertisements on high sugar products that are targeting children. They have, Naddaji, if you remember once during a question, I had raised a point, उनकी जो FSSAI equivalent है, उन्होंने एक न्यूट्री ग्रेड लेबलिंग सिस्टम स्थापित किया है फॉर पेरेंट्स. जब वे कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं, किराना स्टोर में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, sometimes parents don't know what is a healthy product, what is unhealthy product. They think a fruit juice, which is actually a sugary drink, is a healthy drink for my child. They have mandated a nutri labeling, simple, A to D, A, B, C, D. For example, a cola drink will be labeled D, very large D letter, so the parent will know in 1 second that is an unhealthy product. A freshly squeezed juice, for example, squeezed that morning, that will be labeled A, the parent will know that is a healthy product. And in between will be B and C.
Therefore, my suggestion would be few very bold reforms to align with the Prime Minister's vision to ensure that India is obesity free in the coming years and we don't have the health crisis that we have in the US. Very, very briefly. One is, I think, an increase on taxes on sugary drinks, ultra-processed foods to curb and to reduce consumption. Secondly, getting FSSAI to have mandatory front-of-pack warning labels on high sugar, high salt, and trans fat foods which cause obesity. Thirdly, in primary healthcare centers, routine body mass index and metabolic health screenings to know if a child is developing obesity at an early age. Fourthly, I think the time has come, Nadda ji, that we must consider a complete ban on advertisements of high fat and high sugar foods that are targeting children. मेरा मानना है कि this is something which maybe the entire house can agree on. सर, आज विश्व में लोग क्या कह रहे हैं कि sugar is the new tobacco. जिस प्रकार से 20 साल 30 साल पहले tobacco companies used to target young people to sell them cigarettes, today that is what is happening with sugary foods. The last point, midday meal scheme is doing exceptionally well. Government of India is ensuring that it's implemented well. Perhaps we can also do regular audits to ensure that the nutritional content is effective. I would only like to say one last point, that भारत की जो सबसे बड़ी जो asset है, वो हमारी young workforce है. Europe, US, China, Japan, all countries are facing an aging population. Just like education is very important, skilling is very important, making sure that they are healthy, the next generation are not stunted, they are not malnourished, they are not obese. This, in my opinion, is very critical. I have no objection to importing the best American technologies that help our workforce. But I'm against importing American lifestyles and their obesity epidemic. And that is something we have to be very, very careful. I think if these steps are implemented, these will align with the Prime Minister's vision and ensure that our future generation is healthy for the years to come. Thank you very much. The next speaker, Dr. Fauzia Khan. Madam, you have 3 minutes. सर, थैंक यू वेरी मच. मैं महिलाओं के स्वास्थ्य तक अपनी बात को सीमित रखना चाहूंगी. सर, भारतीय संस्कृति में दिव्य नारी शक्ति, इस पे श्रद्धा अटूट तरीके से रची बसी है. सरकार जिस पर अक्सर इसको संबोधित करती है, संदर्भित करती है, जहां नारी की पूजा अनेक दिव्य रूपों में की जाती है, वही महिलाओं का इंसान के रूप में उपेक्षा ही की जाती है. सर, नारी शक्ति है, जननी है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, साक्षी है. आज नारी और शक्ति एक दूसरे के निकट तो कहीं भी नहीं नजर आती है. सर, इनका सार्थक संगम तत्काल आवश्यक है. महिला स्वास्थ्य के संबंध में कई मौलिक समस्याएं इस वर्ष के अर्थसंकल्प में भी दुर्लक्षित है. सर, शक्ति के रूप में नारी दुर्लक्षित है. Violence against healthcare professionals, especially women, remain alarmingly high and compromise health services. सर, जननी के रूप में नारी की सुरक्षा की सशक्तिकरण का सरकार दावा करती तो है, पर MMR जरूर बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कम हुआ है, परंतु कुछ राज्यों में ये संख्या काफी चिंताजनक है. जैसे सर, मध्य प्रदेश में 173, असम में 195, तो अगर हम अलग अलग राज्यों के आंकड़े देखेंगे तो चिंताजनक है. सर, माता के स्वास्थ्य की परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ. Emergency medical transport in rural and tribal areas is a serious issue. Mental health post childbirth, particularly postpartum depression, remains largely unaddressed, exacerbated by limited policy focus. Sir, the national mental health program, there are cuts in the budget. अर्थ संकल्प ने लक्ष्मी को जो दुर्लक्षित किया है, तब सभी दुर्लक्षित हो रहा है. Insufficient budgetary allocations continue to be the trend, sir.
The National Health Policy of 2017 recommended a combined health expenditure of 2.5% of the GDP by 2025, yet the current allocation stands at 0.27% of the GDP. Moreover, allocations as a percentage of GDP and total budget have steadily declined since 2022, undermining health infrastructure and service delivery. अन्नपूर्णा भी दुर्लक्षित है. एनीमिया 14 से 49 इयर्स के बीच में बढ़ोतरी हो रही है, 51.5% in 2015-16 to 57% in 2019-21. सर शास्त्री के प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन भी दुर्लक्षित है. Malnutrition under 5 years. So please give me just 1 minute. Malnutrition under 5 years, stunted children increasing from 35.5% in 2021 to 37% in 2024. In 2024, 6 children were wasted and 17% were underweight. Although HPV vaccine was a highlight in pre-election budget, there has been no follow-up action. Indigenously developed HPV vaccine remains outside the universal immunization program with no clarity on dedicated funding for its nationwide rollout. Sir, at the end, I'll only read out my recommendations. Increase budgetary commitment to reach the target of 2.5% of GDP expenditure in 2025. Strengthen health infrastructure. Improve antenatal and postnatal services and swift action on HPV vaccine rollout. India needs to strengthen its nursing care to match global standards. Medical colleges are increasing, but what about specialty faculty? They are not there. So we are compromising on the quality of medical education. We have to focus on that. Our commitment to Nari Shakti must reflect in robust budgetary provision. Communities and countries and ultimately the world are only as strong as the health of their women. Thank you, sir. The next speaker, Srimati Sudha Murthy. Madam, you have 3 minutes. I don't have. Sir, thank you for the time. I want to congratulate Naddaji and our Prime Minister for Janaushadhi, because I work in rural area and in the city also. It has helped a lot to poorest of the poor people. I only request that it should be extended in a remote and rural area. Sir, one may have money, robust health, beauty, everything, but if one is not mentally sound, then they will never enjoy life. Mental illness is one of the major factors today. It's prevailing in our country in a different stages of life. When children are young with the digital devices, addiction, and when women become mothers, they have post-delivery depressions, old age, loneliness, depression, in between middle age, there's some other depression. So people look down upon mental illness and the awareness is very poor. Because of that, there are many people who suffer, but they don't even express. In Janaushadhi, I found out even the depression tablets have become extremely cheap. And in my work, I found out that helped a lot, less than a cup of coffee, I tell that. NIMHANS in Bangalore is a central government institute for health, and it's extremely well known. And many people from our neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, people don't get into taboo. These things should come out and there should be a program. Thank you very much for giving me this time. On the behalf of all those patients with whom I work, they cannot express their gratitude to our Prime Minister and Naddaji because they have made mental depression tablets so cheap. Many people have gone back to the normal way of living without even knowing that they had a mental depression. Thank you. Jai Hind. Next speaker, Sri Praful Patel. He is not present. The next speaker, Deepak Prakash. Sir, you have 10 minutes. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। साथ में मैं दिल की गहराई से मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने सदन के नेता
और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री सम्मानित नड्डा जी को, उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। महोदय, हमारे शास्त्रों के अनुसार आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वाद साधनम, अर्थात स्वास्थ्य परम धन है और अच्छे स्वास्थ्य के हर अच्छे काम पूरा किया जा सकता है। और इसको धरातल पर अगर किसी ने उतारने का काम है तो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। महोदय, इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का तो उपलब्धियों का भंडार है। अगर चर्चा की जाए तो 3-4 दिन तक ये चर्चा चल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोरोना का कालखंड हो और सबसे अच्छा मैनेजमेंट दुनिया में अगर किसी देश ने दिखाने का काम किया तो भारतवर्ष था, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाया गया। महोदय, चाहे वैक्सीनेशन का सवाल हो, चाहे घर में बैठे हुए लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी ने पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प देने का दिलाने का काम किया। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो जमीन तक पहुंचने का काम किया और उनके लिए सेवा का संकल्प लेकर काम किया। महोदय, चाहे आधारभूत संरचना बढ़ाने का हो मेडिकल क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता चला गया। महोदय, चाहे डॉक्टर हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ते चला गया। महोदय, चाहे मेडिकल टूरिज्म की बात है इस बजट के अंदर, दुनिया के आज विकासशील देश के जो बीमार से ग्रसित लोग हैं वो भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं, भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। महोदय, चाहे वो बजट बढ़ाने का हो, 2013-14 से 14 में जब उनकी सरकार थी उससे 167% ये सरकार ने बढ़ा करके गरीब और मध्यम वर्गों के प्रति संकल्प दर्शाने का काम किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने मंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। महोदय, चाहे प्रसव काल में महिलाओं के लिए योजनाओं बनाने का सवाल हो, चाहे एम्स बढ़ाने का सवाल हो, पहले के समय में देश के विभिन्न जिलों से विभिन्न स्थानों से सांसदों के घर में मरीज आते थे एम्स में इलाज कराने के लिए। आज 23 एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के देखरेख में आगे बढ़ रहा है। मोदी, ये है कमाल, ये है मोदी मैजिक। महोदय, मेडिकल कॉलेज आज 259 जिलों में आज वो कार्यरत है। ये कोई छोटी बात नहीं है महोदय। आज मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं और साथ साथ मेडिकल कॉलेज में छात्र की संख्या भी बढ़ रही है। इसके लिए मैं विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी सराहना करना चाहता हूं। पूरी दुनिया आज, खासकर WHO का जो रिपोर्ट है, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में जर्नल में जो लेख आ रहे हैं, भारत को आज हेल्थ सेक्टर में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। महोदय, ऐसे कई उपलब्धियां हैं, समय का अभाव है। जब हमारी उपलब्धियां नहीं, ये देश की उपलब्धियां हैं, और जब इस देश की उपलब्धियों पर कुछ हमारे मित्र कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग, हमारे विपक्ष के लोग जब आलोचना करते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि देने का काम करे। महोदय, मैं वो दिन भूल नहीं सकता हूं, 23 सितंबर 2018 देश के इतिहास में वो स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम दिन था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल, सिद्धू कानू का कर्म भूमि, तिलका माझी का कर्म भूमि। आयुष्मान भारत जिसे हम PMJAY का अगर लॉन्च किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची की धरती पर किया, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर करने का काम। और बोलने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, फक्र भी हो रहा है। उस वक्त के कार्यकाल के हमारे मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी तो आज यहां पर उपलब्ध। महोदय, पहले क्या होता था, पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी और जब बीमारी आती थी तो उसके आपदा आता था और वो अपने जमीन को, अपने घर को, अपने मकान को गिरवी रखता था। सोना चांदी अगर है तो वो भी गिरवी होता था। उतनी बात तो छोड़ दीजिए महोदय, अगर उसके यहां बर्तन है तो वो भी गिरवी चला जाता था। और आज वो फक्र के साथ आयुष्मान कार्ड लेकर के जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो मोदी कार्ड कहलाता है, मोदी कार्ड कहलाता है। ये है मोदी कमाल। दोस्तों, मोदी मैजिक जिसको हमारी दीदी कह रही है। महोदय, सौभाग्य से ये भारत के 50 करोड़ से अधिक लोगों के हर साल 5 लाख की गारंटी देता है। अब तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आपने नई घोषणा हमारे भारत की सरकार ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो उसमें हमारे मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी भी बहुत अंतरात्मा से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अब 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, अब वो बेसहारा नहीं है, अब वो बेसहारा नहीं है। उनको सहारा देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब उनको भी वो गारंटी मिलेगी 5 लाख की। हाँ, 70 साल के ऊपर। साथ ही साथ हमारे जो वर्कर हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। महोदय, मजदूरों की भी चिंता अगर करने वाला है तो भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। महोदय, अब हमारे कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं, हमारे उपलब्धियों पर ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उनको थोड़ा अंतरात्मा की आवाज भी उनको उठाने के, झांकने की, कहने का मैं नसीहत देता हूं। क्या हो गया था 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, तो चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, 14 साल की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग हो, उसको नसबंदी कराने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया था। यह उनकी उपलब्धि थी। जोर जुल्म पर, वो जबरदस्ती पर नौजवानों को, बेरोजगारों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जबरदस्ती अगर कोई ढंग से नसबंदी कराने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। आप, हम तो बच गए। आप अपना कुर्सी देखिए प्रमोद जी। आप कहाँ बैठे हैं आज, हम कहाँ बैठे हैं प्रमोद। और उतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उतना ही नहीं, जब कोरोना के कालखंड में जब वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ तब इन्होंने देश को भ्रमित करने का काम किया। भ्रमित करने का काम किया था। कभी इसको सैफरन वैक्सीन के नाम से, कभी मोदी वैक्सीन के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम किया था। और भ्रमित ही नहीं करने का काम किया था, सुबह प्रेस में अलग बातें कहते थे और रात में जाकर के चुपचाप चादर और कंबल ओढ़ करके वही वैक्सीन लेते थे महोदय, वही वैक्सीन। अब टीएमसी दीदी बैठी हुई है। अरे बंगाल में क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में हमारी महिला बहन डॉक्टर के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया और किस प्रकार से हत्या की गई, पूरा देश ने देखा है बंगाल के अंदर क्या हुआ। और अरे आप मत बोलिए महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, 630 करोड़ रुपए का घोटाला, हेल्थ घोटाला अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में करने का काम किया। महोदय, आज बड़ी बड़ी बात कह रहे, ऊंची ऊंची आवाज कह रहे, थोड़ा अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भारत सुपर पावर, फार्मा में सुपर पावर बन चुका है महोदय।
अमेरिका में जितनी दवाओं का टेबलेट की खपत होती है, तो हर तीसरा टेबलेट भारत में बनता है, भारत में बनता है महोदय। अमेरिका में जितनी जेनरिक दवाओं की खपत होती है, उसमें 40% जेनरिक दवाएं भारत में बनी होती है, भारत में बनी होती है। 1969 में दुनिया के बाजार में फार्मा उद्योग में जो हिस्सेदारी थी वो 5% थी। आज 2020 में 85% हिस्सेदारी भारत की है महोदय, भारत की है महोदय। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का इसमें उल्लेख किया गया महोदय, कोई छोटी बात नहीं। आज देश के विकासशील देश भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं और भारत की सरकार उसको दोनों हाथों से उनको बुला रही है और उनको चिकित्सा की उपलब्धता कराने का काम कर रही है महोदय। महोदय, भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने हील इन इंडिया कार्यक्रम लेकर के आई है। इसके तहत कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। एक तरफ तो विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर वीजा नियमों में आसानी लाई जा रही है महोदय, और ताकि भारत में इलाज करने आ रहे लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े महोदय। वहीं दूसरे तरफ मरीज दुनिया के अन्य देशों से भारत को इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए विदेशी मुद्रा लेकर आने के नियमों में भी सरलता लाई गई है महोदय। महोदय, मेडिकल शिक्षा में भी ऊंची छलांग लगाने का काम भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 में मात्र 143 जिलों में मेडिकल कॉलेज था, और आज सीना तान करके हम बोलते हैं कि 2024 में 259 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। और उतना ही नहीं, आगे की योजनाएं भी बहुत अच्छी है महोदय। इस वित्तीय वर्ष में देश भर के कॉलेज में, अस्पतालों में 10,000 मेडिकल सीटों को जोड़ने का भी प्रस्ताव है महोदय। अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें जोड़ी जाएगी महोदय। ये है मोदी का मैजिक, जिसको दुनिया सराहने का काम कर रही है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। Sir, next speaker, Mr. Thambi Dorai. Sir, you have 5 minutes, sir. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. On behalf of my party, IIM party, and my leader, Edappadi Palaniswamy, I raised to participate in the discussion of the functioning of the Ministry of Health and Welfare. I am happy to see that Nadaji as heading the Health Ministry and Family Welfare under the leadership of Modi ji. Already he served previously also when I was Deputy Speaker, I have seen as a Health Minister. Now I am also once again seeing the leader of the House heading this government. Sir. Honorable Prime Minister announced during his period and increased the MBBS seat 1,20,000 in the country, MBBS seats. And also he expressed another 75,000 is going to be during the period. I appreciate that the government has come forward to increase. At the same time, I want to say that apart from the MBBS, we have to see that another 50, equally PG course must be also increased. That is an concern. Sir, I want to say when the honorable minister, honorable member is initiated, they said Tamil Nadu is one of the leading states in the family welfare. Sir, this is due to the effort of the ADMK party and NDMK government, especially when Madam Jayalalitha was heading that, she introduced the cradle baby scheme to save the female children. That is the thing. Second, and also Amma Bear baby care kit. When the pregnancy is taken place, at that time, to give all the facilities for that family, patient, and also that to give that protection for the mother. And also, Amma insurance scheme, she also increased for health sector. And Amma pharmacy, sir, she started many programs. But the DMK government closed down. The DA government closed all the things which brought it our Amma. Sir, Amma. Edappadi Palaniswamy, during this period, 23 medical colleges brought. But, sir, I want to know, they are criticizing, we are for AIMS, Madurai has come. But I want to know from the DMK people, whether they started any medical college during the Corona period. They could not even start a single medical college during the period. They failed. And also the promise
election manifesto. Sir, nothing will go on record except once you talk on the ministry. The NEET examination. Mr. Tamidurai, nothing will go on record. So many things that. No, I'm telling you, sir. They have for example, sir, they are disturbing. I want to say, sir, because NEET examination introduced by the DMK and Congress government, they introduced examination. But they are campaigning to abolish the thing for signature. They are getting your deputy chief minister Tamil Nadu getting signature. What happened signature, sir? What are the things they have done? They are misleading. Misleading the whole country. Speak on the ministry. Because of that only, Edappadi Palaniswamy brought the reservation for the poor students who are studying government schools on 1% given. That is the achievement of the ADMK government. But they cannot claim during the DMK period, there is no safety for the doctors. There is no safety for the doctors. And also hospitals are ransacked by the hooligans. It's going on. That is why the protection is necessary for that. That our members. So please speak on the ministry. This is the fact. I want to tell that doctors are humiliated. They are the hospitals ransacked during the DMK period. They have no protection for that. Therefore, I request the Honorable Minister, take care of the serious thing and protect our hospitals which are running. Sir, most of the hospitals has come from the private sector and during the MGR period. Medical college also started, but the DMK government failed to bring one medical college during the period and could not abolish the NEET examination. Which are the things? Sir, kindly speak on the ministry. Manifesto, they said they failed, but here they are making shout. Sir, we are proud. ADMK government is proud. Brought all the schemes for the medical revolution has taken place, and also central government cooperated and given 11 medical colleges. The discussion will be continued tomorrow. The remaining speakers will have the chance to speak tomorrow, and the reply will also be given by the Honourable Minister tomorrow. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, 19th March 2025. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।